Very good afternoon to the viewers of today's VCM on various aspects in capital market, being hosted by Mathura branch of CIC of ICAI and organized by Committee for Capital Market and Investor Protection of the Institute of Chartered Accountants of India. Today we have Galaxy of panelists with us, two of the senior most council members. My chairman, CA Anuj Goyal, the chairman of the Committee for Capital Market and Investors Production, CA Charanjot Singh Nanda sir, the chairman of Internal Audit Standard Board. We have Jitendra Kumar ji. We have Prakash sir as the speaker and hosting branch chairman Sanjeev Agarwal sir, Anurag Khandelwal ji, vice chairman. We have Sunanda ma'am, secretary Mathura branch. We have in absentia Rajkumar Agarwal ji. Rajkumar Agarwal ji, our honorary past chairman, has also joined. Sure. So I welcome Sunandra ji and Rajkumar Agarwal ji. So because we are eagerly waiting to hear from our learned speaker, so not taking much time, I would request Sanjeev Agarwal sir for his welcome address. Over to chairman Mathura branch. धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आज की वेबिनार को लाइमलाइट करने के लिए और वेलकम करूंगा हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर अनुज गोयल सर का, जो कि हमारे कैपिटल मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा बहुत वेलकम करता हूं हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर CS नंदा सर का, जो चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी से जुड़े, चाहे CPE कमेटी से जुड़े, लेकिन उनको शेयर वाले नंदा सर के नाम से ही जाना जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2008 में एक बार मुकुंद पैलेस होटल में शेयर वाले भी और शेयर वाले भी, हाँ शेयर वाले भी सर तो मथुरा में सर आए थे, तो सर का एक ही मंत्र था, डू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। और सर वही मंत्र में हमारे जो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश झुंझुनवाला सर, उनका कभी भी आप टीवी पर इंटरव्यू देख लीजिए, उनका भी एक ही मंत्र रहता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। और सर ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी जरूरी हो जाता है, शॉर्ट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रेट है सर, सपोज करो आज मैं अपनी बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए की FD बनवाता हूं, जिसको मुझे 5 साल बाद जरूरत पड़नी है, और 15 लाख रुपए की, लेकिन मालूम पड़ा अगर FD मेरी 15 लाख रुपए दे रही है, लेकिन उस समय बच्चे की फीस बढ़ के 20 लाख रुपए हो चुकी होगी। तो इन्वेस्टमेंट को बीट करने के लिए मेरे को जो किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड बहुत जरूरी है। और मैं वेलकम करूंगा TNBC टीवी पर आमतौर पर देखे जाने वाले बिल्कुल स्टार एनालिस्ट प्रकाश दीवान सर का, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सर का हंसता मुस्कुराता चेहरा इन्वेस्टर्स की थकान भी दूर करता है। साथ में इनकी बड़ी बेबाक टिप्पणी मैंने देखी है, मैनेजमेंट क्वालिटी के ऊपर देखी है, कंपनी के ग्रोथ रेट के ऊपर देखी है, सेक्टर्स के ऊपर देखी है, और शेयर्स के वैल्यूएशन के ऊपर देखी है। तो मैं बड़ा प्रभावित था और सर से रिक्वेस्ट किया, अनुज सर से, जो मान ली, तो मतलब मैं आज बेहद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं अगेन अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर अनुज गोयल सर, CS नंदा सर, फैकल्टी प्रकाश दीवान जी और जितेंद्र खांडोलकर सर, जो कि गांधीधाम ब्रांच से चेयरमैन है, और वो अपना शेयर को लेकर के उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा कैपिटल मार्केट कमेटी जो आज ऑर्गेनाइज कर रही है प्रोग्राम को, और इसके अलावा न केवल मथुरा शहर बल्कि देश विदेश से जहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबका तहे दिल से भगवान श्री कृष्ण की नगरी से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं निश्चित तौर पर ये वेबिनार सबको एक बहुत बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस देगी और हम एक बढ़िया राह पर चल निकलेंगे। थैंक यू सर। Thank you, Chairman sir, for your warm welcome address. To proceed with, I would request CA Anurag Khandelwal ji, Vice Chairman Mathura branch of CRC of ICAI, to kindly introduce our learned speaker, Mr. Prakash Diwan. Thank you so much sir for giving me this opportunity. वैसे तो प्रकाश दीवान सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि डेकोरम रहा है तो सर को मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना ही पड़ेगा, तो मैं सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। Prakash Diwan sir is professionally active in Indian capital market for almost past 3 decades and has played various senior management and leadership roles
in leading financial service organizations throughout his career. He has worked in various facets of financial services spectrum and attained key milestones within the institutional broking, wealth management, equity service, investment banking, cross-border investing, and family office advisory in organizations such as Jardine Fleming, ICICI Prudential Mutual Funds, IDBI Prudential Mutual Fund, Way to Wealth, and Edmount Capital Management Group in the course of his career. He also shares these along with the market view regularly on mainstream electronic media and some social media platforms. He has delivered academic sessions at leading institutions like Wellingers, NISM, and National Stock Exchange, apart from participating in numerous investor education and awareness camps across the country. An academic background of an engineer and an MBA in finance. I welcome you, sir. Thank you, Anurag Khandelwal sir, for introducing our worthy speaker, Prakash Diwanji. Now I take privilege to introduce one Jitendra Kumar ji, CA Jitendra Kumar ji, who is Chaturvedi, means knowing all four Veds, and who is a Sikasa chairman of Mathura branch currently and past chairman of Mathura branch. I would request him to again introduce another Jitendra ji, Jitendra Khandol sir. Over to Jitendra Chaturvedi sir. थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे तो आज अनुज सर के सहयोग से आज की ये जो वेबिनार है एक मेरे हिसाब से सुपर वेबिनार है, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी लगता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ साइड में भी एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए अर्निंग का पार्ट कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। तो अनुज सर ने जो आज की ये वेबिनार रखी है, तो अनुज सर साथ में सभी साथियों को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप लोग लेके आए हैं। साथ ही जो जितेंद्र खंडोल जी हैं उनका प्रोफाइल भी पढ़ने का मुझे मौका मिला है। तो जितेंद्र खंडोल जी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर इन स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स। ही इज ए पास्ट चेयरमैन ऑफ गांधीधाम ब्रांच ऑफ WIRC of ICAI. He is a founder of professional equity group consisting of CA and professional expert of stock market from all over India. The motto of the group is to share knowledge related to equity market and to provide an avenue as an additional career option. Thank you, sir. Yeah, thank you, Jitendra sir. Now I request CA Sanjeev Agrawal sir to introduce our Central Council member and the speaker of the day, CA Charan Nanda sir, CJS Nanda sir. Thank you, sir. He is a Central Council member in ICAI. He is the chairman of International Audit Standard Board and Committee on Management Accounting of the Institute. He is also the vice chairman of Continuing Professional Education Committee, CPE of the Institute. He was the vice chairman of CSR Committee, BFSIC Committee of the Institute, Public Finance and Government Accounting Committee of the Institute. He was also the chairman of PDC, Women Members Empowerment Committee, Research Committee. He was the member of the SAFA IT AG. He was also the chairman of the NIRC in the year 2002-03. He is having interest in capital market, banking, human relation management, corporate law, taxation, audit and management consultancy. He has contributed as guest speaker at Vancouver, Canada on IFRS, Effective Communication and Forensic Accounting. Please give him a big hand. Thank you, Sanjeev sir. Again, I would request Sanjeev sir to introduce our chairman, C. Anuj Goyal ji. Thank you so much again. C. Anuj Goyal sir, कौन नहीं जानता? C. Anuj Goyal ji is the Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India. With his 14 years in council, 3 years in regional council, 6 years in branch, he contributed immensely in various capacities. Presently, he is chairman of the Research Committee, the oldest committee of ICAI, and Capital Markets and Investor Protection Committee of ICAI. He is also the vice chairman of Corporate Law
and Corporate Governance Committee. With exemplary academics, he possesses CA, CS, CMA, ICWA, LLB, MCOM, DISA, and DIRM. Please welcome Anuj Goyal, sir. Thank you, Chairman, sir. Now, to proceed with the technical session, I would request, before proceeding of the technical session, I would request my chairman, CA Anuj Goyal ji, for opening remarks. Thank you, Dr. Amit Kumar Agrawal ji, our young and dynamic secretary of this very, very important Committee on Capital Markets and Investors Protection. I am really grateful to CA Charanjot Singh Nanda ji, my elder brother and very, very prominent leader of the profession, our Honorable Central Council member, and chairman of very, very important IASB Internal Audit Standard Board, and of course the vice chairman of the CPE committee, under whose aegis we are having this virtual CPE program practically. And a very, very big round of applause to CA Charanjot Singh Nanda ji. And we are having a very, very prominent resource person, Prakash Diwan sir. I think each and every chartered accountant, each and every investor, each and every citizen of the country who is having the interest in the capital market know Prakash Diwan sir. So very, very big round of applause for Prakash Diwan ji. We are really grateful, really indebted. We are more than 3,000 chartered accountants live at present. So this is the magnet of Prakash Diwan ji and Charanjot Singh Nanda ji, that from each and every part of world we are having the chartered accountants for this very, very important webinar on various aspects in capital market. And of course, CA Jitendra Khandol ji, who is the chairman also of the Gandhinagar branch and is really contributing like anything in the field of the capital market. So I welcome CA Jitendra Khandol ji on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India, Committee on Capital Markets and Investors Protection, and of course the Mathura branch, the branch of Lord Krishna. So, and we are having the presence of our Honorable Chairman of Mathura branch, my brother CA Sanjeev Agrawal ji. We are having past Chairman of the Mathura branch, Rajkumar Agrawal ji. We are having past Chairman of the Mathura branch, Jitendra Chaturvedi ji. The Secretary, Honorable Secretary of the Mathura branch, Sunanda Khandelwal ji. And our incoming Chairman and Vice Chairman of Mathura branch, my brother CA Anurag Khandelwal ji. So on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India and Committee on Capital Markets and Investors Protection, I welcome all our honorable leaders of the profession from the city of Lord Krishna, Mathura. So, and we are having more than 3,000 chartered accountants live with all of us. So I welcome all our honorable members on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India and Committee on Capital Markets and Investors Protection, and of course the Mathura branch. Very, very prominent branch Mathura is there. And friends, this VCM on various aspects in capital market, to understand the various aspects of investing and trading in capital markets is being organized, and we are having the best of the resource person, Prakash Diwan sir, and of course Charanjot Singh Nanda ji and Jitendra Khandol ji. So we are really fortunate that we are having the best of the resource persons to guide us on this very, very important aspect of the capital market. Friends, as rightly remarked, the whole purpose of education is to turn mirrors into windows. So Nanda ji is trying to see that how we can turn mirrors into windows. We can very well see transparently through windows, and we are really fortunate to have the presence of Prakash Diwan ji and Khandol sir. Thank you very much. And keeping that in mind, we at ICAI regularly strives to update and educate our esteemed members in enhancing their professional origin and competency through conducting various knowledge enriching webinars and VCMs on contemporary topics in the domain of capital markets to understand the nitty-gritty of the most sought after area in the recent times. And friends, we are very well aware that Institute of Chartered Accountants of India is trying its level best to see that how the chartered accountants who are the best accounting professionals across the globe, and who no professional can better understand than the nitty-gritties of the capital market than a member of the Institute of Chartered Accountants of India, that how the chartered accountants can further update their knowledge in this very, very important domain of the capital market, how they can sharpen their skills further. Nanda sir, we are already having two very, very prominent certificate courses.
Yeah, am I audible? Yes, sir. Very much. Please go ahead. Yeah. So we are already having two very, very important certificate courses on the Forex and Treasury Management, Sanjeev sir, and on the derivatives. And a lot number of members, whether they are in India or whether they are outside India, are going for these very, very important certificate courses. We have recently launched the specifically designed certificate courses on derivatives and Forex and Treasury Management, especially for the members of the Gulf countries, of the members of the Middle East, so that we can reach to each and every chartered accountant. We can try to do the capacity building of each and every chartered accountant, whether in our country or outside country, in this very, very important field of the capital market. And two of the certificate courses we have recently launched on 1st of July. Our Honorable Union Minister of Railways and Commerce, our own CA Piyush Goyal ji, launched these very, very important certificate courses named FATA and FMSC. And on Sunday itself, Nanda sir, we have launched these two certificate courses through the first batch, and we are trying our level best to see that how we can really do something very, very concrete in this very, very important field for the chartered accountants, the capital market field. And around 190 registrations were there in the FATA certificate course, in spite of the fact that we are having the permission of only 100 delegates, but only 100 registration, but we took the special permission. But that shows how the chartered accountants are keen to update, to sharpen their skills in this very, very important field of the capital market. And we are having the best of the resource persons, C.A. Chandranu Singh Nanda ji and Prakash Diwan sir and Sandol sir. So I'm quite confident that all of us will certainly be richer in knowledge, and we will be certainly gaining very, very good knowledge after the deliberation of our learned speakers. So we are trying our level best to see that how the Committee on Capital Markets and Investors Protection, which is working in the area of promoting investors protection by nurturing capacity and competency development of members and stakeholders in the capital market. And the committee will be actively working in the area of financial literacy for the development of economy through various initiatives to educate and empower citizens. So we want to come up to the expectation of each and every stakeholder. And we want to see that APJ Abul Kalam, our honorable ex-president of the country, rightly remarked that the chartered accountants are real partner in nation building, how we can really come up to the expectations of the ex-president of the country, APJ Abul Kalam ji. Friends, the committee also wants to develop competitive workforce for capital market and corporate through its various learning initiatives. And we are trying our level best to see that how we can have the best of the programs with the help of the best of the resource persons. Recently, one of the very, very important decision has been taken. Nanda ji is the part of our council, and we have taken the decision that now the chartered accountants who are in full-time practice, if Anurag Khandelwal ji or Sanjeev Agrawal ji or Rajkumar Agrawal ji are in full-time practice, now they can very well have income from equity derivatives along with Sunandra Khandelwal ji or Jitendra Chaturvedi ji. And besides that, they can very well be the proprietor or partner in a chartered accountant firm and can be in full-time practice. So very, very important decision has been taken by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India. So that shows how important the capital market is for the chartered accountants and how important chartered accountants are there in the capital market. So Prakash Diwanji, we are trying our level best to see that even the practicing chartered accountants can play a very, very active role in this capital market. Friends, I am truly proud to observe the growing importance of investment and trading in capital market in India during last few years, which is further amplified by the situation of COVID, as a greater number of persons have understood the importance of the financial independence, financial stability and wealth creation in these trying times. On a basic conceptual note, capital markets are venues where savings and investments are channelized between the suppliers who have capital, such as retail and institutional investors, and those who are in need of capital, such as businesses, governments, and people. Friends, capital markets are composed of primary and secondary markets, the most common being the stock market and the bond market. Similarly, word of capital market involves
plethora of concepts related to investments and trading, which one needs to understand and implement in practical scenario to avoid the unnecessary risk involved. Friend, this is why often trading is considered as a risky activity, because most of the persons enter into trading without actually understanding its nitty-gritties. I truly consider trading as an art which we can definitely use for wealth creation. Only if we have ample understandings of the correct tools and analysis which needs to be performed. One such analysis is technical analysis, which is a form of market analysis based on historic price patterns. It uses various indicators and patterns such as candlestick patterns, trend lines, support and resistance levels, head and shoulder patterns, etc. There are similar concepts of capital markets which one needs to identify and understand in order to excel the world of investments and trading. Therefore, through today's VCM, our aim would be to throw some light on the concepts of various aspects in capital market. Now, I will not be taking your further time, as we are very, very eager to hear our learned guest speaker, my elder brother, very, very prominent leader of the profession, our Honorable Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India, from the northern part of the country, from the political capital of the country, Delhi, the chairman of Internal Audit Standard Board, vice chairman of CPE committee, CA Charanjit Singh Nanda ji. Very, very big round of applause to CA Charanjit Singh Nanda ji. And may I request our honorable guest speaker, CA Charanjit Singh Nanda ji, for his deliberation, please. A very, very big round of applause once again, friends. A very good evening, ladies and gentlemen. I am truly honored to be here today evening, and particularly in a committee which is very dear to my heart. Committee for Financial Markets and Investor Protection. I was the chairman of this committee for 5 long years. When I was in this committee, I was the part of SEBI's Primary Market Committee. I was part of SEBI's Mutual Fund Committee. I was part of the SCODA Committee on Disclosures and Accounting Standards. And I want to very candidly tell you that this is one of the very happening committees of the institute, which ultimately wants to navigate chartered accountants towards a greater arena where proper saving and investment can be done. I have at least 3 people whom I've always admired throughout my life. I start with Mr. Anuj Goyal, the Honorable Chairman of this committee. Mr. Goyal is a very senior chartered accountant, and I have seen him work since the days when he was a very young boy, although he's very young even today. But I have seen him work incessantly for the cause of members, not only from big cities, but members and students from small cities. His down-to-earth approach and touch with all chartered accountants in the country is something which is really commendable. And he has been contributing immensely. He's my younger brother, my friend, but I don't use my emotions to fortify him. He is in fact one of the very good, hard-working council members who have devoted their time, energy, and indulged in ensuring that the profession is taken to unprecedented heights. If I have to say something about him, I would like to say a couplet. मंजिल मिल ही जाएगी थोड़ा भटककर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी थोड़ा भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं. ये तो घर से निकल के यहाँ तक पहुंच गए साहब. I want to tell that he has a dream of transforming the lives of chartered accountants, in which he is excelling and is greatly successful also. 2 of my co-speakers, Prakash Diwan Sahib. I have admired him so many times, looking at him on TV, and understanding his viewpoint actually changes your mindset. He is a man who is totally involved into the working and ensuring that things move in the right stream. We want such kind of people like Mr. Diwan, who could create awareness amongst the general public, and the public is able to assimilate the ideas and create value and wealth for themselves. If I have to say something for Mr. Diwan, it would be, जुबान कड़वी ही सही पर साफ रखता हूं, जुबान कड़वी ही सही पर साफ रखता हूं, कौन कहां कब बदल गया सबका हिसाब रखता हूं. So he is truly looking at the various changes in the sectors, what needs to be reported, what needs to be escalated, and more importantly, how a normal gullible investor is made aware of the basic facts of investing in stock markets. The third person, my very dear friend, Mr. Jitendra Kandol.
अनुज जी, once जितेंद्र खंडोल speaks, तो आपको समझ आएगा, कहते हैं गुदड़ी में लाल, मुंशी प्रेमचंद कहते थे. When he starts speaking, then you will understand that he is a person who has that much idea of stock market. You would have seen the movie of Amitabh Bachchan, जिसमें वो कहते हैं ना, I eat English, I sleep English, I drink English. So Mr. Khandelwal eats market, sleeps market, loves market, hates market, whatever is his life, it is market only. And if I have to say something about him, it would be, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता. जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता. फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता जैसे हमारे जितेंद्र भाई. The very honored two chairman and vice chairman of Mathura branch, CS Sanjeev Agarwal, who very effectively brought out the basic intonations of today's session. The incoming president, C. Anurag Khandelwal, who very effectively and in a robust fashion wanted to escalate the way the committees should function. I also acknowledge the presence of C. Jitendra Chaturvedi, Madam Sunanda Khandelwal, and the secretary of this committee, CA Amit Agarwal, who by his hard work and indulgence has ensured that things move in the right direction. Ladies and gentlemen, and sir, we are having Rajkumar Agrawal ji also, or past chairman of the branch. Okay. I acknowledge the presence of Mr. Rajkumar Agrawal also. So, ladies and gentlemen, when you speak of stock market, you get diverse views. The one most common view is कि stock market में लखपति बनना बहुत आसान है. स्टॉक मार्केट में लखपति बनना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप पहले से करोड़पति. As if it is a place where you can come and sacrifice your money. The second notion about the market is that if God was to invent something that could confuse human minds, he could not have invented something better than the trading terminals. But the third views, particularly of people like Mr. Kandol and Mr. Diwan, that if you want to become a multi-millionaire legitimately, it is only the stock market that can make you multi-millionaire. And that too with your ethics in the total legitimate way. So I want to tell you that people normally want to invest in stocks. If you go to portfolio management services, they take a check of yours and put it in stocks. They invest in less stocks, say 15 to 16 stocks, but they earn more. The risk is highly high because the portfolio is not diversified. But if you come to mutual funds, they at least invest in 50 to 60 stocks, and which is highly diversified, and yet the returns are less. So when you come to mutual fund, just a passing remarks on mutual fund, you will find 4 types of mutual fund. The first is the equity mutual fund, which deals with large cap, mid cap, small cap, multi cap, so that whatever where you want to invest, you can pick up and invest there. The second type of mutual funds are equity hybrid stocks. One of them which are used by normal people who invest. Normal sahab log invest karte hain 65% into the equities and 35% into the gains. The third, equity savings scheme, which is the most popular. People normally for tax saving also want to go into equity savings scheme. And the fourth is arbitrage or liquid funds, where you get the most important returns for the liquid money which you have for a smaller period. Now, I come on to the stock market. Stock market is an asset class. And I want to tell you, any asset class is prominent because of 3 reasons. Pehla reason, liquidity. Dusra reason, trust in asset class. Third reason, compliance and regulation. Now I go back to 1971, when the US President, Mr. Nicholson, removed gold standards. 1971 से पहले अगर आपको करेंसी प्रिंट करनी है तो उसका इक्विवेलेंट गोल्ड आपके पास होना चाहिए. और उसके बाद आज कोई रोक नहीं है, कोई इकोनॉमी, कोई कंट्री, कोई नेशन जितना चाहे उतनी करेंसी वो प्रिंट कर सकता है. मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर अगर आपके पास 100 बिलियन, मैं एग्जाम के ले रहा हूं, 100 बिलियन रुपीस है, आप उसको 200 बिलियन कर दें तो 50% तो और नॉर्मल आदमी टैक्स हो ही गया ना. So what happened in 1971? 1971, they allowed
free printing of currency. जितने पैसे free print हुए वो कहाँ गए? They came into the asset classes. और आज if the market you are feeling is at unprecedented times, it is only because of that excess money which has found way in the markets. Second, trust in asset class. It is totally regulated. Before Harshad Mehta, there was no SEBI. At that time, people who felt they were on a wrong note even carry this notion today. No. Today, the market regulator is very carefully watching each and everything, coupled with people like Mr. Diman who are in the channels to ensure that any shortcoming is properly exhibited. The third, compliance and regulation, you all know, they are very great. Now, the question that arises is that today the economy is at 30 years low and the market is all-time high. Why is it so? If you go and do a research, it is because of the American money which is coming in the Indian markets. There are predominantly two markets, China and India. China does 50% of all manufacturing of the world in China. But now people are keen that shift of China be made. And once shift from China comes, India is the true beneficiary. And US, if you look at the analysis of the Indian stock market, you will find that US is the biggest, US funds are the biggest investors in Indian markets. And you will be astonished to know that today the market trades at 100 PE. And the last data said that 2 crore jobs were left. The reason is that the money which is being channelized that comes into the market. I'll give you an example. Before 2008 great fall, the balance sheet of Fed Reserve was $700 billion. $700 billion. After this great movement in 2017, the balance sheet was $4 trillion. A 6-time increase in the balance sheet of Fed Reserve. From where this increment come? It was nothing else than printing of dollars. And therefore, if dollars are printed, they come to India for investment in the markets. I want to tell you very candidly that Russia and Iran are passing through US sanctions. And therefore, whatever asset class comes, whatever asset class needs a working, that is done ultimately by the countries which have surplus fund. And India is one of the favorable destinations. I can tell you that asset class bubbles because of the printing of money by the central bank. And I want to tell you the areas, the asset classes. One is equity, very prominent asset class. Second is real estate. Third is gold. Fourth is petroleum. But the best is equity. A reason being that in equity, you can always invest and come out any moment of time. Liquidity is very high in investment in equity. I can buy stocks of any rate today and sell them tomorrow. There is no questioning. There is no point that I am not able to come out. One more thing before I go ahead. Commodities. Did you notice that people started saying that buy commodities? The reason is very simple, that commodities never have any balance sheets. Stocks have balance sheets. You look at the company, you try to find out the PE, you try to find out whether the returns are good or not. But in case of commodities, it is only demand and supply that are moving. And I want to tell you that there are at least 3 countries in the world which are moving in today's times. One is China, second is Vietnam, third is India. And India is an alternative to China. I want to tell you that India is better for 2 reasons. Reason number 1, because of our democratic setup and transparency. And second, because of young population, which is more than 70%. I happened to go to US and I went on a sea voyage. I was astonished to see that in my ship, 90% people were above 70 years of age. India, you never find that. Young people you will find. And these young people will create a TINA factor for India. What is a TINA factor for India? It means that there is no alternative to India. There is TINA fact for equity also, because they say that there is no TINA fact to equity. Now I want to tell you, if you want to raise money in US, it is only 3% per annum. A person takes 3% per annum money and invests in Apple, in Facebook, and in the evening he gets 3% return.
So this is why speculation is at the highest level. Very, very important. Speculation rises because their interest rates are low and the returns in market are fabulous. And therefore, in markets, entry and exit is anytime. And you want to understand that market is FII driven and not FDI driven. FII is hot money, immediately coming, immediately going out. And FDI is something where foreign direct investment is made. And therefore, you will have to work in that tandem. And with the currencies, you will find that 80% of the traded currencies are in India. With this prelude, I start my session. I'll speak not more than 20 to 25 minutes. I try to finish by 5:30. The first thing, when you invest in market, the first thing you need to know is, please determine who you are. There are primarily 4 types of players in the market. Pehle player. Anuj ji to subah jaldi uठते, but I get up late in the morning. And one day my father said, my boy, you have to get up early in the morning. उठकर क्या करें? बालकोनी में खड़े रहते थे. बालकोनी में खड़े होकर देखते थे कि मेरे घर के बाहर एक केबल की तार जाती जिस पे तोते बैठते. So I started analyzing that when the parrots were even, the market was up, and when they were odd, the markets were down. So every day I used to see the parrots and then trade in the market. But chartered accountants are so enterprising. So from next time onwards, how many parrots will be there tomorrow? On that basis, I used to trade today. अब आपने बाजार में माल खरीदा हुआ और पैरेट कभी 1 होता है, कभी 3 होता है, कभी 5 होता है, कभी 7 होता है, और आपकी बीवी कहती है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक तुम बालकनी में देख क्या रहे हो? These are the gamblers. We are not gamblers. If you have this mindset, Jitu Bhai will very clearly explain that in his talk. If you have that mindset, you are gone. अगर आपने कहीं ऐसी आवाज आती है तो जितना पैसे कमाए दोस्तों को बांट दें, क्योंकि आपकी जिंदगी उनसे पैसे मांगते हुए गुजरने वाली है. We are not gamblers. The second type of players are who we term as the speculators. Speculators are people who lend debt to the market. If you buy, say, a Cadillac, you find the rate is 600 buyer. Then you see the buyer comes at 605 paisa, 610 paisa, 615 paisa. When you go to the seller, you find the salaries of 601 rupees. Then you find the next salary is 601.05, 601.010. These are people who create the depth for the market. We call them speculators. Arbiters are people who buy from the cheaper market and sell it in the expensive market. When I come to Mathura, I buy pedas, 10 kg pedas at 400 rupees and sell at 500 rupees in Delhi. 100 rupees is my profit. Multiplied by 5 kg, I get 500 rupees. This is arbitrage. But if you have 50,000 crore, like reliable Anuj Goyal has, you can always invest in the market in a second. This is arbitrage. You buy from one section, sell it in another section. And that movement of money is called arbitration. We are not arbiters as well. Who are we? We are of 2 class. Either we are investor or trader. Who are investors? Investors are people who have little money, but they invest in the markets. People can have small investment goals, for example, 10,000, 20,000, 50,000, and they can sell in the market. Buy in the market, stocks, and forget it for a longer period. There are 4 connotation to it. इसके 4 important facets है. पहला, एक amount आपने determine करना है. मान लो मैं 20,000 करूंगा, अनुज भाई हो सकता है 5 लाख रुपए करे बड़े आदमी है. ये डिपेंड करता है कितने पैसे आपके पास हैं. जीतू भाई तो वैसे 50 लाख से शुरू करते. Then you always invest on a particular day. Don't use your logic when you invest in market. कहते हैं ना, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो. You can't use your logic when you are into investment. Use your logic when you are into trading. A particular amount, a particular date. Investment only in A group shares. Don't try to jump into Z group shares, B group shares. No, they are not bad. But A group is more regulated.
different stocks so that you have a well laid down portfolio. तो मैंने आपको 4 चीजें बताई. पहली चीज एक अमाउंट, दूसरी चीज एक डेट, तीसरी चीज एक ग्रुप के शेयर जो आपने लेने हैं, और चौथी चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब भी लेना है हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेना है. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने लेना. हम पोर्टफोलियो को कम या ज्यादा नहीं करें तो बेटर है, और शेयर्स अलग अलग सेक्टर्स मिले जो सेक्टर हमें बढ़िया लगते हैं. सो वी आर इन्वेस्टर्स. नाउ नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू आर अवेयर दैट इंस्टीट्यूट took a very important decision on 18th March. They have allowed chartered accountants to deal in future and option. So if you are a trader in future and option, how do you work? My next presentation will go on that for next 15 to 20 minutes. You have to understand that if you are a trader, if you want to act in trade or transact in future and options, what is your immediate thought process? सबसे important बात आपका ये जानना, आपका ये समझना कि आप मार्केट से चाहते क्या है. आपको एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाना पड़ेगा, अपना रिस्क एपिटाइट सेट करना पड़ेगा. मेरा रिस्क एपिटाइट 10 लाख है, हो सकता है जी का 10 करोड़ हो सकता है चेयरमैन साहब का 2 करोड़ हो सकता है खंडेलवाल साहब का 1 करोड़. अपना रिस्क एपिटाइट बनाकर आपको क्रिएट करना है कहां से आप वर्थ बनाए. ट्रेडिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है. देयर इज नो अदर पर्पस, एंड पीपल आर normally emotionally attached to markets, which is very, very fatal and very wrong. Don't get emotionally attached to any stock. Stock is only a means of creating value, means of earning. I see people when they start making money, they start storing the stocks, and ultimately when the market comes down, they are beaten. So for your information, the first thing which I want to tell you is trade less. And if you are a new entrant, do paper trading. जब तक सूरज चांद रहेगा मार्केट तेरा नाम रहेगा. ऐसा नहीं कि मार्केट बंद हो जाएगी, मार्केट हमेशा रहेगी. Always understand one thing very clearly, that you have to win from the market. There is a couplet which says, मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग. मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग. मैं उसके फैसलों से तंग, वो मेरे हौसलों से दंग. आपके हौसले आपको बाजार में चलाते हैं. आपकी सोच, आपकी स्ट्रेंथ. Somebody asked Swami Vivekanand, he said, Swami, you have gone through Veda and Upanishads n numbers of times. Can you tell me in a line the gist of Veda and Upanishads? Swami just smiled and said, my boy, in a line, I shall not only tell you the gist of Veda and Upanishads, I will tell you the entire concept on which India thrives. The words uttered by Swamiji are written in golden words in Indian history. He said, strength is life and weakness is death. इसका मतलब नहीं कि कल से आप जाके जिम में आयरन पंप कर रहे हैं. यहाँ की स्ट्रेंथ, your thought process, your concept of using targets and stop losses to come out. I quote here Jitu Bhai who said that even if you trade for 10 stocks and lose in 8 stocks and you have put a stop loss, you are bound to emerge as a winner. There is a saying that 99.9% people lose in the market because of emotional reasons, because people never cut their position in losses. Very big fallacy of ours. Never come emotionally to the market. अगर आप मार्केट में आते हो, आपका 20,000 का नुकसान हो जाता है और आप कल्पते हुए नीचे उतरते हो, तेरी भाभी को झुमके ले देता, बिल्लू को साइकिल लेता था, घर में सफेदी करा देता. Market is not for you. Please don't enter the market. At least don't enter into trading or you will be in a big loss. If you want to create value, you have to have a clear-cut, distinct vision. अपने हौसलों को ये खबर करते रहो. अपने हौसलों को ये खबर करते रहो. जिंदगी मंजिल नहीं, सफर है, चलते रहो. Keep moving. The second step to it is understand the markets. When you get up in the morning, you want to go for a morning walk. The international Asian markets have opened. And saying Nikkei. By that time you come and you're on the breakfast table, using the knife to spread butter on your bread. The Indian markets open. By the time you're ready for the afternoon soup, the European markets, German markets open, stacks. By the time you are ready to go to the club in the evening, the American markets open.
Please understand the intricacies of the trade. This is now a very complex trade. You may have positions today, the market may be bullish, but anything happening at any corner of the country can pull the stocks down. So understand the international markets. Third, have a disciplined approach. Let your courage be the greatest weapon you have. पर ही कतर सकता है कोई किसी परिंदे के feathers काटना. पर ही कतर सकता है कोई किसी परिंदे के इरादे भी कतर दे, इतनी धार कहां से लाए? You cannot kill the courage of a man. It is that courage that drives you, but with a disciplined approach. I have seen people create value and worth always through disciplined approach. I have seen people make money because when pain starts, it is better to weep at that time than to leave it. I got a very good Mexican proverb today morning. They said people whose head is made of wax do not go out in sun. पिघल जाता है ना मोम का सर. अगर आप में जज्बा नहीं है, अगर आप बाजार में स्टॉप लॉस नहीं बुक कर सकते, तो बाजार में आप जितना मर्जी कमा लें, अल्टीमेटली यू आर बाउंड टू लूज. And one more thing about bull markets. In bull market, everyone is an expert. You speak to any person, whatever share he will say, the share will go up. He said, look, मैंने कहा था ना. It is always when that market turns, how you come out of the market. Going to market is the most easiest thing. Coming out from market is something which needs a Herculean strength, which we normally don't have. So as chartered accountants, we have to inculcate discipline so that when adverse time comes, we are again बच्चों की तरह रहे. बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम करते हैं. कहते हैं ना, कोई तो रूबरू कराए बेखौफ बीते हुए बचपन से. कोई तो रूबरू कराए बेखौफ बीते हुए बचपन से. आज मेरा फिर से बेवजह मुस्कुराने का दिल है. Smile without a reason. Create value without a reason. Trade with total tension-free environment. I'm a great fan of Jitu Bhai. He always says one thing. Never trade when you are tense. Never trade before a big event. He will speak in detail with you. Please note his words. Write down. Use them in your life. You will never fail. I can bet that on. You want people who have their conviction. It is conviction that makes a person win. You don't always get depressed in markets. कहते हैं ना, मुझे पतझड़ की कहानियां सुनाकर उदास न करे जिंदगी. मुझे पतझड़ की कहानियां सुनाकर उदास न करे जिंदगी. नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया. Even if you have lost today, is the time you start working. But you have to have a guru, you have to have a godfather. And one thing I want to tell you, my respected speakers also. 2 days back, I was listening to an American philosopher. He said about us, I am running 53. He said, if you don't have a mentor who is below 30 years, you can't succeed in life. चेयरमैन साहब, वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा आदमी नहीं जो 30 साल से नीचे है और आप उसकी बात को सुनते हो, उसको अपना गुरु समझते हो, तो आप आज के जमाने के साथ मैच नहीं कर सकते. मैं जीतू भाई को दोनों बच्चों से मिला हूं. When they start speaking, they have a different note. अनुज भाई का लड़का है अमन अग्रवाल, उससे मिले आप एक बार, आपको एक अलग दुनिया दिखेगी और वही हमें ड्राइव करेंगे. And second thing, trading with women. I'll give an example. I was the chairman of the Committee on Financial Markets and Investor Protection, and we did a program in Calcutta. It was in Calcutta, Hayat. Very good speakers. First day, my secretary, P.T. Gradar, rang me up. He said, sir, there is a lady who wants to take all the seats. I said, we don't do things commercially. Some 10, 20% people can come who are not members. Then the lady gave a call to me, said, Mr. Nanda, I am Mrs. Jhunjhunwala, and I want to meet you when you come in Calcutta. I said, sure, madam. So when I landed in Calcutta, 7:30 in the morning, there was a gentleman. Immediately after landing, he said, you are Mr. Nanda? I said, yes. He said, please come. He took me to the Air India lounge where Mrs. Jhunjhunwala was waiting for me. Please understand what I am trying to tell you. My discussions with Mr. Jhunjhunwala were so fruitful that I thought she is highly educated. He spoke about not options or calls, but spoke about calls pricing. Theta, beta, gamma. She spoke excessively on that for half an hour. And half an hour, when it passed, I said, madam, I have to go and take the program at 10 o'clock. I have to leave.
She said, can you judge how much I'm studied? I said, madam, you are an MBA. She said, no. Man, Nitant Anpad hu. I'm truly illiterate. And she said, there are 300 ladies in my club whose husbands are industrialists. They invest money in the market and lose. We ladies invest and earn the money back. Men trade for lust. Men trade for thrill. Men trade for adventure. Ladies trade for making money, and therefore in US they prefer one lady and a gent when they open accounts. They're very keen on that because they understand that when the markets are soaring, the men will take the charge, and when market starts falling, the lady will ensure that they get out of the trades. Jitu bhai, after your saying, I spoke to a gentleman. He said, sir, I am a perpetual loser in the market. And what he said? He said, out of 10 trades, I earn in 9 trades, but the single trade where I lose takes my entire capital and kitty out. You need to understand discipline is very important. Number 4, invest in business. Don't invest in stocks. Warren Buffett's guru, Benjamin Franklin, he said that never invest in stocks. Understand the business. Feel as you're the owner of that business and then invest. You'll always create value and worth. People who invested, a person who invested 10,000 in 1984 in Wipro is worth some 500-550 crores today. Leave aside that any A group you invested, close to 50 to 90 crores you are having now. But why don't we invest there? Because we don't have that conviction, we don't have that thought process. So invest in businesses. Invest where you can create value. Even today time is there. Please go ahead and invest in such a fabulous method that people understand how you can translate your small savings into larger funds, larger life funds, so that you can use them in times when you want to. 5th point, get started early. Somebody asked Warren Buffett, what is the greatest regret of life? He said, the greatest regret of my life is that I started investing very late. The man was amused. He said, when did you start investing? He said, when I was in high school. How many of us invest when we are in high school? Invest when you are, start when you are young. That doesn't mean that we will not invest, but we have to come to that level. We have to understand how we have to move ahead, because there is a couplet, दोस्ती करो तो ठहरे हुए दरियाओं से करो, दोस्ती करो तो ठहरे हुए दरियाओं से करो, उन बदमिजाज लहरों को क्या पता कहां ले जाकर छोड़ दे. Live like with lakes, don't go to unruly seas, they'll throw you out. So market also gives you a message. Please get started when you have that confidence that you're cool. 6th point, only invest surplus money. Don't take loans and invest. Please don't take loans and invest. If you have some money, don't try to invest it. You'll always lose there. And the biggest thing in life is your peace of mind. If you don't have your peace of mind, you are gone. Nobody can stop you. And stock market, there is one great couplet which I would like to share with you. Salah hare hue ki. Salah hare hue ki, tajurba jeete hue ka, aur dimag insan ke khud ka, usse kabhi harne nahi deta. Consultants who have lost will give very good advice. A winner like Jitu Bhai will give his experience, and then your mind will ensure that you create value and worth by your investments in the market. 7, have an investment goal. People who do not have goals will never have anything. Goals are very important, whatever your age is. Umar thaka nahi sakti, ठोकरे गिरा नहीं सकती. उमर थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती. अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती. That in yours, that dying instinct, very, very important. The 8th, have stop loss and targets. Jitu Bhai will emphasize on that. When you buy a stock for trading at 100 rupees, have a target. I want to sell at 180. And if it goes down, I will cut it at 70 rupees. Live to stop loss, because when stop loss comes, you want to say, no, I want to remove it. There is a myth in the market that whenever you put a stop loss, the market comes down to touch that stop loss. These are only myths that test your patience. They test your discipline, and they put you ultimately on the wrong path.
You should have friends, godfathers who could change your life. You should have people with whom you can interact on markets. Then only your investment shall be fertile, should be fruitful, and you shall be able to work in that tandem. कहते हैं ना, काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है. काबिल दोस्तों का जीतू भाई की तरह होना भी शायद तकदीर होती है. बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है. Have a good friend circle who invests in the market. Listen to them. Learn from them. Market is nothing, simply buying and selling. Somebody told me market is so easy, sir. Only buying, selling. But you are always on the wrong wicket. You buy and lose. You sell and again you lose. I've seen people who will buy a share at 100 rupees. The share will go at 8 rupees. They will keep on waiting. The share comes at 8 to 10, 10 to 15, 20, 25, 30, 40, 50. I want to book 50% losses. People say, stop. It comes 100. He said, now I want to get out. At 150, he sells a stock which has kept for more than 10 years. And then after a month, it is 1500 rupees. When you are in a winning soda, let it move. When your losses, cut the transactions. Please understand. The ninth, diversify your stock. It has to be, you should not put all your eggs in one basket. Sit down, determine sectors which will move ahead, and then use those sectors to create value and worth. Then hold the winners, cut the losers. In the market, you have to hold the winners. If I buy 2 stocks at 100 rupees and I have to square one of them after 6 months, now one stock from 100 rupees has gone to 200 rupees. Another stock from 100 has gone to 80 rupees. If I have to sell one, which one should I sell? Normal people will say, sell the highest, you have booked the profit and come back in the other stock. No. A man gave me a great example. He said, I invited some people to my farmhouse for a picnic. When they came, they wanted to make food outside. And they found 2 trees. One tree was a very green tree. And other was only a wooden tree which was totally on the verge of falling down. Which tree they should cut? All unanimously said, we should cut the tree which is going to fall. Then why sell the share which is booming and keep the share which is about to fall? Very clear. 11th, invest consistently. Always invest consistently. Keep on investing in the markets. Do not deter yourself. Do not make your own conclusions. Markets are there to live. But when you invest consistently, please don't be afraid. Don't shy away from markets. People get afraid. I got a gentleman in 2004. In 2004, the Congress government had come. Then they said Sonia Gandhi will become the Prime Minister, market went dead. Then they said Guru Raja will become the Finance Minister, the market went down. And then ultimately Manmohan Singh and P. Chidambaram came as the Prime Minister and Finance Minister. A gentleman came to meet me with his wife. The long face. I said, what happened? He said, I traded in stocks. My immediate conclusion was, you lost? He said, no, I have earned 10 crore rupees. Oh my God. I said, why are you worried? He said, what should I do about tax planning? Should I pay advance tax or not? I kept on saying, I said, go to Mata Vaishno Devi, pay 30% tax and go away. 7 crore is a big amount. He went away, but indecisive. After 6 months, he came beaming, laughing. I was very happy. I said, made more money. He said, no, sir, I lost that money. Now, no tension. No tax issues. Please understand, a man who earned money by a stock was happy by losing that money. This is our mindset. Small sums of money add to big capitals. If you want to make stock market as your second source of income, which Anu Bhai very clearly said, that you can have an account and future option. Do small transactions, keep money. You can't create larger treasures by sitting outside. You have to come in the field and play, and then you will win. Understand this. And this is my last leg of the session today. It is have patience. People who are patient have created value in this market. People who understood that markets are there to live. Have you noticed people? There was a survey of people who made huge losses. What did the survey say? On the day when they made a small loss, in order to recover that loss, they lost their entire capital, and not only that, borrowed from their nears and dears and their relatives and made a big loss. You lose a sum of 50,000 rupees. And in order to cover that 50,000, you lose 10 lakh rupees in the market. No. When you lose with a bad mood, leave the market. So when you have to take transactions, they say, invest more when you are in profits.
curtail your investment when you are losses. Never run in the market. Market will remain always. My dear friends, all good things in life have to come to an end. My interaction with you also has to come to an end. We have two of the very learned speakers today, Prakash Diwanji and Jitendra Khandolji. I am also very eager to listen to them. So I would like to withdraw here, and I would like to tell you that next two sessions will make you spellbound, will make you totally involved into the structuring of markets, and then at the end we can go for a quick question answer session. So over to the Chairman Matra, branch Shri Sanjeev Agarwal, who will take it forward. Chairman sir, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू. बिल्कुल बेसिक से लेकर और सफल होने की अंतिम की जो गाइडेंस है वो सर ने दी, और इस लेक्चर को हम बार बार देखेंगे, कर चुके हैं, और अब हम फॉरवर्ड करेंगे प्रकाश दीवान सर को, जिनको सुनने के लिए सब उत्सुक हैं. तो उनके अपने कैपिटल मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वो सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस हम लोगों के किस काम आ सकते हैं. सर प्लीज. Thank you, Charanjot Singh Nanda ji. Very, very big round of applause to Nanda sir. Thank you so much, sir. Thank you. Wonderful deliberation. We are really, really, really proud of you, sir. Honored to be here. Something really great. And I once again welcome Prakash Diwan sir, our star resource person, star faculty of today's. So may I request all of you to put your hands together in welcoming Prakash Diwan sir. And may I request our honorable resource person, Shri Prakash Diwan ji, for his deliberation, please. Over to Prakash Diwan. Thank you, Anuj ji. Thank you so much. Am I audible to everybody? Yes, sir. Very much, very much. Great. So, no, because technology has a nasty habit of letting us down at the right moment. So, hope that doesn't happen. And I think after Charanjot Singh ji's deliberations, मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई खास मेरे प्रेजेंटेशन की जरूरत है. उन्होंने सब इतना बढ़िया कवर कर दिया. और इट्स ऑलवेज the voice of experience is something that every time I hear somebody like him, it just reinforces the notion that the stock market is a promising space as long as we are ready to accept and change ourselves to adapt to it. Otherwise it can take away whatever you have. So I think wonderful thoughts. What I have done is I thought आप लोग सब इतने ल्यूमिनरी सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हूँ. तो आपको बैलेंस शीट समझना, कंपनी के फंडामेंटल समझना, ये सब तो मैं कहाँ से बताऊंगा. बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 20 years, what I have done is I have simplified investing so that I can enjoy it. And if somebody like me can do it, I'm sure a lot of us can do it as well, right? So what I'm going to do is I'm going to touch upon something which is related to a very simple concept of how to interpret news flow. Because one of the biggest challenges that we have is there's so much of news flow. There was a time when we just had one newspaper in the country, which the Pink newspaper, which brought news to everybody and everybody got it together. And it was depending on how you react and interpret that things would work. अभी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इतनी ज्यादा न्यूज फ्लो है, इतना ज्यादा सोर्सेज है, और जो आती रहती है, व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, टेलीविजन ले लीजिए, कि करना क्या है ये नहीं समझ आता. तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सोचना ही बंद कर देते हैं. एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग अदर्स एंड सेइंग जो ये लोग कर रहे हैं सही है, इसलिए इसके पीछे लग जाओ. तो जो खुद को सोचने की जो एबिलिटी है, उसको थोड़ा सा द टाइम इज टू काइंड ऑफ change this habit of I keep on explaining that these days what people are doing, they are first deciding to invest and then investigate. इसकी जगह थोड़ा सा इसको पलट के हम लोग ये करेंगे कि पहले न्यूज फ्लो को समझे और उसको डिफरेंशिएट करें that what is news and what is noise, and then out of that make the most of it. Because there is in the stock market, like everything else in life, there is a cause and effect relationship. मतलब अगर कोई चीज होती है तो उसका असर होता ही होता है, राइट? न्यूटन का लॉ है और ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, लॉ ऑफ द मार्केट है. अगर कुछ हो रहा है तो उसके सामने उसका इफेक्ट होगा ही होगा, चाहे कम हो, बड़ा हो, छोटा हो, आज हो, कल हो, बाद में हो, लेकिन होगा सही. तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझे फंडामेंटल्स के व्यू पॉइंट से, I think it can become easier. So what I've done is I've put together a small presentation. I'll use some of the slides just as a reference point. There's nothing spectacular about those slides, but just to get our thought process attuned to that. So I'll, if you allow me, I'll share the screen and put my presentation on.
So let me know if you can see my slide. Yes, sir. Very much. Very much. Yeah. Okay. Great. Great. So, interpreting news flow in the market and understanding the cause and effect relationships in markets is what I thought I'll focus on. And the first slide that I want to show you is this, which is a smattering of quotations from last year when the markets crashed, when the COVID pandemic hit us, and everybody came out and started, and these are big names, these are big global names, Nurel, Rubini, George Soros, Jeff Gundlach, they are not people whom you take lightly. And हर एक ने ये चीज बोली that ये market यहाँ से correct होगा, ठीक है? 4 मार्च को बोला, 24 मार्च को बोला, अप्रैल में बोला, 23 अप्रैल तक भी बोलते आए कि मार्केट नहीं चलेगी. और आप देखिए ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको, मार्केट कहाँ, और ये मैं S&P की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां के उसमें ज्यादा असर पड़ा था कि मार्केट गिरेगी और करेक्ट होगी. So this is what happens. Now, it's not just for this year. We might believe that this year was exceptional, but if you look at the history of stock markets for the last many years, 10 years, for example, since 2011, 10 years back also, people kept on saying there is a recession coming, it's a bubble, collapse हो जाएगी market. ये market मतलब इसको टिके रहना serious challenge है. And look at the names: Mark Faber, David Rosenberg, Peter Schiff, Carl Icahn, George Soros, everybody. I mean, you name the big ones and then all voices are there. And still the market behaved very differently. So what I'm trying to build as a case is that किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है. So market को predict करना, I think it's futile because nobody's been able to do it well. What works better if you really want to make money in the stock market is anticipate things on a stock specific basis. Try and see if you can interpret the news flow and take positions, add things to your portfolio, remove things from your portfolio, see what could happen in the future and try to build those kind of things rather than try to predict that Nifty kahan hogi, S&P kahan hoga, Nikkei kahan hoga. It doesn't work. It hasn't worked till now. So this is a very simple thing that we have to get out, and this will save you a lot of time. Instead of predicting Nifty 12,000 वापस जाएगी, 8,000 आएगी कि नहीं, there's no point wasting your time on all that. So what you have to understand is that equity markets are fairly complex these days. As Nanda Sahab said, through the day, there are different markets opening in different parts of the world, and all of that is going to impact us. Now, that's on the equity market. But if you look at, so this is the situation right now, and it's such an unfortunate time for new investors to come in. It's a great time to make money, but it's a very poor time or a bad time to learn from the markets. The reason is that bull markets tend to go to people's heads. And this is a quote from Charlie Munger who said, if you are a duck on a pond and it's rising due to the downpour, बारिश हो रही है और आपके पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है तो आपको लगता है कि आप ऊपर जा रहे हैं. But actually, it's not because of you, it's because of the pond. Yeah? So this is what is happening in the market today. हमको कईयों को लगने लगा कि हम बहुत स्टार एनालिस्ट हैं, स्टॉक सिलेक्शन हमारा बहुत ही बढ़िया है, जो लेते हैं वो बढ़ जाता है. This is the reason why पैसा बन रहा है लेकिन अकल नहीं आ रही है. So, the price that we will pay to learn is going to be fairly, heavy and hopefully not so painful when it comes. So our markets, when we talk about equity markets, unfortunately, they are not standalone markets. They have other things impacting markets as well. So you have the debt market, which is so large. You have commodities, which also Nanda Sahab had touched upon briefly. You have commodities, maybe alag-alag hai, agri hai, oil and gas, metals hai, bullion hai. And then, of course, you have the new energy market coming out globally. Energy is a big market, whether it's renewables, whether it's nuclear, whether it's oil and gas. And there's a huge currency market which impacts all other markets. आपकी currency weak होती है तो फर्क पड़ जाता है. Dollar index ऊपर जाता है तो हमारे यहाँ पे धुलाई हो जाती है. So all of that has a very clear interlinkage also. And then there is an entitlement or an IPR market. So they started with carbon credits, but it's moving to different NFTs and all of those things. So we are not in the luxury of having a standalone market position. We are all connected or interrelated to all of these smaller markets or related markets. And that's why while you might be investing in equity, any change in the complexion of any of the other markets will also impact us. So it's always important to understand this and don't say, oh, मैं commodity करता ही नहीं हूँ, so I don't bother about how copper is doing, or I don't bother about how
oil is doing. You will have to do it. You will get impacted by it. So this is the overall scenario. Now, एक simple news आई थी March में that there is a fresh breed of investors which is aged 32, and I was looking at some of the young people on the panel here as well who are into this, and and we are doing this with so many people from a place like Mathura. Now, 5 years back, stock market interest in places like Mathura and all would not happen. You have Jitubhai Khandol, who is actually from an area in Gujarat, in Kutch, but he has such a big following that you couldn't have imagined this 5 years back, right? So what's happening is that there are a lot of new people coming into the market. तो पहले हम लोग FI का आंकड़ा देखते थे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DII का देखते थे. अब आपको रिटेल का भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिटेल की जो ताकत है वो thanks to the kind of initiative that all of you at CCM and IP are taking, and so many other things that are happening because of technology becoming accessible. And now look, this was a piece of news in March. 19th मार्च की न्यूज है ये. अगर आपने तब थोड़ा सा ध्यान देके इसको इंटरप्रेट किया होता और इसमें से कुछ निकाल के लिया होता तो आपको एक बहुत सिंपल स्टॉक दिख जाता और वो था CDSL. मार्च में CDSL का भाव रफली 600 रुपए के करीब था. 600 हो सकता है, 650. आज वो 1100 हो गया है. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी. आपको ये समझना था कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, दिख रहा है, आज नहीं तो 3 महीने बाद आना ही आना है. तो इसमें किसी को दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा थी नहीं. और अब CDSL 1100 पे सबको अच्छा लग रहा है. So what happens is that the news was there, but how you interpret that news to make money is what you need to understand. And this is exactly what I'm trying to say. There is so much data that's floating on social media about the new demat accounts that are opened and all. And मुझे याद है मार्च से मुझे किसी ने पूछा था कि IPO इतने सारे आ रहे हैं, इससे कौन से IPO में लगाना चाहिए. I said IPO में पैसा नहीं बनेगा आपका, तो आप CDSL में पैसा लगा लो, because every new IPO creates new folios, creates new investors, and this is what happens. So this is, by the way, not a recommendation, so please don't hold me responsible if you buy it today, but I'm just giving you a glimpse of how things have been so evident. Now, when you look at markets in isolation, it doesn't help. So it's important that you focus on some of the macro parameters of the economy. And that is, I keep on asking myself this question: interest rates, domestic interest rates, what happens if these go up? And I keep on trying to think and find answers to this question. I could take help from economists or from people who understand debt markets, but you should know what is it that it could impact, and at every stage it will be different. The same thing is for overseas or global interest rates. Now, in the US, if interest rates were to go up, you can imagine what kind of mayhem it would create if it is done all of a sudden without any आता है. जो हर महीने जब आता है तो ध्यान नहीं देते, थोड़ी देर न्यूज आती है, उसके बाद वो टीवी पे लता वेंकटेश ये वो अच्छी तरह डिस्कस करती है, सब दिखा सुनते हैं हम लोग और फिर भूल जाते हैं. बट IIB tells you so many things, and the same thing is with CPI and WPI. Of course, there's a lot of debate in terms of saying ये डेटा सही है नहीं है, कब आता है, लेट आता है, वो सब होता है. But even then, with the way it is, I think as investors, we should focus on these parameters very, very, very consciously. And they are very simple to understand. There's no rocket science in this. But without this, you cannot expect to read trends. So trend spotting, as I call it, is one of the most profitable things in the market. And for being able to do that, these are some 3, 4, 5 things that you need to very clearly watch out for. Now, I'll give you an example. This last year when we had the budget, we didn't know the pandemic will hit us. But the reason why the market went up and it looked so promising was that the government decided to take its checkbook out and say, now we will not bother about the fiscal deficit and we will just go out spending. And this is a table from the RBI website. It actually tells you for every rupee spent, okay, what is the impact that it has on various subheadings of the balance sheet of the government. So whether it's the capital outlay, whether it's the aggregate expenditure, the revenue expenditure, each of these things has a multiplier effect. And if you see some of the key multipliers, the non-defense capital outlay, which is massive,
Recording in progress. Hello. Yeah, okay. Sorry, I don't know whether my screen went off or something. Recording stopped. Recording in progress. So this is something where I had taken this graph because I found it very interesting. In last year towards the end, the allocation towards cash was the lowest in the last so many years. In the last 60 years, cash allocation by pension funds was never so low, which tells you that all funds in the US are fully invested. And this is a very big situation, which has implications that if the liquidity tap stops, it could have disastrous effects. So you just have to watch out for what change is happening on this pension fund allocation. And these are graphs which are very easily available. The same thing is for the mutual fund cash levels. Cash carried by mutual funds is the lowest in the last many years. And this is again a red flag or a signal that tells you that all funds are fully invested. Everybody is pouring money into the markets because there's so much liquidity, and that does tend to lead to speculative bubbles, as Nanda was explaining. पैसे की cost कम है, interest rate कम है, तो naturally थोड़ा सा bubble territory में जाएगा. I love watching and observing graphs rather than reading lots of reports, because every day, if you have to read, you have to spend more than 4-5 hours. I get a couple of hours every evening to read up on reports, but I prefer things which are graphically easy to understand. And if you build that habit consciously, so reading is one habit. Reading graphs or interpreting graphs or charts is another habit. I'm not talking technical analysis. I'm talking about visual, graphically rich data. Now, this was something which came up before the second wave came in. What happened is they said that there is a very simple logic था कि पूना, नागपुर और इस साइड की बेल्ट में आपके कोविड के केसेस सबसे पहले सेकेंड वेव में बढ़ना शुरू हुए थे, ठीक है, महाराष्ट्र में, before the rest of the country got into the second wave. And at that point in time, they correlated that this is on the track of the Mumbai-Nagpur-Howrah railway line. अब आप ये सोचिए कि बॉम्बे से हावड़ा जाने वाली रेलवे लाइन पे उस ट्रैक पे सबसे पहले सेकेंड वेव क्यों आया? उसका रीजन सिंपल था कि देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच वाज गोइंग टू वेस्ट बंगाल एंड कमिंग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ द इलेक्शन सेटअप दैट वाज आउट देयर. So there was a lot of travel of people of all types, and train travel was one of the most popular at that point in time. And the COVID second wave cases started off in these districts and then spread to the rest of the state and the rest of the country as well. So now very clearly tells you that this is not market related, but it tells you so many things. So when you look at these reports, there's a lot that you can interpret, provided you pay attention to it. Yeah. Now look at this graph. This graph was actually about crude oil futures. Crude oil futures in May 2021, the date wale futures were actually coming down, and nobody anticipated that crude would come back to $75 at that point in time. The reason was very simple, that the market had not built in any kind of a uptick in demand, and everybody who went wrong on this actually suffered. So when you look at graphs like these, it actually tells you that the consensus usually is wrong. So don't kind of, if the futures in May are indicating that the crude is going to come down and the exact opposite happened, as I told you earlier in the markets as well, it pays to be contrarian at times. Yeah, because if everybody is looking at the same direction, usually you will not get it right. And this is a trend which is very evident, that the composition of the Sensex has changed so dramatically over the last 10 years that if you look at companies which used to be there in terms of weightages and the companies that are there in weight, and some of them are not even there. So you have companies like Novartis India and NIIT and MTNL, which are nowhere in the Sensex anymore. The reason is because the market changes very rapidly, and the market changes itself in a way that we at times do not understand or do not pay attention to. So if you were to do that, you could very clearly make some money by a lot of new companies that have come into the, for example, last year HDFC Life came into the Nifty.
or Tata Consumer came into the Nifty recently, right? Tata Consumer was never in the Nifty, but ever since it has come into the Nifty, it's gone up by about 65% in such a short span of time. So what happens is you have to understand, market में पैसा जब आता है, अगर ETF flow आ रहा है, तो वो मार्केट की वेटेजेस, अपने स्टॉक्स की वेटेजेस के हिसाब से आएगा. अगर कोई नई चीज अंदर आई है तो उसमें पैसा आएगा ही आएगा. अगर इनफ्लो नहीं है तो नहीं आएगा. But the moment those kind of changes happen, it's an opportunity for you to build trading positions or tactical positions, if not fundamentally long-term positions. So this is a very clear indicator how to interpret any news flow related to rebalancing or Nifty composition changes or Sensex composition changes. And this is where we feel we think our market is very big, but we are just 1% of the global market equity market cap today, whereas the United States is still 55%, which means what happens in the US will impact the global markets much more than what we think our markets will. हम लोग को कभी-कभी समझ भी नहीं आती कि हमारा मार्केट तो ऊपर जा रहा है, वहां नीचे है, वहां ऊपर है, हम लोग क्यों नीचे हैं? We are such a small part of the global equity market that we at times tend to ignore that fact that we will get influenced by the larger markets, and that's why it's important to pay attention to news flow related to those markets as well. Now look at how Wall Street is today placed. In the last many years, it has never happened that US private sector financial assets as a percentage of their GDP, they have actually been, now they are 6 times the size of the Main Street business. Okay. Now what it tells you is that private sector financial assets, which include currency, deposits, equity shares, and securities, but does not include real estate, is already 6 times bigger. So there is, and this happened in the past when it was 4.5 times at the dot-com bubble, the GFS, the global financial crisis, GFC, it was 5 times. Right now it's 6 times. So, you know, you are playing with fire in any case. So you have to be extremely careful about what you do, and we tell you. Now this is when Joe Biden came in. आपको याद होगा सबको, when Joe Biden came in, everybody thought that the market will correct. US में आप तो हो गया, Trump चले गए. Trump was very popular and were very pro-market, but Biden is not. This is actually a graph which tells you when Democrats have been in power, actually markets have done well without volatility. When the Republicans were there, the markets have seen huge volatility. When Clinton was there, straight line up. When Obama was there, straight line up. And this is what is happening. So again, you know, consensus is very different than what history tells us. So you can learn more from history than from predicting the future. There's a huge repayment that is likely to come in 2021 starting from June, July. And that's the fear that most people have, that if there's so much of US Treasury repayment, उन्होंने पिछले साल तो छाप के करेंसी छाप दी और सप्लाई कर दी, अब वो सारा जो डेट है वो वापस भी देना है, and that starts coming due in middle of this year, which is now, you know, June, July, and that is a big burden, and that's exactly why the markets keep on, you know, the market is just waiting for some correction. Even in the US, if something goes wrong with the yields or with the interest rates or with the repayment that is due, and any change in that debt market or GSEC market will actually impact the equity markets as well. So just look at how things are, and it's not something that you can be very comfortable with. But so what I'm not trying to scare people from investing, but you invest in very high quality businesses and not necessarily businesses which are doing well just because of liquidity. Okay, this is another example how news flow can again make you money. Now, sometime in January of this year, we reached the peak power demand in our country. But, you know, sadly, the capacity of power that we have is 3,74,000 megawatts. And the evacuation or consumption was just 1,85,000. So what does it tell you? That very clearly distribution is not happening. Power generation तो हम लोग बहुत कर लेते हैं, कैपेसिटी बहुत है हमारे पास, पर वो पावर वहां तक पहुंचती नहीं है. तो अगर आपने जनवरी से लेके अभी जुलाई तक डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता, या कंपनीज दैट वर इन्वॉल्वड इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, वेदर इट वाज अ BHEL or whether it was an ABB or whether it was Power Grid Corporation, and you look at the returns, you don't need somebody to come and tell you that ये promising है. आपको दिख रहा था, ये न्यूज आ रही थी, सबके लिए आ रही थी, बट इस पे से इंटरप्रेट कर नहीं पा रहे थे हम लोग कि अगर ये न्यूज है तो इसमें क्या लेना चाहिए.
लेना ये चाहिए कि भाई हम 3,75,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम यूज सिर्फ कर पा रहे हैं 185, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, या जो हमारे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उसमें स्ट्रेस इतना है. So and I remember this was the time when I had gone all out and recommended that you buy power distribution assets, you buy companies which are involved in this, and I don't think any of them would have given less than 40-50% upsides. Now we keep on hearing about this PLI scheme is making a big change. So we have a Dixon Technology which has certainly become a star in the market. We have some other names, you know, PLI आ रहा है, मतलब फार्मा में आ रहा है, इसमें आ रहा है. आप देखेंगे अगर तो PLI मिनरल्स में क्यों नहीं आया, जेम्स एंड ज्वेलरी में क्यों नहीं आया, मशीनरी में क्यों नहीं आया, केमिकल में क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी हम बड़े थे. PLI आएगा तो छोटे एरियाज में आएगा जहां हम लोग छोटे हैं. तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए एंड यू विल बी एबल टू मेक आउट द नेक्स्ट PLI किसमें आएगा. तो इसमें कोई किसी को इनसाइड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इट इज लॉजिक. जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन कम है वहां पे PLI आएगा तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस. इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस व्हेन ऑलरेडी वी आर डूइंग सो वेल, राइट? सो इट्स इफ यू लुक एट दिस फॉर एग्जांपल, today our iron and steel exports are at a historic high. Our electronic and machinery, electric equipment record highs. Pharma, API, it's all balle. Auto vehicles or auto ancillaries, we are doing so well. अब जो नेक्स्ट PLI आएगा ये छोटे वाले एरियाज में आएगा. ये आपके टेक्सटाइल, नॉन निटेड, निटेड, यू नो, आज गोकुल दास का शेयर 200 रुपए के ऊपर चला गया. सो ओके, एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग, बट these are very clear trends that so I'm just giving you examples of how I think and how I look at data and try to figure out what I need to focus on, right? So at least you narrow down on the right things without bothering about the noise around it. क्या हो रहा है? Okay. This is a simple graph which is from the Food and Agriculture Organization, which is a United Nations UN this thing subset, and they actually create this price index where they tell you food price kahan ja rahe hain, and the food prices are going all the way up. This was released last year, and FAO actually said that food prices will go through the roof. And you, at that point in time, if you would have bought into sugar or tea or coffee or wheat or corn, anything that was related to food, you would have made at least 50%, 60% returns. You didn't need a specialist to come and tell you that, right? So the graph was there, but we ignored it. ये boring लगता है ना, इसमें stock कहाँ है, इसमें से क्या समझना है, ये तो है ही नहीं कोई, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा. तो ये जो चीजें जब आपके सामने आ रही हैं तो इनको आप इग्नोर करोगे तो नेचुरली आप लेट आओगे, पैसा लेट बनेगा. so this is what you need to do. 1960 से 2019 के बीच में अगर आप देखें तो कितने टाइम के लिए कितनी बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ग्लोबली अर्निंग्स पर शेयर और एबिटा का रेफरेंस हुआ है. पहले एक जमाना था जब EPS का नाम बहुत बोलबाला था कि हर एक चीज का कंपनी का हम EPS ढूंढने निकल जाते थे. अब थोड़ा सा वो EPS हट के अब एबिटा आ गया है. तो क्यों आ गया है? क्योंकि EPS तो मायने ही नहीं रखता. अगर शेयर 10 रुपए की जगह 2 रुपए का हो गया तो EPS घट जाएगा. हाउ डज इट टेल यू व्हाट द कंपनी इज डूइंग? पहले तो सब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले थे, so there was a uniformity. But if you look at EBITDA, you look at EV by EBITDA, then so trends are changing and you need to understand. So today, if you have to evaluate companies, the old models of price to earning and EPS and all price to book may not be relevant. What's relevant is that what is the company's EV by EBITDA, what is the company's market cap to sales. You know, those are things that you will need to kind of look at. So there are new paradigms or new parameters that you need to kind of start looking at doing. Now, I was giving you some example on trend spotting. Now, this graph, it's a very unusual graph. It's a graph of number of deaths in Germany in road accidents. It's about the safety standards that are followed by the German economy, right from 1953. And it tells you at each point when something or the other was invented, how the number of accidents started coming down. So safety belt 1973 से हिंदुस्तान में तो अभी भी पुलिस वाला दिखता है तभी हम लगाते हैं. But it's been there from 1973. ABS, anti-braking systems, airbags, front passenger airbag. हमारे यहाँ तो अभी भी कंपलसरी, गडकरी साहब मेहनत कर रहे हैं कि कंपलसरी कर दो, हर गाड़ी में फ्रंट एयरबैग होना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा. तो ये 1985 measures
actually throw opportunities. ये जर्मनी में हुआ है, हमारे यहाँ भी होगा, 10 साल 15 साल लेट होगा. And if you understand this, there's no reason why you can't start researching on companies that make airbags, can't invest into companies that are part of ESC or LDW and all these new things that are going to come into this thing. So gradually, you will be able to narrow down on the future of businesses in auto ancillaries if you understand this chart. अब ये chart देखे हम तो चले जाते 30 सेकंड में, अरे ठीक है हमको क्या फर्क पड़ता है, जर्मनी है. But this chart tells you what to look for in India as well, and this is how you spot trends. Another trend that happened till COVID happened, there were so many companies that were trying to go digital, banks, इंश्योरेंस कंपनीज, बट हर जगह बोलता नहीं केवाईसी तो सर आपको साइन करना ही पड़ेगा, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा. पहले कोई बैंक में खाता खुलवाने जाओ तो पहले जाना पड़ता था वहां, नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा. आप पुराने अपनी मम्मी को पापा को एज हो गई, उनको नहीं चला जा रहा, फिर भी लेके जाते थे. अब क्या होता है, आप घर बैठे हुए खाते खोल रहे हो, यू आर ओपनिंग अकाउंट्स, यू आर ऑपरेटिंग अकाउंट्स. नाउ व्हाट इज हैपेंड इन 1 year, मजबूरी आ गई, तो वो बेचारा सीईओ कंपनी का पीछे लगा रहा, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर लगा रहा, कुछ नहीं हुआ, कोविड ने आके वो काम कर दिया. So this is a trend that is now accelerated, and this acceleration of trend is something which is throwing up so many opportunities, and I'll tell you why. Look at this. This is the average cost of 1 GB of mobile data across the world. We are still the cheapest, and till we are the cheapest, why are we cheap? Because we have a huge population which cannot afford to pay more. The US is paying already $8-9 per GB of mobile data. We are hardly paying 0.09. Okay, हम लोग मतलब 6 रुपए GB लेके भी खुश नहीं होते कि यार बहुत महंगा पड़ता है, जियो देता ही नहीं है ज्यादा. Now when this happens, it very clearly tells you that people who are supplying mobile data are bound to grow. There is no way this price can come down. Price hike हुई नहीं है 1 साल से, ठीक है, for whatever reasons. जिस दिन होगी आपके stocks जो involved है सारे re-rate हो जाएंगे. So this is a trend you cannot reverse. Okay, so it's as simple as that. It's an investment. 3 were left. Now hopefully all 3 stay, or maybe 2 will stay, and they will keep on reaping the benefits. So I don't need to tell you, but there's enough potential in investing this. While we keep on investing on a daily basis, the change that happens, now this is a chart which actually goes back 36 years, or not maybe 36 years, but probably about close to 28-30 years. From 92, you see the shift that's happening, that countries with the highest GDP are moving from, you had a lot of companies from, a lot of economies from the Americas and Europe, which were part of it. All of it is turning into pink, which is Asia. So business is coming to Asia, GDP growths are coming to Asia. Now this is a trend that's very clear. But if you had to put money behind businesses, if somebody is exporting to Italy, मजा नहीं आएगा. इटली की स्पेंडिंग पावर ही नहीं बची है. फ्रांस तो नीचे सबसे बॉटम में आने वाला है. अगर आप बोलते हैं ये कंपनी इंडोनेशिया को सप्लाई करती है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. अरे वाह, इंडोनेशिया इज अ ग्रोइंग मार्केट वहां अभी. लेकिन आप किसी को बोलोगे इंडोनेशिया, तो वो रोएगा. इंडोनेशिया जाता है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ क्या कर लेगा. बट इंडोनेशिया, जापान, these are markets which are likely to actually become much bigger than what they were 20 years, 30 years back. So look at trends and then interpret that. So when a company comes and says that we export to France, and another company in the same business says, no, we focus on Vietnam and Indonesia and Philippines, I prefer the second. It's as simple as that. So this is because you know what's likely to come. The same thing is happening of how our Nifty and Sensex are changing. You have the composition of the Nifty has undergone such a dramatic change in the last 40 years that today you have less of materials, less of industrials, more of financials, more of consumer names. Energy, which was not even there, today you have so many energy stocks. You had nothing from pharma, which has suddenly come up. So these are businesses. Real estate भी है, but छोटा सा ही है, वो भी आगे चल के बढ़ेगा. Telecom एक stage पे आके अटका हुआ है. So what I'm trying to tell you is that you look at a picture, and a picture tells you, a picture is worth 1,000 words, as they say. It tells you so much that if you have to put for the next 10 years, focus on things which are going to be lasting for 10 years. And this is how India and US are different in terms of weightages. Sir, sorry to interrupt. There's some live streaming problem, so I would request just hold for a moment. Yes. There's a problem with live streaming, so I would request just hold for the session. Sure. Let me know when you want me to resume. Yeah. Yes, sir. Please, sir.
Hello? 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 मैं करता हूँ. Yeah, Amitji, can we switch on the third speaker now? No, sir. Actually, the live streaming is a problem. I couldn't hear you properly, Amitji. Sir, actually, the live streaming is not coming. There's a complaint, so that's why we are just told, sir. Live streaming is not coming, sir. Okay. So it's at admin level some problem? Yes, or sir. what? Yes, sir. No, admin level, sir. It's a problem with the admin level, sir. I'm just calling him. His Okay, okay. Okay, okay, okay. Yes, sir. Sorry for this, sir, interruption, sir. No problem. No problem. टेलीकॉम कंपनीज नाराज हो गए होंगी, बोला इतना सस्ता है डेटा इसलिए. Okay, thank you, Amit. So what I'm telling you again is that look at this graph, which this bar chart. It tells you the difference. Sir, you can start, sir. Yeah. Fine, sir. Thank you. So I'm saying the difference between what weightages certain sectors have in our indices and what are there in the main indices in the US. If you see, we are very low on real estate today. We are very low on industrials. We are hardly there in healthcare or communication services. So all these sectors will change now with just one IPO that is coming from a new age business like Zomato with such a huge market cap. Things change. So what's going to happen is this has happened in the US. It will happen here. So if you have to invest in businesses which are future looking, future facing, you will have to look at these are the businesses that will grow as we go along, and not just financial, not just consumer staples or utilities or things like that. Okay, so it's a very clear indication of shape of things to come, or what you could expect, what's likely. Yeah. So this is another trend which is being very clearly spotted. Some time back, Bloomberg had said that there was a survey conducted of the richest people in the world, and all of them were asked, how long do you think you will live? And all of them thought they will live till 100. Now, when the rich people decide that or think that they are going to live till 100, it's very obvious that they will spend a lot on insurance, a lot of healthcare, a lot of post-retirement kind of services. So those are the kind of businesses that will grow. And if anybody who's in this business will start seeing a lot of value being created. So these are new businesses that are coming up. But it's a very clear trend. आज नहीं आपको 5 साल बाद दिखेगा कि इससे सारी कंपनियां, even in the listed space there are offering post-retirement homes and all of that. This interview I had come across on the last week of 2020. Okay. And CEO of Amazon was asked about 8 predictions on how technology will change our lives. And look at what he said. He said the cloud will be everywhere. Machine learning will be part of our lives. 2021 में pictures, videos and audios will speak more than words. आज आपके पास YouTube है, आज आपके पास Instagram है, आज आपके पास Facebook है, आपके पास किताबें नहीं. So what's happening is the way we are learning and reading and consuming information is changing. And that's why businesses which are into this are prospering so much. Technology will transform our physical worlds. There will be much more social distancing even after COVID is controlled, because people will start realizing that technology can sort out. We are having a webinar of 3,000 people without a single person being next to each other, right? So that's the kind of thing. Remote learning, education is going to undergo a sea change, and that's happening in India all across. Today, every small town, every child is studying digitally. And imagine if the content gets standardized, if the content gets richer, and there are more people in this business,
the way our children learn is going to be absolutely dramatic, and nobody needs to be in a big city to learn or be smarter than the others. So all of this is trends which tell you so many companies that will come and prosper in this. So all you have to do is understand what people are saying, what the people who are predicting about things on these types of developments are doing, and then start looking out. Now, when you try to spot trends, it's not always simple. It's quite tricky. And this graph I use to highlight a very, very funny thing. In 2007, the iPhone was launched. And after the iPhone was launched, surprisingly, the quantum of chewing gum sales in the US actually kept on coming down all the way till 2016-17. In 10 years, the US market actually saw sales of chewing gum come down, and nobody could make out why that was happening. So that's a very interesting correlation in this. I don't know, I mean, since I can't ask you questions, but the reason was most of the time chewing gum sales happened at the checkout counter in supermarkets. And the moment the iPhone came, nobody had time to look around what was on display and put some chewing gum in their basket. Instead, they kept on kept on spending time on the iPhone and forgot to buy the chewing gum. And that was one of the reasons. So, chewing gum companies, which are some of the Fortune 500 companies like Perfetti and Wrigley's and all of these, nobody thought that this will impact them. But this was such a big impact. Their sales actually de-grew by 16% in that period. So what I'm trying to tell you is, again, there are trends which are at times tricky to spot. But if you can figure this out, there's a lot of money to be made. Okay. So that was part of the macros and all. Now, what each of us has a favorite sector. What I normally ask people to do is that you write down the reason why you like sectors, and then understand what factors will influence your favorite sectors. Let's say if my favorite sector is automobiles, I need to be very thorough about what parameters I need to look at closely to anticipate any kind of a news flow related to that. So, for example, if I'm in banking, all I need to look at is largely the net interest incomes, NPS, CASA, provisioning. If I'm in auto, I should look at average realization, margin, market share. I don't need to know too much. Be selective of what you want to know. And it's very clear that all of this will kind of start translating into a lot of understanding. Don't try to eat everything in one go. Digest it in small bites, pieces. So, for example, if you are interested in oil and gas, all you need to understand is the margins, the gross refining margins, the product mix, inventory, and you can actually start making a lot of sense of that data. So this is what you need to do. When you look at company fundamentals, my simple belief is that, and this was more for people who advise clients, a lot of you would be doing that as well. Don't let your clients buy on the basis of value. Make them buy on the basis of value and not price. Where the value of a company reflects how good its business model is, whereas the price is nothing but what the market thinks about that business, not the reality, but the market perception on that is the price. And there's always usually a gap between these two prices, between the value and the price. The value of the stock is determined by hard numbers like cash flows, growth, what kind of risk premiums you attach to it. Whereas the price is determined by a function of demand and supply for that stock. So, for example, there is a company, let's say an example, Deepak Nitrite. Now, Deepak Nitrite is suddenly in demand because everybody wants to own a part of that. But at 600, at 800 rupees last year, the cash flows were very promising. There was growth coming in. Nobody liked it. But today there is so much of demand for the stock that the same business is started getting a higher multiple. So that's where there's a lot of value gap that is there, and you need to make money out of that. If you think a company is good and the market view on it is also good, normally हम लोग क्या करते हैं, हम जाके खरीद लेते हैं. But actually कुछ नहीं करना है, आपको ignore करना है. Because if the company is good and the market view also is good, you will not make money because already priced in. But if the company you think is good and the market doesn't like that company, that's the time to buy it. Because then you will make that money because there's a value gap. But same way, if you think the company is bad and the market still loves it, give it to the market. Don't worry, don't hold on to it, just sell it. And the same way, if you feel the company is bad and the market also feels the company is bad, nothing much can be done, nobody can make money, just ignore it. So don't make this mistake of doing the reverse. What we do is, if we like a company and the market also talks well about the company, बहुत अच्छा है, सब जगह news अच्छा है, we go and buy it. Actually, you will not make money on it.
You will only make money if the company's perception is bad. So, for example, one of Jitubhai's favorite stock these days is from real estate. The earlier management is on its way out, is almost out. The new management is coming. They are trying to transform the company. The market still doesn't like the company because of the old management's perception. But if the company fundamentals have improved and it's good, and the market thinks it's still bad, that's the time to buy. And it's already gone up 40% from the time Jitubhai would have bought. So you need to think independently of the market view. That's what I'm trying to do. And don't worry about how to analyze the stock. All of you are chartered accountants, most of you are, and you would know that very easily. But that's not going to help make money. What's important is to focus on what stock to analyze. If you can identify the right stock, all of you can analyze it. But to identify that stock is the key where money is made. Instead of focusing on what to buy, we keep on saying, tell us something which we can go out and buy on Wednesday morning. You don't need to worry about that. It's important to focus on how much to buy. आपको अच्छी चीज भी दिख जाएगी, लेकिन अगर आप वो ले नहीं पाते हो ज्यादा, तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे? So a lot of times people get to understand that this company is very promising, but it's not even 1% of the portfolio. And then it appreciates, it goes 3x from there. फिर भी आपके portfolio में size तो change होगा ही नहीं क्योंकि इतना छोटा था. So focus on, buying it in that conviction with that quantity that is backed with a lot of conviction. Don't try to time the market. It has never worked. Timing the market is very, very difficult. It's okay for traders, but for investors, it doesn't work. Focus on how long you can remain invested. If you can remain invested, all जो आपके पुराने पाप हैं वो भी धुल जाते हैं. As long as the business is good. Price may go down, but will come up. But the business should be robust enough. The business should be strong enough for it to do that. How do you interpret businesses? Balance sheets, P&L are secondary, but you need to understand the business model. And I have a very simple explanation to that. जैसे मटर के दाने निकलते हैं, 6 दाने निकले आपके, इसमें से 6 चीजें आपको देखनी है. People, product, process, positioning, pitfalls, and promise. I'll quickly run you through what I mean by each of these. People is the management. Who runs the business? Who owns the business? How efficiently it is run? Product is what kind of things the company sells. Who's it selling to? Who are the customers? What is it that it can go to in terms of complexities? Process क्या follow करते हैं? बेचते कैसे हैं ये लोग? इनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन हर ब्रांच अलग अलग बेचती है कि सेम होती है. आप इंडिगो की कोई भी फ्लाइट लीजिए, आपको ऐसी फील आएगी कि यार ये तो हर एक जगह एक ही चीज बोलते हैं, एक ही रेट वो रूटीन फॉलो करते हैं, एक ही चीजें देते हैं, एक ही कलर की सीट होती है. So that is where processes start making sense. How is the company positioned and differentiates itself from other people or other competition? This is very important. Does it have pricing power? So for example, for a long time, Titan was selling jewelry which you could buy from any other jewelry, but you went to Titan because you felt it was a safe place. It was a honest place. It was a good place to buy from. So that was the positioning. Pitfalls मतलब कहाँ drawbacks कहाँ पे हैं, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, पहले हुआ है तब क्या इन्होंने किया था, उन्होंने how did they overcome all those गड़बड़s? That is how it works. And then of course promise. Promise means आगे का फ्यूचर कितना है, मार्केट साइज कितनी है, इस कंपनी में दम है कि नहीं to grow, whether there's headroom for growth. So that's what you need to look at. And how do you do all of this? Very simple. Every company you want to invest into, interact with that as a buyer or as a customer. Okay, except for maybe hospitals and pharma companies, don't try to do that there. But in other companies, go visit their showrooms, go visit their stores, write to them, ask for products. You can do a lot of inquiries as a business entity. You can create a URL, and I've done that in the past. 10 years back, I created a business URL. So I used to write to companies inquiring about their product, and they used to send back quotations and their terms and conditions. उससे पता चलता है company कितनी aggressive है, smart है, कर रहे हैं कि नहीं. Talk to employees of the company, especially those who have left in recent times. Always interact with industry specialists, even if they are from companies which are not listed, but you will get to know about this. And the best ways to do that is when you attend social events like weddings and functions and family gatherings, or you're flying in a flight, you have somebody sitting next to you, talk to them about what they do, understand the business. And there's a lot of and remember, the guy can't even run away from the seat. Flight में 2 घंटे आपके साथ बैठना ही है उसको. So, all of that you can do. Scan recruitment pages. Tells a lot about which companies are recruiting, hiring, what kind of people they're hiring. If they're project companies. So I'll give you an example. I don't know, I might have a slide on that. Last year, January of 2020,
there was 2 companies which were hiring API specialists, okay? People with background in biochemistry and pharmacology and all that. And they were recruiting like every week. They used to, print these ads. Now, those companies have become market leaders in API today. When you are looking at that advertisement that they are hiring people, it is so obvious that they are getting stronger in that business or they're growing in that business. So it's so simple. You don't even need somebody to tell you that ye hone wala hai, ye ho raha hai, aapki nazaron ke samne. So that's how you can kind of do that. And you stay connected with the various vendors of the company, whether it's recruiters, whether it's suppliers, vendors, ad agencies. You get to know a lot about what the company is doing through that. So understanding the business is much more important than just the balance sheet analysis that we keep on focusing on. And today it's so easy to attend AGMs. Digital AGMs are actually quite easy to figure out, and you should attend that. Read their annual reports, attend AGMs, launches, events, whatever it is. Yeah. So how do you understand news flow? All you do is every day evening, make it a habit to open your diary and write the news that you have read, which can potentially influence markets on the next day. When you read something, write that down. Try to then understand or decipher or interpret saying which sector or script is likely to be influenced and how, positive and negative. So, for example, day before yesterday, Saturday, RBI gave the permission to apply for merging small finance banks with the holding companies. It was the permission to apply. They have not yet given approval to actually merge, but you can apply for it in September. Next day, Monday, all holding companies, or whether it was Equitas or Ujjivan or even IDFC Limited, because it's a holdco for the bank, they were up 10, 15, 20%. Now, if you could have understood this when the news came, it was simple if you're a trader, right? So these are things that happen every day. I mean, I can give you examples, of what's happening right now, and there'll be tomorrow there could be positive influence and negative influence on certain companies. But you have to make this a habit, and I do it still after so many years. Also, I still do it. It's it's not something which you can stop if you really want to be in the market. So, for example, there was this announcement that Tata Power rolled out a live peer-to-peer solar energy trading project, which means that if I have a solar rooftop and I generate energy, I can sell it to my neighbor. Now, Tata Power launched this, and nobody realized that it is such a big thing. And a week back, there was a huge advertisement in the Economic Times front page where Tata Power actually started explaining what they're doing as a company. They are no more a power producer. They are no more a power distributor. They are into renewables. They are into charging. They are into metering. They are into home automation. I mean, it's a company which is far, far different than what we know it as. And that's exactly why it's moved from 48 rupees last year to 130 rupees today. And it's still doing what it is, what it has promised to do. So, and we keep on saying power companies don't do well, thakka hua hai, kuch nahi hota, but look at where the money is being made. Now, there is so much of halla about sugar in India. Sugar is the next big thing. Everything which is remotely sugar is going up and flying. But actually, all the movement in sugar is because of ethanol. Just because we started selling more as ethanol and the government started increasing its targets. But actually, we are absolutely unviable when it comes to sugar exports. The reason being, we are way, way costlier than sugar produced by Brazil or by some of the other countries, if you look at Thailand and Australia. So when it comes to exports and when we go through a surplus, we will not be able to make that kind of money. So this whole euphoria which is there has done well. आपके एक साल बहुत अच्छा गया. Ethanol के चक्कर में story हो गई. Time से आपको निकलना है, cycle समझना है. तो these graphs tell you a story very clearly. I don't need to tell you, but you know the hint. It's as simple as that. Sometime in March, China actually created a new law where the Yangtze River, they said we are going to protect environmentally, it is getting bad, and everything around it, whether it was chemicals or steel, everything will stop. And that's exactly when all these commodities started seeing a huge price movement in India and things moved up so positively. If you had read this piece of news, understood what they are trying, figured out Yangtze River पे कौन-कौन सी companies हैं, क्या बनाती हैं, वो सारी companies यहाँ जो इंडिया में वो product जो बना रही है companies, सबके भाव 40-50% ऊपर है 3 महीने में. So it's as simple as that. Now we keep on wondering, why is so-and-so chemical going up? Why is so-and-so metal going up? It's because their demand and supply that's changing.
Okay, I'll quickly run you through this. Now, this is data which was related to North American Class 8 truck orders. Now, a lot of times we keep on seeing data, but we don't know which stock to buy. Now, North America is one of the biggest markets where Bharat Forge supplies its products. Bharat Forge, अगर आपको डेटा दिख रहा है कि ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, तो भारत फौज का भी ग्राफ ऊपर जाना चाहिए. And that's exactly what's happened, and it continues to do well. अभी तो शायद भाव 700 रुपए हो गया. I have not updated this slide, but this is old. But I'm just saying this was evident last year. You didn't need rocket science to figure this out. This was so obvious. Last year, New Year Eve Day, there was one very small tweet that one of the co-founders of Zomato mentioned that we have clocked 60% more gross market value of the orders that we got, okay, in a single day. And the orders per minute were at the highest. The next day, so this was 1st of Jan, which was a holiday, which was Friday, and then उसके बाद अगर आपने लिया होता वो इतना वो नौकरी का स्टॉक 4700 के आसपास था, वहां से सीधा 5400 हो गया सिर्फ 3 दिन में. So it is so simple that when somebody is telling you there is a change that's happening, you have to see what you can do with it. So you don't need and 4700 to 5400 in just a matter of 3 days is huge. All you have to do is methodically write down your favorite sources of news, and these cannot be WhatsApp group chats or Telegram groups. That's not news, that's noise. Please cut that out. In fact, there are very few groups that I actually read or participate in, for the simple reason most of them keep on regurgitating or repeating the same news that you have. For example, today I've already read from 9 different places that 2 new stocks are included in the FNO. अरे वो ठीक है ना, हल्ला क्यों मचाना है, बट वो हर एक जना भेजे जा रहा है आपको, तो वो इतना ज्यादा नॉइज हो जाता है that it will keep on taking away your bandwidth and your time. So keep yourself out of all that. Fix your sources of news, whether it's newspapers or whether it's things like Reuters or Bloomberg or whatever you like, but fix that and just every day follow that. Every day, go back to the same source. Don't keep on changing your source. Then you will be able to understand the news flow. And once you have identified these news flow, then you start anticipating developments, that what else can happen. Now, I'll give you a classic example. This holding company news that came, RBI is going to allow them to apply, is in September. Now, what will happen is the MFI business is undergoing a lot of pain because of the second wave. जब जून के numbers आएंगे तो ये काफी stocks correct होंगे या potentially correct हो सकते हैं. जब ये correct होंगे अगर, तो तब आपको लेना है, क्योंकि जुलाई अगस्त तक इनके नंबर्स आएंगे. अगर उसमें मार पड़ता है, आपको पता है न्यूज जो आई है वो सितंबर में उसका एग्जीक्यूशन होना है. होता ही है कि हम भूल जाते हैं. आप जो पुराने जमाने में देयर यूज्ड टू बी अ डायरी जिसमें हर पेज की एक डेट का एक पेज फुल पेज हुआ करता था, वो कोई यूज नहीं करता है आजकल. आप वो डायरी रखो, मेरे पास है, मैं तो अभी भी यूज करता हूँ. वो सितंबर 1 की जाके डेट पे पेज पे आप लिख दीजिए that MFI stocks to get re-rated. आप मानोगे नहीं, सितंबर तक सब भूल जाएंगे, और जब रिजल्ट्स आएंगे, जब ये सब स्टॉक्स नीचे आएंगे, तब ये लेने का चांस होगा. आपको फिर एक जुलाई अगस्त के बाद सितंबर तक का एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है. So I'm just saying these are simple things that you can build in your trading system, in your investing methodology. There's no rocket science, it's just discipline. This is what I keep on telling people, that please understand who you are. If you are a trader, news matters. If you are an investor, information matters. News doesn't matter. Because what takes 30 to 60 seconds is all announcements that come on the BSE or the NSE or the SEBI side. अगले 5 या 10 मिनट में उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, और वो टीवी चैनल पे, न्यूज वायर पे, सब पे आने लगेगा, और 2-3 घंटे में उस पर रिपोर्ट्स या नोट्स भी आने लगेंगे. तो आपको जो पैसा बनाना है वो बहुत कम टाइम है आपके पास. रिएक्शन टाइम आपके पास सिर्फ 60 सेकंड्स है. जब वो न्यूज आती है कोई भी बीएसई की या एनएसई की वेबसाइट पे, 5 से 10 मिनट है आपके पास जब वो टीवी पे आती है, फिर सबके पास आ जाएगी. सो डोंट रिएक्ट ऑन न्यूज व्हिच इज ओल्ड if you are if you are a trader. So that's all you have to do. आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के एक हफ्ते पहले की या फिर बोले आज लूंगा मैं, तो तब तक तो गेम पूरी हो जाती है. So this is what you have to do. News is important because it has the shelf life for a few seconds, and that will make you money in a few minutes. If you read news which is few minutes old,
in the next hour or so, you will make some money. If you read news which is already a few hours old, you'll probably need a few days to make money. This is what my experience is very simply. So don't try to reverse the whole thing. कि आपके न्यूज 1-2 घंटे हो गए आई और उसके ऊपर आज आप कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं इंट्राडे में कमा लूंगा. इंट्राडे में नहीं बनेगा. उसके लिए आपको टैक्टिकल पोजिशनल कॉल ही लेना पड़ेगा. So that's the kind of flow that you need to look at. So yeah, so this is what happens. I'm just giving higher crude prices, aviation stocks negative हो जाएंगे, but वो नहीं होते हैं. Because हम ये भूल जाते हैं that market share Indigo का अभी भी बहुत high है. Crude 75 पे आ गया, फिर भी Indigo is at all-time high. So why? Because there's no other competition. But the news that worked in Indigo's favor was the capacity is likely to go up from 50% to 67%. So those kind of things we forget. But that's what you have to see when you read news. What is the immediate impact that you could do? Same thing happened when the corona case count was going up. At that point in time, we didn't like diagnostics. Today, everybody loves diagnostics, but it's too late. You had to do it when the second wave started off. You had to do it when the vaccination drive started off. So there's a small company in Ahmedabad called Shelby Hospital. They started a plan saying for 1,400 or 1,300, we will come and we'll get you vaccinated. They had a huge queue, and everywhere they were making more money on this than their regular procedures. So, and suddenly the stock went up. So these are things that all the time keep on happening. Okay, I'm just giving some examples. There could be so many of them. I can fill the whole page. But what is important as an investor is information, not news, because investors will absorb information and infer from it. उसमें से juice निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे that this is the information. Now, how do I use it? They are not in a hurry to do it. It takes time to digest, to analyze, to figure out. And that inference then leads to the right kind of analysis. You will have numbers, you will look at their current business parameters, extrapolate that. And this analysis will help you in anticipation of developments. For the instance, the one that I spoke about, this small finance bank and holding company instance. This is something where you are anticipating that in September, developments will happen. And you have a good 3 months to buy into it, not the next day. You don't have to buy the next day. Yeah. But you are anticipating that something will happen and how will it impact? How will the holding company discount disappear? What value it will create? What is the advantage that it will create? These anticipate developments later on become news. So when finally that happens, I'm already ready because you had anticipated. This is the whole game. So for example, I'll tell you right now, the government is focusing a lot on the Northeast. Every day you hear about developments in the Northeast. Identify businesses that are in the Northeast, whether it's cement, whether it's transportation, whether it's consumer goods. And the Northeast will probably be one of the fastest growing pockets in our country in the next 2 years. Yeah. So it is so obvious that what's going to happen in 2 years, aapko already pata hai. So all you have to do is start anticipating, making a note of it, figuring out what's likely to be there. This is how it works. We get Maruti sales numbers every month, but then when the quarterly numbers come, we react surprised, saying, "Oh, aise kaise ho gaya? Ye kaise ho gaya?" All of that. So, so many things. These are all changes that you can make. So this is what I wanted to share with you. And I just want to leave you with one thought. And this, I love this quote because it says, too much information is not required. Because too much information will actually create an attention deficit. So you focus on less information, cut the noise out. Don't waste your time on Telegram channels and WhatsApps and so many other things. I'm not saying everybody is not good, but be very choosy and selective about it. Be part of groups which are focused. As Nandaji said, learn, have a network of friends that teach you. Be part of a group that there is value addition, not just tips being exchanged. Okay, there's no point. Heard on street, ye hai, wo hai, all of that is all noise. Heard on street, मतलब वो खत्म हो गया है. उसमें कोई story में जान ही नहीं होती. तब जाके वो heard on street होता है. So don't waste your time on all that. So this is as simple as that. It's very easy, but it takes a lot of discipline. But news does tell you the cause and effect relationship in the market, and there's a lot of money that can be made, especially given all your understanding of fundamentals and balance sheets and accounts and everything that you cover. It'll all be put to use if you marry it with this kind of thing. So that's all I have. Thank you so much. Thank you.
अनुज जी आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Yeah, thank you, Prakash sir. Thank you very much. Very, very big round of applause to Prakash ji. Thank you. And Kandol sir. Yeah. Now can we have the question answer session? Hello. Sanjeev ji. Yes, sir. Nanda sir. Sir, I think a very scintillating presentation, Prakash bhai. Thank you, sir. And mind-boggling, scintillating presentation, I should say. सर मजा आ गया सर देख के ना. मान के जीतू भाई को सर, वो जिसको भी चुनते हैं सर, उनका सर बहुत बढ़िया है. उसको exceedingly well. My compliments for the same. My compliments. Thank you so much. Exhaustive. I feel you're tired also, but it was a very nice presentation. Yeah, we'll send you the video. Time कम था इसलिए थोड़ा rush किया मैंने. When I will try to send the video also So because now people all can we- across are wanting it. जी chairman sir. Yeah, now yeah Sanjeev ji. सर प्रकाश दीवान सर का सेशन आज वो वाला सेशन था कि इन्होंने हमारी बास्केट में मछलियां नहीं पकड़ी बल्कि हमको मछलियां पकड़ना सिखाया. वाह वाह. थैंक यू. Great. Yeah. मैं So, now- इसके बीच में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा प्रकाश जी को देखकर कि जो आला शख्स होते हैं, आला मीन्स नोबल, जो आला शख्स होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं. सुराही पानी देती है हमेशा सर नगु होकर. सुराही झुकती भी और पानी भी देती है सर. ग्रेट प्रेजेंटेशन आई शुड से. Thank you so much. सर Thank you. थैंक यू. जी अनुज भाई. So thank you very much, Nanda sir. Thank you very much, Prakash sir, for the wonderful television. And we are having CA Jitendra Khandol sir, our very, very prominent resource person and the chairman of Gandhinagar branch. Gandhidham. Yeah. फॉर्मर चेयरमैन ऑफ गांधीधाम. ना जब आप देखिए कितनी दुकानदार बैठक होगी सर. Former. पैड डाल के बैठना, पैड वगैरह डाल Yes, के yes, yes, हेलमेट yes. वगैरह. Yes. Great. So may I request CA Jitendra Khandol sir for his deliberation, please. May I request all of you to put your hands together in welcoming CA Jitendra Khandol. Sir, am I audible? Very much, Jitu bhai. Yes. Respected Chairman of Capital Market and Investor Protection Committee, C. Anuj Goyal sir, CCM and my close friend Nanda ji, Chairman of Mathura branch Sanjeev ji, my co-speaker Prakash ji, who is also my close friend, other coordinators of this event. At the outset, I am thankful to Capital Market and Investor Protection Committee for inviting me as a speaker in this VCM. Friends, we have already learned in last two sessions that if we want to create or generate a wealth through equity, then we have to invest consistently and regularly over a period of time into a good business, good stock. So it is important that we have to invest consistently and regularly. लेकिन अगर हमको consistently और regularly invest करना है तो वो चाहिए regular income. So initial stage of my life, when I haven't that much of capital, मैंने सोचा कि अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में लंबी इनिंग्स खेलनी है तो फर्स्ट मैं ट्रेडिंग करूं और जो भी पैसा ट्रेडिंग में से बनाऊं उसमें से सर्टेन परसेंटेज आई हैव टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग रन. सो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और वेल्थ जनरेट करो. उस हिसाब से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की. So friends, today I have to talk only about trading. as प्रकाश जी और नंदा जी ने इन्वेस्टमेंट में तो बहुत अच्छा बता दिया कि इन्वेस्टमेंट में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखनी है. तो मैं भी अपना जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो ऐसे ही जो स्मार्ट फंड मैनेजर है या दोस्त लोग हैं उसकी एडवाइस पे ही करता हूँ. I have to look only for trading. So friends, first and foremost thing which is required to be kept in mind before entering into the stock market is you must clear about whether you are a trader or investor. Because as per my experience of 20 years in this
market, majority of the players in the market, they themselves never know whether they are trader or investors. I will give you a simple example. Sanjeev ji, a long-term investor, has bought 100 shares of Reliance at a price of 2,000 for long-term investment. And fortunately, within day or two, Reliance share price goes up to say 2,100. Then he thinks, wow, it's a 5% return within 2 days. Means 75% return on monthly basis. And VCA are very much happy with this type of return. And on that basis, he has sold 100 shares of Reliance at 2,100. And thereby, he has converted his investment position into trading position. But what happens? If share prices goes, say, below 1,800, then he thinks, Reliance is a very good company. In the long run, share prices will go up. So, he remains investor till the time Reliance reaches 2,000. And once it reaches 2,000, he will sell it. So what I mean to say, for a person, if share prices goes in his favor, then he becomes trader. And share prices goes in his favor, he will become long-term investor. This is not true. अगर आपको पैसा बनाना है, तो आपको क्लियर कट सेट ऑफ माइंड से जाना है कि वेदर यू आर ट्रेडर or investor. So whenever you start trading for the first time, must sure that if you are a trader, strictly remain as a trader, and if you are an investor, then follow different methods. Friends, with this, we are starting with a set of rules that is to be kept in mind in our day-to-day trading activity. Remember, friends, these are the rules which are summary of my 20 years of trading life in future and option segment of equity derivatives. I have been in this future and option segment since its inception in India in 2001. Can I share my screen? Friends, we are starting with a set of rules to be kept in mind to become a successful trader. Golden rule number 1, which says, when you are trading for the first time, take only 10% risk of the total amount available for the trading. What does this mean? This means that if you are starting with a trading capital of 1 lakh rupees, then in the first trade, your maximum risk should only be up to 10,000 rupees, which means your maximum stop loss in your first trade is 10,000 rupees. So even if you goes wrong, then still you have in the hand 90% of the capital. So if your goes or your trade goes wrong, you still have a 90,000. Again, you have to divide that 90,000 into 10 and take risk in the second trade only to the extent of keep stop loss of only to the extent of 9,000 rupees. But if trade goes in your favor and you say on 20,000 rupees, then again divide total capital including profit to 10 and take appropriate risk. मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप जब भी ट्रेडिंग लाइन में आते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को ऐसे पार्ट में डिवाइड करके और रिस्क लेना है, क्योंकि दिस मार्केट इज जस्ट लाइक ए क्रिकेट मैच. इन द क्रिकेट मैच, इफ यू हैव टू स्कोर हाई और ओवर ए स्टे longer period of time, then you have to be on the pitch for longer period of time. वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहना जरूरी है, और लंबे समय तक आप तभी टिक पाओगे जब आप अपना रिस्क
कैलकुलेट करके रिस्क मेंटेन करके चलोगे तो ही. So always start with certain part and accordingly take the risk. Rule number 2, maintain risk reward ratio. What is the risk reward ratio? It means what's the risk you are taking in your particular trade against the reward expecting. Ideally, it should be 5:1, but at least it should be minimum 3:1. For example, you are buying Tata Steel for trading at, say, for example, 390 rupees with 10 rupees as a stop loss, then your targeted profit should be in the range of 30 to 50 rupees. So you have to maintain risk reward ratio. That's why I am always saying, remember my words, I am always saying, even if IM goes wrong 8 times out of 10 times, still I am in the money, because whatever I earn in my 2 favorable trade is much, much, much higher than my 8 unfavorable trade. Actually, ट्रेडिंग में लोगों का क्या होता है, जैसे नंदा जी ने भी बीच में बताया कि हम कोई भी ट्रेड्स लेते हैं तो अपना ट्रेड्स फेवर में जाता है तो वो ट्रेड हम जल्दी खत्म कर देते हैं. बट इफ ट्रेड गोज इन अनफेवर, यही सोच में कि नहीं ये ट्रेड मेरा धीरे धीरे फेवर में आ जाएगा और हम उसमें ज्यादा खड़े रहते हैं. तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम जो 10 में से 9 ट्रेड में भी अगर सही जाते हैं और जो पैसा बनाते हैं, और अगर एक भी ट्रेड हमारा गलत गया, उसमें जो पैसा हम गंवाते हैं, इट इज मच हायर देन 9 राइट ट्रेड. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. मैं हर बार सब मेरे ग्रुप में भी यही बोलता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आप कितनी बार राइट हुए या कितनी बार रॉन्ग हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने कितने राइट ट्रेड में कितना पैसा बनाया और कितने रॉन्ग ट्रेड में कितना पैसा खोया. मैं ऑलवेज क्लियरली बोलता हूं कि आई एम इवन नॉट राइट 5 times out of 10 times, still I am in the money. क्योंकि जो मेरे 2 ट्रेड सही बनते हैं ना, उसमें जो पैसा बनता है ना, वो 9 ट्रेड से बहुत, मतलब 8 से बहुत ज्यादा होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर गोल्डन रूल नंबर 2, maintain risk reward ratio. The third one, keep a strict stop loss. Friends, this rule is called the father of all the rules. This is the prominent rules of the trading, that there must be strict stop loss in your each and every trade. The traders who doesn't put stop loss in the trade, I can say never enter in the world of trading. स्टॉप लॉस वो ब्रह्मास्त्र है, वो आपको कभी भी बिगर लॉस में से बचाता है. फ्रेंड्स, whenever I am giving trading calls, within a few seconds people are asking, what are the targets? What are the targets? Friends, it is not the targets which is in our hand, it is the stop loss which is in our hand. We have to keep strict stop loss. Target might be revisable depending upon the situation, scenario of the market, but stop loss is always fixed. इसीलिए मैं हर बार यही बोलता हूं कि जैसे हमने अभी रिसेंटली हर्षद मेहता स्कीम वाली सीरीज देखी, उसका एक डायलॉग जो फेमस है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है. वैसे ही अगर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस है तो ट्रेडिंग है, वरना ट्रेडिंग नहीं है. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है. पीपल आर आस्किंग मी कि हम जब भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारी स्टॉप लॉस हिट होती है. इसलिए जब भी प्राइस स्टॉप लॉस के नजदीक आता है तो हम लोग रिवाइज कर देते हैं. फ्रेंड, दिस इज नॉट ट्रू. अगर आपने स्टॉप लॉस सही तरीके से एंट्री लेके सही स्टॉप लॉस लगाया है और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको उसको हिट होने ही देना है. अपने माइंड में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, एक्चुअल मशीन के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, आई एम 100% श्योर
only one day you will lose everything. ये स्टॉप लॉस इतना बेस्ट चीज है ना, मैं बोल रहा हूँ कि इतने सालों में मैंने देखा है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आई, एक ही चीज हमको बचाती है, वो है स्टॉप लॉस. सो ऑलवेज कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. अगेन देयर आर समटाइम्स सच ए सिचुएशन दैट आप अगले दिन आपका कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी ओवर करते हो और नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ एनी गैप अप और गैप डाउन आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस है उससे आइदर अप और डाउन प्राइस खुलता है. तो उस दिन आपको एक सेकंड भी बिना सोचे ओपनिंग में जो भी प्राइस हो वही प्राइस पे आपको अपना स्क्वायर अप पोजीशन करना है. समटाइम्स क्या है कि भाई मैंने 2% की स्टॉप लॉस रखी थी और स्टॉक सडनली 5% ही नीचे खुला, तो मैं वही कहता हूं कि अगर 5% नीचे खुलता है तो वहां से वो 6% नीचे जाए, उससे पहले ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए. So always keep a strict stop loss into your each and every trading position. Friend, this is a very good rule. Aid in favor, subtract in unfavor. Build a pyramid for favorable position only. This rule says कि अगर आपको अपनी कोई भी पोजीशन में ऐड करना है, whether it is a long position or short position, because in future and option you have only two type of positions, either long means buying first then selling, or short अगर हमको मार्केट खराब लग रहा है तो सेलिंग फर्स्ट देन बाइंग. अगर आपको कभी भी अगर अपनी पोजीशन में ऐड करना है, वेदर इट इज लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, यू हैव टू ऐड ओनली इन फेवर. फेवर मतलब अगर आपने जो प्राइस पे बाय किया है वो प्राइस से प्राइस ऊपर है तो ही आपको एवरेज करना. जनरली लोग क्या करते हैं, 99% ऑफ द पीपल अगर वो रिलायंस 2100 में लेते हैं और 2050 आता है तो वो 2050 में अगेन ऐड करते हैं, 2000 आता है तो अगेन ऐड करते हैं. दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग. अगर आपको ऐड करना है तो 2100 वाला रिलायंस 2150 है तो ऐड कर सकते हो, 22 है तो ऐड कर सकते हो और अपना उस हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो. पिरामिड, मैं बोलता हूं कि जिसको ट्रेडिंग में पिरामिड बनाना आ गया, इवन इफ दे आर सक्सीड वंस इन ए व्हाइल, दे विल अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. पिरामिड क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि रिलायंस मैंने से फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 2100 में बाय किए एंड विद इन ए फ्यू डेज रिलायंस शेयर प्राइस गोज अप टू से 2150. अगेन मैं ऐड करता हूं इतनी क्वांटिटी, तो मेरा टोटल एवरेज प्राइस हो गया 2125. अगेन मैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस मेरा लगा देता हूं. से आफ्टर फ्यू डेज अगेन रिलायंस कम्स 2200, अगेन मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं. इट मींस कि अगर मेरी पोजीशन फेवर जा रही है तो मेरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है. तो अगर मेरा एक भी पिरामिड सही गया देन आई हैव टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो 1x 2x 3x करके आगे बढ़ती जाएगी. अगेन स्टॉप लॉस मेरा रिवाइज होता जाएगा और उस हिसाब से अगर एक भी पिरामिड सही गया और मैं स्टॉप लॉस एक लेवल पे रिलायंस का प्राइस आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस वो प्रॉफिट का ट्रेड रहेगा, उस टाइप का स्टॉप लॉस लगा के मैं निकल जाऊंगा उसमें से. सो ऑलवेज एड इन फेवर, सब्सट्रैक्ट इन अनफेवर. कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी पोजीशन बना रहे हो, अगर आपकी पोजीशन अनफेवर हो जाती है तो वो पोजीशन आपको स्क्वायर अप कर देनी है और फेवर में ही आपको पोजीशन ऐड करनी है. रूल नंबर 5, मेक एंट्री ऑन एनीबॉडीज कॉल बट एग्जिट एट योर ऑन. Those who become master into exit can surely become a successful trader. Friends, ये मार्केट में आपको अगर एंट्री लेनी है, इफ यू वांट टू टेक एंट्री एनीबॉडीज कॉल. नंदा जी बता रहे ये स्टॉक अच्छा है, यू कैन एंटर इट. संजीव जी बता रहे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, यू कैन एंटर इट. लेकिन इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, कुछ भी चीज की वजह से अगर वो अपनी स्टॉप लॉस लेवल पे आ रहा है तो आपको नंदा जी, संजीव जी, जीतू भाई को कोई रिंग नहीं करनी है, कॉल नहीं करना है कि सर मैंने ये प्राइस पे स्टॉक लिया है, स्टॉक तो नीचे आ गया, मैं क्या करूं.
आपको खुद को अपनी तरह से एग्जिट कर देना है, क्योंकि जब तक आप एग्जिट करना मार्केट में नहीं सीखोगे, यू कैन नेवर बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं आपको सिंपल, संजीव जी मथुरा जी के तो एक महाभारत का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि महाभारत में अभिमन्यु जी जब चक्रव्यूह में गए थे तो चक्रव्यूह का 7 स्टेजेस थे, उसमें से 6 स्टेज में अभिमन्यु जी को एग्जिट डोर पता थी, तो वो वहां से सक्सेसफुली निकल गए। बट इन द एंड 7th स्टेज में जब उनको एग्जिट का पता नहीं था, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस, खत्म। यही ये मार्केट में भी है कि ट्रेडिंग में अगर आपको एग्जिट करना नहीं आता है, those who don't know when to exit, how to exit, he will exit for whole time on single day। तो आपको धीरे धीरे यही सीखना है कि एंट्री कहीं पे भी किसी की भी कॉल से ले सकते हैं, लेकिन आपको एग्जिट में मास्टरी बनानी है। Those who will become master in exit can surely become a successful trader। Friends, it's not necessary to trade each and every day. Sometimes no trade is the best trade। My dear friends, it's our habit to trade every day and if possible each and every moment। That's not right, because many times we observe that market is going up and down in every few minutes, so we don't know whether to go long or go short। In that case it is better to stay away from the market। ये जरूरी नहीं है, नंदा जी ये बता रहा हूं मैं, संजय जी, ये जरूरी नहीं है कि हर दिन हर पल ट्रेड करो, ये जरूरी नहीं है कि हर दिन हर पल ट्रेड करो। जब भी हमको स्क्रीन देख के ये समझ में आए कि आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जब भी हमको स्क्रीन देख के ये समझ में आए कि आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ट्रेड करना छोड़ दो, एंजॉय विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्योंकि कई बार अपने को खुद को पता चल जाता है कि यार साला आज मैं ऊपर जाता है मार्केट लेता हूं तो भी स्टॉप लॉस हिट होती है, नीचे जाता है लेता हूं तो भी स्टॉप लॉस हिट होती है, कुछ समझ ही नहीं है। अरे भैया तेरे को समझ आ रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, स्टे अवे, रिलैक्स, एंजॉय विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। My dear friends, trade in quantity when there is a clear-cut trend with low volatility. At least once in a week or month we get clear-cut trend। Trade with volumes on this day because trend is your best friend। कई बार जो ट्रेडर्स हैं कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठते हैं, उनको पता होता है कि कई बार मार्केट ओपन होने के बाद कंसिस्टेंटली अप जा रहा है या कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा है विदाउट एनी जिगजैग। तो अपने को उस दिन जो ट्रेंड के साथ मार्केट जा रहा है वही, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय करके कंसिस्टेंटली ट्रेड करना चाहिए, नीचे जा रहा है तो सेल करके कंसिस्टेंटली, और उस दिन वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपका हर ट्रेड सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रेड व्हेन देयर इज क्लियर कट ट्रेंड विथ लो वोलेटिलिटी। मैंने कई बार मेरी ये 20 इयर्स की फ्यूचर ऑप्शन में देखा है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट में कंसिस्टेंटली निफ्टी विदाउट एनी जिगजैग ऑफ 10 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रही है, उस दिन मैं इतना वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हूं बिकॉज आई नो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट विल क्लोज आइदर टॉप ऑफ द और बॉटम ऑफ द। तो उसी दिन अपने को वही काम करना है, सबसे ज्यादा ट्रेड करना है, बिकॉज कि मार्केट में अगर डायरेक्शन सही दे तो हम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट इज इजी टू स्विम विथ टाइड देन अगेंस्ट इट, बिकॉज इवन इफ वी आर रॉन्ग देन ऑल्सो वी विल रीच द डेस्टिनेशन। अगर जो साइड में मार्केट जा रहा है वही साइड में हम ट्रेड करेंगे तो हमने गलत ट्रेड भी ले लिया होगा तो भी अल्टीमेटली रिजल्ट सही आएगा। सो keep in mind, trend is your best friend। Those who are the traders, always keep in mind that do not take big positions before a big event। Examples are like
election result, quarterly results of company, Federal Reserve's rate decision, interest rate decision, because it is always sure that after this event over, market may either gap up or gap down. So it's not advisable to take any positions before big event. And even if you want to take position, then take only on the option side, because, and that only on the option side in buying the options, because whenever you buying the options, your risk is limited to the extent of premium paid. तो अगर कभी भी बड़ा इवेंट है तो always stay away from the market before the event. Always take position once the event is over, and thereafter, depending upon the situation of the market, you have to take the position. My dear friends, do not try to time the market. It has its own way. As we all know, before the COVID cases starts in India, market has fallen from 12,100 Nifty to around 11,000. At that time, everybody thinks that there is 10% corrections in the market. So we can buy at every lower level. And what happens after that? Nifty goes up to 7,500. At that time, everyone believes that Nifty should fall up to 5,400, 5,500. It will never go up in short span of time. Again, when it reverses from 7,500 to 9,500, people think that, अरे यार बहुत हो गया, 7500 से 9500 आ गया, कोविड के केस तो इतने बढ़ रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं. So we are always trying to time the markets. Friends, मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, या मेरे को लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, यहां से ऊपर नहीं जाएगा. अरे मेरे भाई, मार्केट तो क्या, तेरे को जो लग रहा है वो तेरे घर पे भी नहीं हो रहा है, तो मार्केट में कहां से होगा? ये मार्केट में जितने भी लोग आए, रिमेंबर माय वर्ड, ये मार्केट में जितने भी लोग आए और मार्केट को टाइम करने गए, उनका खुद का टाइम खत्म हो गया. सो ऑलवेज डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट्स. मार्केट में कोई भी लोग टाइम नहीं कर सकते. हमने सोचा था कि 12,300 निफ्टी अगेंस्ट क्रॉस करेगी 1.5 साल में, इन स्पाइट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, और 16,000 तक जाएगी. और आज 16,000 में हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे ही नहीं जाएगी. साला यहां से 500 पॉइंट का करेक्शन नहीं आ रहा है. मार्केट हैज इट्स ओन वे. So don't try to waste your time to time the market. Friends, do not change your views only because of news and rumors in the market. हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक हम बाय करते हैं या सेल करते हैं और टीवी में कोई भी उसके रिगार्ड्स में न्यूज आता है और उसके व्यू पे हम अपनी पोजीशंस चेंज कर देते हैं. पहले हमको ये सोचना है कि वेदर दिस न्यूज इज अफेक्टिंग द स्टॉक इन द लॉन्ग रन और नॉट. अगर हम इन्वेस्टर है तो ओनली बिकॉज ऑफ न्यूज और रूमर्स हमको नहीं चेंज करना है. और अगर हम ट्रेडर्स है तो अपने पास सेट ऑफ रूल्स है ही कि अगर प्राइस अपने अनफेवर में जा रहा है इवन आफ्टर द न्यूज, तो अपने को उसमें से एग्जिट कर देना है. लेकिन उसके बेस पे अपने को अपना व्यूज चेंज नहीं करना है. से फॉर एग्जाम्पल, सेंचुरी का रिजल्ट आया, रिजल्ट इतना लॉस मेकिंग था ना, सब लोग सोचते थे कि भाई यहां से रिजल्ट आ गया, इतना रिजल्ट खराब है, भाव तो नीचे ही जाए, और भाव सडनली गोइंग अप एंड अप. पीपल आर आस्किंग एवरीवन, अरे यार इतना खराब रिजल्ट आने के बाद भाव क्यों ऊपर जा रहा है? अरे भैया, रिजल्ट तो ऑलरेडी आउट हो गया है. जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था वो कवर कर रहे हैं, इसलिए भाव ऊपर जा रहा है. तो अभी अपने को सोचने की जरूरत नहीं है. So always do not change your views only because of news and rumors in the market. Do not depend on anyone. Always try to take your own decision. मैंने पहले ही बताया कि भाई जब तक आप ट्रेडिंग में किसी की और के ऊपर डिपेंड्स रहोगे,
you will never become a successful trader. आप लोगों से बात करो, ट्रेंड को समझो, सबको सुनो, लेकिन डिसीजंस अपना लो. Because I have already told, those who are master in taking his own decisions, they are always become a successful trader. क्योंकि अगर हम अपनी तरह से डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में आप स्टकअप हो ही जाओगे. और हमारे गुजराती में तो कहावत है, धंधो पोतानी बुद्धि थी जाए, गामनी बुद्धि थी नहीं. बिजनेस अपने इंटेलिजेंस पे होता है, नहीं कि औरों के इंटेलिजेंस. अगर ये होता तो जितने भी अपने, ये प्रकाश की तो साथ में है, जितने भी टीवी में आते हैं जो लोग कॉल्स देते हैं, तो भैया वो कॉल्स देने यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? खुद का ट्रेड कर लेना, उसमें ही पैसा बना लेना. तो ऐसे नहीं, अपने को अपने डिसीजन के साथ काम करना है और ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी सिचुएशन एंड ऑलवेज ट्राई टू सी दैट यू आर able to make good decision at right time. Friends, learn from your mistakes, make sure that you don't repeat it next time. ये मार्केट में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो मिस्टेक नहीं कर रहा है. Even after 20 years of my trading experience in future and options, I am regularly making mistakes. Mistakes करने के बाद अपने को पता चल जाता है कि मैंने ये मिस्टेक की है. So mistakes is always allowed in trading. क्योंकि अगर कोई भी आदमी ऐसा बताए कि मैं मार्केट में मिस्टेक्स नहीं कर रहा हूं, he is 100% wrong. 100% wrong. People are making mistakes. So mistakes are allowed, but repetition of mistakes is not allowed. हमको पता है कि हमने ये ट्रेड गलत ले लिया है और ये ट्रेड में हमको एग्जिट करना है, उसकी जगह वही ट्रेड में हम एवरेज करेंगे, मतलब वही मिस्टेक हम रिपीट कर रहे हैं. तो अपने को अगर सही सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो जो भी हमने गलतियां की वो गलती में से सीखना है और कभी भी वो अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना है. योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक. जब भी मैं रात को आज भी सोचता हूं कि मेरा ये ट्रेड अनफेवर में गया तो वहां पे मैंने क्या गलती की, मैंने ये जो मेरे रूल्स है इसमें से कोई भी रूल्स ब्रेक किया. आई एम 100% श्योर कि जब भी मैं मेरे गोल्डन रूल्स में से एक भी रूल्स ब्रेक करता हूं, इन दैट केस आई एम इन लॉस ऑन दैट ट्रेड. सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम. Never get attached with stocks with positive or negative bias in your mind. Trade with neutral bias. ये स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है. इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है और हम लोग का यही हाल है ट्रेडिंग, कि हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से ऊपर ही जाएगा. ऑलवेज इन पॉजिटिव बायस. कितने टाइम से मैं मार्केट में देख रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैं केडिला का एग्जांपल दे रहा हूं कि केडिला पिछले कितने दिनों से 630 से 650 के बीच में ही रहा है, चल नहीं रहा है. लेकिन हमारे दिमाग में इतनी केडिला में तेजी भरी हुई है ना कि जैसे ही बस केडिला पकड़ो, केडिला पकड़ो, केडिला. अरे भाई, अभी फाइनेंशियल चल रहे हैं, दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो केडिला को छोड़े ना, अपने को उसमें पैसा बनाना है. जब भी फार्मा चला था कोविड के टाइम, 2800 प्राइस था डॉक्टर रेड्डी का. रिमेंबर मी, 2800 था प्राइस. मैंने मेरे प्रोफेशनल ग्रुप में दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोविड के कितने भी केस, तो फार्मा सेक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. 2800 से टिल 5200 तक हमने उसमें तेजी की थी. लेकिन पिछले कितने दिनों से कोविड के केस कम हो रहे हैं. ऑलमोस्ट थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा पता नहीं, फिक्स नहीं, आएगा तो देखा जाएगा. तो हम लोगों ने फार्मा में से निकल के जो चीज अंडर वैल्यूड थी यार, जिसमें अगर इकोनॉमी ओपन अप हो जाती है तो जिसमें नया बाइंग आ रहा है, जैसे बैंकिंग में है, दूसरे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, तो हम लोग, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको कोई भी ट्रेड अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो डोंट ट्रेड इट विद पॉजिटिव और नेगेटिव बायस. न्यूट्रल बायस के साथ काम करो. अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंगली काम करो, नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर दिमाग में आप भर के रखोगे कि ये स्टॉक मेरे को यहां तक जाएगा, तो उसमें आप नेवर कभी भी एग्जिट नहीं कर पाओगे या अपना
ट्रेड स्क्वायर अप नहीं कर पाओगे। My dear friends, follow the price and not the stock. Price is God. Always remember this one line. Price is God. गुजराती में कहावत है, भाव एज भगवान। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको प्राइस को फॉलो करना है। अगर मैंने कोई भी चीज में पोजीशन ली है, जीतू भाई ने बताया कि आप टाटा पावर ले लो, 125 में टाटा पावर ले लो, यहां से वो 250 हो जाए। लेकिन अगर टाटा पावर 120 के नीचे जा रहा है और मेरी ट्रेडिंग पोजीशन में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरे को जीतू भाई को कोई रिंग नहीं करनी। जीतू भाई को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने दूसरे 4 स्टॉक में हेजिंग कर दिया होगा, वो यहाँ पे खड़े रह जाएंगे तो भी वो 4 स्टॉक में और कमा लेंगे, लेकिन आपका क्या हाल हो जाएगा। सो ऑलवेज फॉलो द प्राइस। कितनी भी आपके पास अच्छी खबर हो और स्टॉक नहीं चल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये स्टॉक नहीं चल रहा है, तो उसके साथ नहीं बैठना है। और कितनी भी खराब न्यूज हो, उसके बाद भी, जैसे हमने अभी बताया कि अपने मेरे दिमाग में पिछले 2 साल से ये नहीं बैठ रहा है कि इंडिगो का 1500 रुपये का वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई हो रहा है। फिर भी मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी उसको शॉर्ट नहीं किया है। मेरे को पता है साला प्राइस नीचे ही नहीं जा रहा है, खाली एयरलाइन सब बंद हो गई थी, उसके बाद भी प्राइस तो ऊपर ही ऊपर टिका रहा था। बोला यार छोड़ो यार, अपना लॉजिक इसमें काम नहीं आ रहा है। सो अगर आप प्राइस को ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और रिमेंबर, भाव इज भगवान। प्राइस अगर है, जो सामने दिख रहा है वो सही है, बाकी सब गलत। ट्रेड द स्टॉक जस्ट लाइक एन अफेयर विद देम, डोंट मैरी देम। हम लोगों का ये है ना संजीव जी, हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है ट्रेडिंग में? हमको जो एक चीज से मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसको हम लंबे टाइम तक, आई एम ऑलवेज सेइंग, मैरी टू ओनली 1 पर्सन। अगर आपको लंबे समय तक साथ रहना है तो अपनी बीवी के साथ, उसके साथ। स्टॉक में तो क्या हुआ, आज डॉक्टर रेड्डी चला है, उसके साथ मजा किया, जब तक चलता रहा एंजॉय किया, जब भी चला नहीं चल रहा है छोड़ दिया। दूसरे दिन आईसीआईसी बैंक चला, उसके साथ बैठ गया, 2 दिन के बाद आईसीआईसी बैंक का बारी खत्म हो गई, टाटा पावर आ गया, उसके साथ बैठ गया, और जिस दिन सब कुछ नहीं चला सबको ठोक दिया। सॉर्टेड एवरीवन। सो ट्रेड द स्टॉक जस्ट लाइक इन अफेयर विद देम, डोंट मैरी देम। कभी भी अपने को स्टॉक के साथ इतना अटैचमेंट नहीं लेना है कि ताकि पूरा अटैचमेंट उसमें घुस जाए। Chart is the consequences of price action, so concentrate always on price action. Yes, I already told you in the last slide that price is God, भाव is भगवान। चार्ट कहां से बनते हैं? प्राइस के ऊपर से ना, पहले प्राइस आता है, बाद में चार्ट बनता है। तो अपने को अगर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, इफ वी आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर, तो हम लोग उसमें से पता चल रहा है कि भाई कंसिस्टेंटली प्राइस फॉल हो रहा है, मतलब वो उसका चार्ट खराब ही बनेगा, तो उसको भाव को देखो शॉर्ट कर दो। और उसमें भी आप टेक्निकल लेवल सब अगर जान रहे हो, कई बार लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई आप चार्ट देखते हो नहीं देखते हो। मैंने बताया, मैंने आज तक मेरी लाइफ में एक चार्ट नहीं देखा। मेरे को ये ऊपर नीचे वाला लंबा ये कैंडल बना, ये बना, वो मेरे को समझ में है कि यहाँ से ये स्टॉक गिरा तो अपने को शॉर्ट करना है, और यहाँ से ऊपर गया तो अपने को लॉन्ग करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अपने दिमाग में जो इजी रूल्स है ना, उसको ही फॉलो करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना है। सो ऑलवेज सी द प्राइस एक्शंस। चार्ट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट प्राइस एक्शंस अगर आपको समझ में आ गया तो आपको चार्ट नहीं भी देखे तो भी ट्रेडिंग का नजरिया समझ में आ जाएगा। Friends, remember these rules. Don't trade in high beta stock during volatility because chances of you are getting stuck is very high unless you are a fast mover. What is high beta? High beta मतलब ये वो जो स्टॉक है, जैसे आइडिया है, आईबुल हाउसिंग है, कि जो एक दिन में 5 से 10% के बीच में भी मूव कर जाते हैं। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, देखो अभी तो मार्केट इज एट वॉलेटिलिटी एट द मार्केट इज ऑल टाइम लो, लेकिन जब भी ये कोविड की सिचुएशन थी और मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी में थी, तो वॉलेटिलिटी के टाइम अगर हाई वॉलेटिलिटी है और आप ऐसे स्टॉक में हाई बीटा में ट्रेड करोगे, देयर आर एवरी चांसेस दैट यू मस्ट बी स्टक अप इन रॉन्ग हैंड, उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आई हो, तब आप लो बेटा स्टॉक के साथ, एचडीएफसी बैंक के, हिंदुस्तान लीवर है, ऐसे स्टॉक के साथ ट्रेड करो कि जिसमें आपको रॉन्ग साइड में स्टकअप होना, अगर हो भी गए तो भी निकल सकते हो। हाँ, अगर आप फास्ट मूवर है जैसे हम लोग हैं कि मैं कोई भी स्टॉक 5% गिरता है ना, तो उसको बिना देखे शॉर्ट कर देता हूं, बिकॉज आई नो
कि ये स्टॉक में मेरे को अगर 2% कमाना है, वो मेरे को वो साइड में तुरंत देके जाए, और जो भी स्टॉक 5% के ऊपर जाता है ना, उसमें मैं बायर ही रहता हूँ। क्यों? कि मेरे को पता है कि अगर मेरे को कमाना है तो इस दिन ये स्टॉक में इतनी बाइंग हो गई है ना कि मेरा 2% इजीली निकल जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे को पता है कि 2% निकालने में मैं 4% का स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। विद इन सेकंड्स कि भाई अगर मेरा आधे % भी अपने भाव से अनफेयर गया, स्क्वायर अप द पोजीशन। ऑलवेज ट्रेड थ्रू ऑप्शंस बिफोर ए बिग इवेंट। हमने अगले स्लाइड में मैंने बताया कि व्हेनेवर देयर इज ए बिग इवेंट, डू नॉट ट्राई टू टेक पोजीशन, एंड इवन इफ यू वांट टू टेक पोजीशन, टेक only through options, and that is too only on buying side. Friends, ये सिचुएशन में अगर डिटेल्स में आपको बताने जाऊं तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में माय 20 years of trading is depending only on these 4 things. Trading with open interest. मॉर्निंग में मैं कुछ भी नहीं करता हूं. I am taking only open interest and price. There are 4 type of situation. Long build up. That means rise in price along with rise in open interest. Short build up, fall in price along with rise in open interest. Long unwinding, fall in price along with fall in open interest. Short covering, rise in price along with fall in open. Say for example, कि भी हमने कल ही DLF का देखा था कि सुबह खुलने के बाद DLF ऊपर जा रहा था along with rise in open interest. तो उस दिन अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई भी चीज बढ़ रही है और विथ टेक्निकल ब्रेकआउट है, तो उस दिन आपको वो साइड लॉन्ग बिल्डअप करना ही है। जैसे आज का ट्रेड है, तो आज के ट्रेड में आपने देखा कि कौन सा ट्रेड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो हमने देखा मॉर्निंग में खुलने के बाद बैंकिंग में ICICI बैंक इज ओपन अराउंड 655। उस टाइम उसका 2% ओपन इंटरेस्ट अप था। I have entered in the morning with huge quantity around 655, keeping stop loss below 650, और कंटिन्यूसली मैंने आज एंड में क्लोज तक देखा कि ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें बढ़ता गया, स्टॉक भी लो बीटा था और भाव भी एंड पे टॉप पे क्लोज आया। तो वो आपको इंडिकेट करता है। सुबह 5 मिनट पे स्क्रीन पे फोर्थकमिंग जो मेरा WRC में इवेंट्स है, उसमें देयर इज फर्स्ट टाइम इन द WRC वी हैव ए लाइव ट्रेडिंग सेशन, और मैं उसमें सुबह 9:15 से 10:15 आपको बताऊं कि हाउ वी आर टेकिंग पोजीशन ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग। तो आपको इतना ही समझना है, आपको 4 चीज में से 2 इजी चीज, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। इट इज इजी टू ट्रेड इन लॉन्ग बिल्डअप व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस अलोंग विद राइज इन ओपन इंटरेस्ट, और शॉर्ट बिल्डअप व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस अलोंग विद राइज इन ओपन इंटरेस्ट। ये 2 सिचुएशन में आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। सो ट्रेड दैट सिचुएशन। डोंट सेल ऑप्शन अनलेस यू आर ए मास्टरमाइंड ट्रेडर। ऑप्शंस में कभी भी आपको सेल नहीं करना है जब तक आपको उसके प्रो एंड को पता ना हो, क्योंकि व्हेन यू आर बाइंग द ऑप्शन योर रिस्क इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड ओनली, बट व्हेन यू आर सेलिंग द ऑप्शंस योर रिस्क इज अनलिमिटेड। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर यू डोंट सेल ऑप्शन। मेरे को पता है कि पैसा जितना भी बनता है वो सेलिंग ऑप्शंस में ही बनता है, लेकिन उसमें एक गलत चीज, एक गलत स्टेप्स आपको लाइफ टाइम आउट कर देगा मार्केट। वी आर टेकिंग द पोजीशंस बाय सेलिंग द ऑप्शन, बट देयर आर सो मेनी सिचुएशंस के भी हेजिंग करते हैं, वो करते हैं, उसके साथ स्टॉक को कवर करते हैं। तो जो मास्टरमाइंड ट्रेडर है या रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उनके लिए ऑप्शन सेल्स करना अच्छा है, अदरवाइज यू हैव टू बाय द ऑप्शंस। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट इज लाइक ए टेस्ट मैच. You have to field for the whole day but get only few chances of catch during the market. Take that. आपको मार्केट के सामने, स्क्रीन के सामने सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक बैठना है, लेकिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार मैं पूरे दिन सामने बैठता हूं लेकिन एक भी ट्रेड नहीं बन रहा है, छोड़ दो। जैसे हम लोग टेस्ट मैच में फील्डिंग करते हैं स्लिप में, साला पूरे दिन ऐसे ही अट्रैक्शन के साथ बैठे रहते हैं कि कब कैच आएगा, कब कैच आएगा, कब कैच आएगा, लेकिन कोई कैच नहीं आता। डोंट वरी। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम लोग कल से ही फील्ड पर आना छोड़ दें। वी हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन इफ वी वांट टू बिकम ए गुड ट्रेडर। पार्ट टाइम ट्रेडिंग जैसी कुछ चीज नहीं है।
मैंने देखा है जो भी ट्रेडर्स पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं उसमें 99% और आई कैन से 100% आर लूजर्स। अगर आपको ट्रेडिंग में अपना प्रोफेशन बनाना है, मैंने आफ्टर 10 years ऑफ माय प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी विथ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिंग साइमल्टेनियसली। तो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस को छोड़ दिया कि भाई मेरे को यहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेट करना। तो बी ए फुल टाइम ट्रेडर, रेगुलरली स्टे इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन एंड व्हेनेवर देयर इज अपॉर्चुनिटी ट्राई टू ग्रैब इट। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी आए तब लेना है, अदरवाइज मस्ती से टेस्ट मैच में फील्डिंग भर रहे हो, फील्डिंग जब तक फील्डिंग भरोगे, जब फील्डिंग भरोगे तो कहीं ना कहीं दिन केच आने वाली ही है ना, लेकिन जब केच आए आप उसको लेना है। ट्राई टू कन्वर्ट एवरी अपॉर्चुनिटी इन योर फेवर, एस आई ऑलरेडी टोल्ड कि भाई आप जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, वेदर दिस अपॉर्चुनिटी ऑन शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में कन्वर्ट करना है। Try to convert every opportunity on your favor. You will get opportunity at least once in a week. Already discussed, buy on rumor, sell on news. कि अगर हमने कितनी भी अच्छी पोजीशन बनाई हो, जैसे से फॉर एग्जांपल के मार्केट में रूमर्स थी कि रिलायंस पे बोनस आएगा, तो उसके पहले हमने पोजीशन बना ली और एक्चुअली जो बोनस आना चाहिए था उससे भी अच्छा बोनस आया कि भाई 1:1 बोनस एक्सपेक्ट था तो 1:2 आ गया, फिर भी प्राइस गिर रहा है। तो बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, जब भी न्यूज मार्केट में आ जाए आप उसको छोड़ दो, फिर उसमें अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट पैनिक इन अनफेवरेबल सिचुएशन, फ्रेश माइंड इज अटमोस्ट नेसेसरी टू ट्रेड इन द मार्केट। फ्रेंड्स, जब भी आप कभी भी पैनिक में हो, आपने कोई बड़ा लॉस कर दिया है, आपका कोई ट्रेड अनफेवर गया है, एट दैट टाइम यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक राइट डिसीजन। उस दिन आपको वो ट्रेड स्क्वायर अप करके आराम से बैठना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि मैंने कहाँ गलती की थी, और जब फ्रेश माइंड हो जाए उसके बाद ही वापस एंट्री करना है। मैं तो कई बार बोलता हूँ ये हमारे स्टॉक मार्केट में मजा क्या है, ट्रेडिंग पैटर्न में, कि जब भी पैसा बनता है वी आर एंजॉइंग विथ फैमिलीज कि भाई चलो आज शॉपिंग करके आते हैं, क्योंकि आज तो पैसा बन गया है, पैसा कमाया है तो फैमिली का हक बनता है कि वो अपने साथ खर्च करे। लेकिन जिस दिन अगर हमारा ट्रेड रिवर्स जाता है उस दिन भी मैं शॉपिंग करता हूँ। क्यों? कि साला यहाँ चाह भी नहीं था फिर भी मेरा पैसा लग गया, तो यहाँ तो बीवी बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ ना, वो खुश हो रहे हैं ना, तो ना चाहने के बाद भी यहाँ पैसा लग गया तो चलो उस दिन भी शॉपिंग करके आते हैं, माइंड तो फ्रेश हो जाएगा। सो ऑलवेज remember one thing, do not panic in unfavorable situation, and if you are in panic then don't take any decision at that time. Take more risk when you are in a profit, less risk when you are in a loss. Always हमारा जो पहला रूल्स था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला था, और अगर ट्रेड फेवर में जाए तो आप ज्यादा रिस्क लो क्योंकि आप पैसा बना रहे हो, अगर ट्रेड लॉस में जाए कम रिस्क लो, आप पैसा गंवा रहे हो। So add in favor, subtract in unfavor. So always जब भी हमारा ट्रेडिंग में वीक में पहले दिन पैसा बन जाता है अच्छा, on that week we are taking maximum risk, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो कमाया वही जाएगा ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन उस टाइम जैसे ही अगर हम बिल्डिंग बनाना चाहते तो एक बार पिलर खड़ा होना चाहिए, पिलर खड़ा हो जाएगा बिल्डिंग खुद ब खुद बन जाएगी। लेकिन अगर पिलर ही टूट गया तो बिल्डिंग बनने का सवाल ही नहीं है। So always take more risks when you are in a profit and less risk when you are in a loss. Golden rule number 26. Do not follow purely bulls or purely bears. Bull never says that the market will go down and bear never says that market will go up. Remember हर्षद मेहता स्कैम सीरीज। हर्षद मेहता को कभी भी नहीं लग रहा था कोई भी सिचुएशन के मार्केट नीचे ही जाएगा। हम टीवी पे भी देखेंगे जब भी मार्केट बुल फेज में होगा ना, ये लोग सब राकेश सर के दोस्तों को लेके आएंगे, दे नेवर सेड मार्केट विल गो डाउन, और जैसे ही मार्केट रिवर्सल हुआ वो दुबई से शंकर शर्मा जी को ढूंढ के लाएंगे कि भाई अब तो मंदी आ गई। ये मनु माने, उसको लाइफ में कभी भी तेजी ही नहीं लगी। एज ए ट्रेडर अपने को बुल या बेर से कोई मतलब नहीं है, अपने को अपने पैसा मनी से मतलब है। मेरा है मनी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मैं झुनझुन वाला सर के साथ बैठ जाऊंगा,
मार्केट नीचे आ रहा है, मैं शंकर शर्मा के पास आ जाऊंगा। अपने को तो मार्केट में मंदी या तेजी से पैसा बनना चाहिए। इफ मार्केट इज अप, बाय फर्स्ट, सेल नेक्स्ट। इफ मार्केट इज on down, sell first, buy next. Whenever there is sudden upward or downward movement, don't waste your time in finding out the reason, because reason is not important. It's your loss which is important. Try to protect your capital and minimize the loss. Suppose मैंने आपको एक सुबह में ही कॉल दिया कि आईसीआईसीआई बैंक अच्छी लग रही है, 650 में आप ले लो, और यहाँ पे 645 का स्टॉप लॉस, और सडनली कुछ भी उसमें एडवर्स मूवमेंट आएगी और न्यूज कि आईसीआईसीआई बैंक सडनली फॉल डायरेक्टली टू 640-42, तो आप लगाओगे फोन जीतू भाई को। जीतू भाई क्या रहा है? जीतू भाई उस टाइम क्या बिजी होंगे तेरे लिए? वो तो अपना खुद का ट्रेड स्क्वायर अप करने में पड़े होंगे, वो आपके फोन ही नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? उसको तेरी पोजीशन से क्या लेना देना? तो एट दैट टाइम कि भी रीजन क्या है। और कई बार तो मेरे को कोई भी स्टॉक गिरता है या बढ़ता है ना, तो मेरे को कितने फोन कॉल्स आने लगते हैं, जीतू भाई ये स्टॉक बढ़ रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन है? अरे मैं बोला छोड़ने रीजन, तेरे को रीजन से क्या मतलब? तेरे को ले लेने का, बेच देने का बाद में, अपने को तो पैसा से मतलब है ना। मैं तो बनी हूं, मैं रीजन देखेंगे ना बाद में, जब अपना ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएगा। रीजन कभी भी सडन लार्ज अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट आती है, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, बिकॉज रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल इन योर ट्रेडिंग पोजिशन। Whether you are exiting at the right time, it is the important. Be positive in life, build your self-confidence, try to learn from every situation. ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। पॉजिटिव डजंट मीन क्या हर बार बाय करके सेल करना है। पॉजिटिव मीन्स बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। कुछ भी सिचुएशन चाहे गलत हो जाए, प्रॉफिट का लॉस हो जाए, तो भी उसमें से अपने को सीखना है कि हमारी किस सिचुएशन की वजह से या क्या गलती की वजह से ये चीज हुई है, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। मेरे को पता है कि मेरे को जब एफएनओ में स्टार्ट किया ना ट्रेड 2000 में, कुछ पता भी नहीं था, फिर भी धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस था। एस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को बैलेंस शीट पढ़ना आती है, सिचुएशन सब चीज आती है, प्रोमोटर्स क्या है, तो ये सब चीज धीरे 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 अपने को सिखाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। रिमेंबर दिस वर्ड्स, चाहे सिचुएशन सही हो गलत हो, अपने को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। फ्रेंड्स, इट हैज टेकन मी 7 years टू लर्न हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन ट्रेड एंड हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। It's not only the smartness or intellectuals which makes you successful traders. It's not necessary. It is the discipline which is utmost important to be a successful trader. And I am sure, remember my words, I am always saying that if you follow these rules and trade with strict discipline, you can never lose money in speculation. आपका एफएनओ में पैसा कभी भी नहीं जाएगा। And I am the live example of this. I have since last almost 13 years, मैंने कभी भी एफएनओ में पैसा नहीं गंवाया। 13 साल से मैं एफएनओ में ट्रेड कर रहा हूं, और एट द एंड ऑफ द ईयर ज्यादा बनता है कम बनता है नहीं, लेकिन पैसा बनता है। और ये जितने भी रूल्स हैं ना, वो मेरे 7 साल की मिस्टेक्स के बाद बने। 2001 में मैं जब एफएनओ में एंटर हुआ, और 2007 में आई एम ऑलमोस्ट कोलैप्स, लूज माई एवरीथिंग। और उसके बाद मैंने हर दिन हर रात को बैठ के क्या क्या गलतियां की थी उसको मैंने सेट ऑफ रूल्स बनाए, और वहां से मैंने स्टार्ट किया। और उस टाइम मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को इतने साल, 5-10 साल में भी अगर मैं ये खराब सिचुएशन में निकल जाऊंगा ना, तो भी बहुत हो गया। एंड विद इन 1.5 year आई विल बी द टॉप। मैंने जितना कमाया था उससे बहुत ज्यादा बनाया। और उसके बाद ही ये चीज समझ में आ गई कि डिसिप्लिन is more important than smart tech institutes. And remember, my last and final words are, whenever you are in a sizable profit, do positive things in life which inspire you. Always try to inspire losers in life because they need your help. A few positive words from you can make them feel good, happy, and give them support and motivate them to work hard. मैं मेरी लाइफ में जब भी कोई एफएनओ में या शेयर मार्केट में पैसा गंवा के आता है ना, उसको सबसे ज्यादा हेल्प करता हूँ। मेरे को पता है कि ये आदमी को यहां से निकालना है,
बस उसको आप 2 बार ऐसे भी बोल दोगे ना कि भैया डर मत, मैं बैठा हूं ना, ऐसा कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन अगर उसके कब्बे पे हाथ रख के बोल दिया ना कि मैं बैठा हूं, अपन निकाल लेंगे इसमें, तो उससे उसका जो मोटिवेशन बढ़ जाएगा ना, और उससे वो वही सिचुएशन में निकल जाएगा। और मेरे को तो वही चीज मेरी 7 साल के बाद जब मेरा कैरियर खत्म होने जा रहा था, तब मेरे फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स उसने उतना ही बताया था, जीतू वी आर विथ यू, जीतू वी आर विथ यू। ये जो 4 वर्ड्स थे ना, उसकी वजह से मैं 2 साल में कहीं, तो आज भी मैं वो लोग को रिमेम्बर करता हूँ कि जब भी कोई खराब सिचुएशन आए, फाइट, वी हैव टू फाइट, एंड इन द एंड do not try to become millionaire in the short span of time. It's a gradual process. Always remember, Rome was not built in a day. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah, over to Chairman, sir. Sir, you are on. Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. Great round of applause. So I think wonderful deliberation, and I think वो संजीव जी ने बहुत सारा वो नोट कर लिया है। अब माँ लक्ष्मी की बड़ी अच्छी तरीके से कृपा होने वाली है मथुरा पे, भगवान कृष्ण की नगरी में जो है। अनुराग जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ याद कर लिया है। और वैसे विल ट्राई दैट इट शुड बी द YouTube also of ICAI, so that each and every member can go for it again and again. So thank you very much Prakash sir, thank you very much Jiten sir, thank you very much Nanda ji. So if you will permit, we can take some queries. We are having the presence of CA Vinay Krishna ji, our past chairman of Bareilly branch, very prominent Bareilly branch of our central region. We are really grateful to Nanda sir, Prakash sir and Jiten sir for their wonderful deliberation. And if you permit, Nanda ji, can we take the queries please? Sure sir, sure. So Sanjeev ji, can I start taking the queries? Very nice presentation, Jitendra bhai. Nice. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. So may I request Vinay Krishna ji to please take up the query of Darshan Mayur Saha from Mumbai, financial capital of the country, and the query is how advantageous is it to invest in the global fund of funds in creation of long-term portfolio? Sir, I would like to suggest कि global funds में हम तब जाएं जब हम international markets को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम इंडिया की ही political structure या यहाँ की जो politics में हो रहा है या फिर जो financial markets में हो रहा है, उनको normally इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, और international markets को कैसे हम understand करेंगे, ये हमेशा issue रहता है global funds में invest करने से पहले। तो जब भी अगर हम ग्लोबल फंड्स पे जाना चाहें तो ये जरूर देखें कि हमें इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कितनी समझ है। I think let other also respond. Prakash sir, you will like to respond please? जी सर जी। सो देखिए, ये जो फंड्स के जाएंगे तो थोड़ा सा इजी जरूर हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द फंड साइड, विद दैट कम्स इज अ ट्रैक रिकॉर्ड, दिस बेंचमार्किंग, but it's always something that you should do once you have exhausted your allocation towards the Indian equities. You know, it's a very good foreign currency hedge as well. आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में या ऐसे ETFs में या फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपको यहाँ पे मिल नहीं रही है ग्रोथ। यू नो, न्यू एज बिजनेसेस है, बायोटेक है, स्पेस है, AI है, इस टाइप के अगर थीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यस जा सकते हैं। बट I agree with विनय जी, ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा समझने के बाद करें तो अच्छा रहेगा। बट फीडर फंड्स में कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, अदरवाइज दिस नो हार्म इन गोइंग थ्रू दैट रूट एज वेल। Sir, I would also like to add something. There is no fixed brokerage. अगर आप फॉरेन फंड्स में करते हैं तो फिक्स ब्रोकरेज होती है नंबर 1 पे, और $50,000 तक की हमारी रिप्रेजेंटेशन की जो लिमिट अलाउड है RBI से, विद इन दैट लिमिट इफ यू वांट टू गो, it is pretty simple. You don't have to go for specific permissions from Reserve Bank of India. Yeah. Then we are having one query related to SEBI. I don't know. Raju Narayanan ji from Delhi. He is having one query. There are companies which seem to make disclosures in annual reports which do not seem to comply with accounting standards. What is SEBI doing in respect of these companies?
Nanda, you want to respond? Can, sir, for this, Mr. Narayanan, you will have to ask SEBI only. SEBI has to take a call. Otherwise, the institute has Financial Reporting and Review Board, FRRB. We have PRB, of whom Mr. Anuj Goel was the chairman last year. Peer Review Board. We have the Quality Review Board. So any such thing, when it comes to these boards, they take a very serious view of that and take cognizance of that. But there are multiple regulators. Therefore, every regulator has to take a call on his own. Yeah. Thank you. Then we are having one query of CA Anil Kumarji from Delhi. He's asking how do we study various charts, where to get information like Bollinger Bands, etc. So I think Scoop wants. The query is, how do we study various charts, where to get information like Bollinger Bands, etc. So, Prakash sir, you like to respond? I am not a technical analyst, but I know software is available which give you all these ready to use graph as you want, because depending on जीतू भाई जैसे कह रहे थे ग्राफ कैसे इंटरप्रेट करना is the key. बाकी आपको नॉर्मल ग्राफ्स तो बहुत जगह मिल जाएंगे, करके जो स्टोकेस्टिक्स या RSI वाले जो डेटा देते हैं, and all of them are available for some minimum subscription amount. So if your trading book is good enough in terms of size, you can always buy one of these packages and use that. I've seen a lot of people in my team using it, but the charts will still not tell you anything. The chart is as much as the screen is. आप उसको क्या interpret करते हो? That is something which you have to learn. One learning that I have is in markets, make notes of whatever you are doing. Even if you are, as Nandaji was saying, do paper trading, simulated trading. Because अगर आप notes बना के आप charts interpret करके track करोगे, it will tell you in a few months whether your understanding is in the right direction or not before you stake actual money behind it. So first do that and then don't jump at it, because charts बना के हम लोग के उसमें जोक है broking side में कि जो भी डीलर बैठता है ना, जो F1 F2 करता है जो टर्मिनल पे, वो 3 महीने 6 महीने में अपने आप को चार्टर्स समझने लगता है और उसको ये लगता है कि वो सबसे उम्दा चार्ट्स देखता है. He is good at it, he is best at it, but that's because the art lies in, the science is simple but the art is more difficult, so that takes experience and time to build. Yeah. जीतू भाई आप कुछ बोलेंगे? जीतू भाई जीतू भाई चार्ट नहीं देखते होते इसलिए वो तो चार्ट खाते हैं बढ़िया वाली है. जीतू भाई आप म्यूट है. यस, जैसे ही प्रकाश जी ने बताया ना कि भी चार्ट देखने की जगह इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट. चार्ट तो सबके पास है, मैं 2-3 सॉफ्टवेयर अपने पास लगा दूंगा, चार्ट ही चार्ट मिल जाएंगे सर. बट व्हाट द चार्ट इज टेलिंग टू मी, चार्ट का इंटरप्रिटेशन. और कई बार क्या होता है, लोग ये जो आप बताए ना बोलिंगर, ये वो कितने टाइप्स के चार्ट में बोला, सिंपल चार्ट देखो, डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेट. जितना सिंपल आप जाओगे ना, उतना सिंपल में ही सब कुछ पता चल जाएगा. फिर भी अभी अपने पास अवेलेबिलिटी है, कई सारे इतने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं. देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, जैसे ब्लूमबर्ग का है, वेरी मच कॉस्टली, बट इफ यू आर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ऑफ लार्ज साइज, you can make it. Bloomberg, then other I think इसका भी अपना Spider, there is something called Spider. Yeah. So, there is Spider, Falcon. Falcon is also good. Yeah. और lots of them. Yeah. Metastork है पुराना, बहुत पुराना. और प्रकाश जी वैसे भी कई चार्ट में क्या, वो जो डेली हाइस एंड लॉस, अगर आप ट्रेडर्स हैं, इफ यू आर ए ट्रेडर, तो सडनली अगर आप हर एक स्टॉक पे ट्रैक नहीं कर सकते हो, तो चार्ट में विद इन फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स आई, 15 मिनट्स आई, डे आई, जो शो करते हैं उसके बेस पे भी आप अच्छा डिसीजंस ले सकते हो. देखो भाई, it is money that can buy so many charts. Yeah. But where will you get the intellect? Somebody very candidly exclaimed कि बजट के एक दिन पहले आपको बजट मिल जाए पूरा, तो भी मार्केट बजट पे कैसे रिएक्ट करेगी आप डिफाइन नहीं कर सकते. राइट. एक आदमी ने कहा मार्केट्स टिपिकली बिहेव लाइक वाइफ्स, यू नेवर नो व्हिच वे शी विल गो. तो इसलिए मार्केट में सर आप लिमिटेड नॉलेज से, जैसे जीतू भाई ने बताया कि लिमिटेड नॉलेज, डू योर ओन रिसर्च.
limited knowledge and create wealth. You can't be master of everything. By the time you become master, you will not be rendering any service to yourself. You can't trade after that. If you want to become a teacher, then go for that. अपनी मतलब की थोड़ी चीजें सीखकर अपनी रिसर्च बनाकर ट्रेड करें तो आप वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे. Yes, right. Yeah, thank you very much, Nanda sir. Then we are having next query of Rajesh Mandwaria ji from Mansoor, my very good friend, and this question is from Prakash Diwan sir. The question is, how much role goodwill of independent director plays in selection of shares of listed company? Diwan sir? You are on mute, sir. Mute, sir. Sorry. I think Nandaji is exactly in the midst of all these key decisions. But it's in India, one good thing is happening that independent directors' role, SEBI is very clearly promoting, trying to make it much more meatier, much more impactful. And that is something which, if you see the global standards, you will realize that there's a very significant responsibility that independent directors shoulder on behalf of minority shareholders. So if that is understood and it is executed in that spirit, I think minority shareholders will never get the short end of the stick when it comes to key decisions from this. And in India, unfortunately, because of the changing regulations and the evolution of our regulatory regime, a lot of people are still not coming forward to do that. So you have people who try to maximize and are independent on so many boards, but they might not be able to do justice. But it's a very critical role, and expect in the next 1-2 years, a lot will change in that area. So Nandaji, I'm sure, is going to recommend a lot of changes. Which yes, sir. We have to, because the only thing that when independent director render their professional expertise, they are at times subject to unnecessary rules. For example, a tax bowling case or a posh case where he does not have any pecuniary benefit. So these things will always create problems. So we have to be very robustly making all the rules. Thank you. Thank you very much. Then Rajesh Chand Sharma ji, my very good friend from Siddharth Nagar, he is having one query. Is trading of shares allowed to a practice CA in practice? See, chartered accountant in practice can very well make the investment in shares. There is no restriction. And now even we have gone one step ahead, that now our chartered accountants who are in practice can very well have the investment in derivatives, in equity derivatives also. They can invest as far as the equity derivatives are concerned. But trading is not allowed. Trading means that you are doing something for others. So you can do anything from your own money, but you can't do for others if you want to remain in full-time practice. So that is the thing. Yeah. Then we are having another query from Ranchi. We are having this query of Vinod Kumar Pandey ji. That query is, can members take intraday trading, or members should consider swing or positional trading? So I think the members, every chartered accountant can do anything. There is no restriction. There is no restriction as far as the Institute of Chartered Accountants of India is concerned. But the choice is with us that whether Sunandana ji want to remain in full-time practice or not. If she want to remain in full-time practice, then certain restrictions are there. So if intraday means we are going for the speculation. So I don't think that speculation income as such is allowed for a practicing chartered accountant. But otherwise, if you have income from equity derivatives, or if you are investing in shares in capital market and you are having any surplus, long-term capital gain, short-term capital gain, that is very well allowed. But speculation is, as such, Pandey sir, is not allowed to a practicing chartered accountant who wants to remain in full-time practice. अगर मैं practice में रह सकता हूँ, I can't do the attest function if I want to be full-fledged in the capital market and want to do the speculative transactions also. Nanda ji, am I correct? Sir, I want to add 100%. Yeah. Sir, I want to add one more thing. Jiten sir. Even if institutes are allowing intraday trading, I don't recommend this, because in the intraday you can never earn money. Remember me,
intraday you can never earn money, because at the end of the day you have to square up your position, whether it is in favor or in unfavor. So always better don't trade intraday. तो अगर इंस्टीट्यूट आप अलाउ भी करेंगे ना सर, तो भी मैं एडवाइस करूंगा कि डोंट ट्रेड इंट्राडे. दैट्स माय एडवाइस. Yeah, that's CA Sunil Pahuja ji from Hisar is having one query. I will request Vinay Krishna ji, our past chairman Bareilly branch, to raise the query. So this query is for Jiten sir. Please tell the triggers to exit as well. Refer Golden Rule 5. Okay. You want to know what are the triggers for exit? There are so many times, so many different triggers are there. सपोज कि मैंने कोई स्टॉक एक लेवल पे, रिलायंस की मैंने जैसे बात की कि 2000 में मैंने बाय किया, 2150 2100 में मैंने ऐड किया, सो माय एवरेज प्राइस इज 2050. तो मैं क्या करूंगा उसमें, जनरली इन द ट्रेडिंग अवर स्टॉप लॉस इज 2% फ्रॉम बाइंग लेवल. लेकिन अगर हमारा सर्टेन लेवल्स का प्रॉफिट हो रहा है, देन वी आर रिवाइजिंग स्टॉप लॉस डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द स्टॉक इज हाई बेटा और लो बेटा. अगर लो बेटा स्टॉक है 1 or 2% स्टॉप लॉस फ्रॉम क्लोजिंग प्राइस इज ऑलवेज गुड. या तो अगर प्राइस ओपन करता है उसके लेवल के नीचे, देन वी आर एग्जिटिंग. अगर हाई बेटा स्टॉक से, तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन, तो एग्जिट तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और मार्केट कैसे प्ले कर रही है उसके ऊपर. अदरवाइज लो बेटा स्टॉक में मैक्स टू मैक्स अवर स्टॉप लॉस इज 2% from our buying level, and thereafter we are revising our stop loss, and once stock fall below that price we are exiting. Sanjeev Agarwal ji, you want to say something? Your hand is raised. सर मैं प्रकाश दीवान सर से एक क्वेश्चन है. या प्लीज. सर बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा था कि उन्होंने ये बताया कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके खुद से ही आप शेयर ट्रेडिंग चालू करें. लेकिन सर हम जैसे नौसिखिए लोगों को दिक्कत क्या हो जाती है कि हमने सुना कि भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे 2025 तक 30 तक सबको मिलेंगे, उनमें बैटरीज लगनी है, जो कि 2 ही कंपनी हमारे पास, हमारा राजा है और एक्साइड है, लेकिन उनके शेयर्स नहीं बढ़ते. उसी तरफ इंफॉर्मेशन आती है कि मतलब कॉपर की माइंस हैं, अगले 5 साल तक कोई भी माइंस डेवलप नहीं होगी, सिर्फ हमें एग्जिस्टिंग माइन से ही कॉपर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, और वो कॉपर हमें इस्तेमाल होना है सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में. तो अब इनको लें या नहीं लें, इस तरह का. अब IDBI है, सरकार ने कह दिया 94% स्टेक एलोंग विद LIC वो बेचेगी, या इसके अलावा LIC का इशू कल कैबिनेट ने पास कर दिया. तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर से क्या असर होगा? कभी टीवी पर ये सुना था आप ही लोगों से कि ये जिस दिन LIC का IPO आएगा डबल हो जाएगा. तो सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हम कब किस पे कैसे रिएक्ट करें? एक्साइड लें ना लें, हिंद कॉपर लें ना लें, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया या IDBI बैंक हो गया, तो इसके बारे में हल्का सा थोड़ा सा प्लीज. नहीं, बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है संजीव जी, और इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ एक वीकनेस इन्वेस्टर्स की रहती है, हम लोग ना जो चीज रेडीमेड हमको मिलती है उसको पढ़ के हम लोग डिसीजन ज्यादा लेते हैं, हम लोग खोजबीन खुद नहीं ज्यादा करते. सो पहली चीज तो ये है कि आपके पास जो भी पेपर के या मैगजीन के या पब्लिकेशंस के एप्स हैं वो सारे पुश वाले हैं, पुश नोटिफिकेशन वाले हैं. वो आपको बताते हैं कि क्या खबर आपको पढ़नी चाहिए. वो दे कीप ऑन सेंडिंग थिंग्स एंड यू रीड दैट. अगर जिस दिन आप खुद ढूंढने लगेंगे, और उसमें ढूंढने के लिए ये होता है कि 3-4 चीजें लोग करते नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है करना, तो बहुत सिंपल है. अगर आप कोई, लेट्स से आपने बैटरी टेक्नोलॉजी की कंपनीज की बात की, बैटरी कंपनीज को सक्सेसफुल बनने के लिए हिंदुस्तान में आपको पहले तो उस कंपनी को थरली समझना है. उसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी. एनुअल रिपोर्ट जो चीज बताती है वो शायद और चीजें बहुत कम होती है जो बता पाती है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट इज द mechanism with which a company shares information with the shareholders, right? So first hand है, उसमें कोई second hand, third hand information नहीं है, first hand कंपनी की तरफ से information है और audited valid information है. ये भी नहीं कि तुक्का लगा दिया, कहीं casual chat में बोल दिया. It is a document that is taken very seriously. That's number one. Second चीज ये होती है कि हर कंपनी जिस इंडस्ट्री या सेक्टर में है उसकी सेक्टर की वेबसाइट्स बहुत सारी होती है, सेक्टर रिलेटेड वेबसाइट्स बहुत होती है. जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी में देयर इज अ वेबसाइट
that is global in nature, where all companies that are listed, which are active in the battery space, are members of that. अब वो जो फेडरेशन है उसकी अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि बैटरी टेक्नोलॉजी कहाँ है और हम लोग कहाँ पे हैं. तो ये होता है. अब जैसे अमर राजा में एक जॉइंट वेंचर आया था जॉनसन कंट्रोल्स करके. अब जॉनसन कंट्रोल्स का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है या नहीं है वो आपको जॉनसन कंट्रोल्स की वेबसाइट पे जाके पता चलेगा. तो होता ये है कि हम लोग को एक से एक चीज जो सुराग निकलते जाते हैं वो ऐसी होती है. तो आप मानेंगे नहीं, मैंने पिछले साल टेक्सटाइल में एक स्पिनिंग कंपनी से बातचीत होते हुए डिस्कस कर रहा था और मुझे बहुत सही अच्छा लगा उनका बिजनेस और सब. उनसे बात करते करते मुझे एक चीज समझ आई कि स्पिनिंग कंपनीज को जो कॉटन स्पिनिंग में है, कॉटन हैंडलिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, मतलब बड़े पैमाने में. छोटी तो बहुत है. तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी कंपनी है. बोले है. अब उस कंपनी का नाम, उसमें ना मशीनरी है ना टेक्सटाइल है, पर उसके नाम में स्टील है. अब वो छोटी सी कंपनी है, 2 करोड़ के पेड अप कैपिटल वाली, लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड है. और उसका भाव जब मैं उस टाइम जब बता रहा हूं तब वो 200 के नीचे था, आज वो 1500 है. तो अब होता क्या है कि उसकी चर्चा होगी ही नहीं, क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना, उसकी अपील नहीं है कोई, किसी कंपनी है वो है. तो ये जो माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग होती है ना, इसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खोजने में, मैनेजमेंट को मिलने में या उससे बातचीत करने का थोड़ा समय लगता है. कम से कम कोई भी कंपनी आप ले संजीव जी, तो उसको आप 2 क्वार्टर मिनिमम, आइडियली 3-4 क्वार्टर दीजिए. पर कई बार भाव बढ़ जाता है तो हम हिल जाते हैं, भाव बढ़ गया, अब हम लेट हो गए, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग. एक्चुअली भाव बढ़ा नहीं है, वो भाव बढ़ना शुरू हुआ है. तो वो 10x अगर होनी है तो अभी तो सिर्फ वो 1x का 2x हुआ है. तो होता ये है कि हम लोग की वो सब चीज रिजल्ट एकदम इमीडिएट बेसिस पे चाहिए कि कोई ऐसा बटन दबाए और जवाब आ जाए. तो आपके सवाल का जवाब एक ही है, देयर आर आंसर्स. गूगल के पास सारे जवाब है कि नहीं? आप मानते हो, आप गूगल में जो डालोगे उसका जवाब आपको 1 सेकंड में आता है, लेकिन कौन सा सवाल डालना वो हमको नहीं समझ आता. तो जिस दिन आपको क्वेश्चनिंग की एबिलिटी आएगी ना, आप क्वेश्चन करते होगे, तब जाके वो होगा. एंड आई थिंक इट्स मोर टू डू विद सिंपल कॉमन सेंस. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनी टेक्निकल लॉ. जो जितना मैंने कहा, इसमें इंटेलेक्ट और स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन की जरूरत है. People don't go and make notes. People they look at. और होता क्या है, ऑडियो विजुअल मीडियम इज वेरी फ्लीटिंग. उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है. आपने देखा, सुना और भूल गए. लेकिन अगर आप लिखेंगे चीजें, नोट्स बनाएंगे और उस पर बाद में 1-2 बार गौर करेंगे तो आपको उसमें कहानी अलग दिखेगी आपको. तो जो नॉवेल आपने बचपन में पढ़ी है वो याद है, लेकिन जो आपने नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखी वो उसके टाइटल भी याद नहीं रहता. तो ये जो डिफरेंस है वो ये है, डिसिप्लिन वाली चीज है. बट डू नॉट जंप ऑन मार्केट रूमर्स आर टेलिंग, और एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट सो सिंपल कि बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो जितनी बैटरी कंपनीज है वो सब चलेंगे. सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद भी आपके पास लिथियम, ये जो अपनी लेड वाली जो लेड एसिड बैटरीज है, ये भी चलती रहेंगी. आप तो ये देखो कि उसमें जो एसिड जाता है, H2SO4 जाता है, वो कौन सी कंपनी बना रही है, वो उसका क्या मूल्य, उसने कैपेसिटी एक्सपैंड की है कि नहीं. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, one of the best businesses in the listed space is a company that makes H2SO4, which is the raw material that goes into batteries. वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं. तो आप उससे पूछो कि आप भाई कैपेसिटी क्यों बढ़ा रहे हो, अगर ये तो डाइंग बिजनेस था, लेकिन वो तो कैपेसिटी बढ़ा रहा है और वो उससे बढ़ा रहा है, गर्व से बढ़ा रहा है. तो देयर आर वेरी क्लियर सिग्नल्स, बट उसको कनेक्टिंग द डॉट्स के लिए थोड़ा मतलब घूमना पड़ता है. तो घूमना पड़ता है, थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ती है. गुजराती में जितना इससे वाकिफ होंगे, एक कहावत है, तो बोलते हैं कि जे फरे ए चरे, जो घूमते रहता है उसको खुद खाना मिलता है. तो आपको दूर दराज, चाहे आप डिजिटली जाएं, आप किताबों के जरिए जाएं, आप एनुअल रिपोर्ट्स के जरिए जाएं, इंफॉर्मेशन तो सब कुछ है वहां पे, लेकिन उसको जहां जाके ढूंढना, डबल चेक करना, वैलिडेट करना, वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है. इसलिए ये एक्टिविटी थोड़ी सी फुल टाइम सी हो जाती है, ये पार्ट टाइम एक्टिविटी रह नहीं पाती. थैंक यू वेरी मच. मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि मार्केट अपने आप को हमेशा करेक्ट करती रहती है. आपको ध्यान होगा, जब धीरू भाई हॉस्पिटल के रिलायंस गिरने लग पड़ा और जब वो फनी दुनिया से कूच करके दुनिया बेच रही थी, उस समय रिलायंस चलना शुरू हो गया. When something is found, when some research is done, immediately the factoring in of the market comes.
and you enter very late, तब तक तो फैक्टर हो चुका होता, पता चले कि उसने लेकर आपको थमा दिया. ये ध्यान रखना हमने सब. Yeah, thank you, Nanda sir. Then we are having one query of Sivaraman Sudarshanan sir from Saudi Arabia, and may request Vinay Krishnanji to ask the query, please. The query is, can someone explain with clear example how does one use his existing holding in equity to make money beyond the price movement in stock market? जीतू भाई, Diwan sir? जीतू भाई, मार्जिन वाली मार्जिन रिलेटेड क्वेश्चन है ये. हेलो सर, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करेंगे? How does one use his existing holding in equity to make money beyond the price movement in stock market? Okay. Covered call वाला है जीतू भाई. Yes, sir. Sir, there are 2-3 types in which we can earn money through our existing shareholding. Suppose I can give you one example. If you are holding HDFC Bank shares in certain quantity, then you can hold it by earning regular income by covered call. Covered call मतलब कि अगर आप HDFC बैंक होल्ड कर रहे हो 1000 शेयर, 1500 रुपये का भाव है आज, और उसका आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, लेकिन अगर पर्टिकुलर मंथ में उसका ऑप्शन का प्रीमियम से 2-3% प्रीमियम मिल रहा है, तो आप कवर्ड कॉल करके उसको अगेंस्ट स्टॉक बेच दो, कॉल बेच दो. देन यू गोट 2 to 3%. जब अगर मार्केट का भाव नीचे गया तो आपको 3% उसमें से मिल जाएगा, अगर ऊपर गया तो भी आपका, तो कवर्ड कॉल कर सकते हो. अगेन सेकंड, कि अगर जो भी आपका है उसको आप मार्जिन में लाके मार्जिन ट्रेडिंग करके उसके सामने और कोई स्टॉक्स बाय कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए कोई फंडामेंटली अच्छा एफएनओ वाला स्टॉक्स है, तो इट्स बेटर टू ट्रेड थ्रू ऑप्शंस, क्योंकि वहां पे आप अच्छा रेगुलर इनकम बना पाओगे. I just want to add one thing. One of the newer ways that people are making money without going into derivatives, which can get a bit tricky, is the SLBM, which is called the stock lending and borrowing mechanism. So what happens is, provided you have decent quantity of some of these blue chip stocks, so arbitrage funds they keep on having shortfalls at times. What they do is they are willing to borrow stocks just to honor the expiry commitments, and for that period they'll pay you what is called ब्याज बदला equivalent. जो पहले जमाने में ब्याज बदला बोलते थे, वो आपको उस टाइप की कॉस्ट मिल जाती है. So that is another way. Cantigo. Correct. So yes, NSE is a platform on this. You can borrow, sir. SLPM का active हो रहा है धीरे धीरे, and that's a very good way of making, especially long term. I am also very inclined to do that because मेरा long term portfolio मैं छूता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर उसमें से कोई चीज काम आ सकती है तो why not? Yes. I would like to add something. अभी तो थोड़ा कम हो गया. इससे पहले जो आपके फिजिकल शेयर पड़े होते थे सर, आप उसको ऑक्शन मार्केट में बेच देते थे और इमीडिएटली कैश में खरीद लेते थे, एंड दैट रेंडर्ड हैवी रिटर्न्स. अगर आप ऑक्शन मार्केट को आज भी ट्रैक करते हो तो कई बार जो लो स्टॉक्स है, जहां लिक्विडिटी स्टॉक्स की कम है, आप वहां पर बहुत 10-20% ऊपर स्टॉक बिक जाते हैं, तो आप स्टॉक अपना बेचकर इमीडिएटली लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. एब्सोल्युटली राइट नंदा जी, बराबर है. वो आप ऑप्शन मार्केट में कर सकते हो उसके बेस पे. पर प्रीवियसली वी आर गेटिंग वेरी बहुत करते थे. आजकल बिकॉज पहले भेजना पड़ता था बाय पोस्ट कोरियर से, आजकल चूंकि हर चीज डीमैट हो गई, इसलिए इसमें परसेंटेजेस कम हो गए. फिर भी डिसेंट परसेंटेज मिल जाता सर. मेहनत से काम करो तो 5-6% ब्याज महीने का लोग निकाल लेते हैं जो ग्लू लेकर काम करते हैं. Thank you. Then CA Rasmi Gupta ji from Kanpur is having one query. Is there any way to connect in live trading session of Jiten sir? We will certainly have the live trading session of Jiten sir. We will take the permission and we will certainly go for it. And we will certainly like to have Nanda sir also in that session. One minute, sir. WRCS organized capital market webinar on 24th, 31st, 6th and 14th August. And on 6th August, there is first time in the history of WRC, I am taking live trading session in the morning 15 to 10:15 in future and option segment. So those who wish to join,
can join through WRC platform. Great. Thank you. Then Sibraman Sudarshananji from Saudi Arabia is having the comment. 2 superb sessions. Grateful to Anuj and his team. Close to you. Thank you, sir. So we are having the presence of the chartered accountants from each and every part of the world. From from the Middle East also we are having a lot number of members. From Patiala, we are having one query of Harpreet Kaur ma'am. The query is, wonderful session indeed, sir. Can you please provide some very reliable sources of information for trading purposes? Jitu ji. रिलायबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में इंफॉर्मेशन से ज्यादा स्क्रीन रीडिंग इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, मेरे को कई लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आफ्टर इंफॉर्मेशन हाउ द स्टॉक बिहेव्स इज मोर इंपॉर्टेंट. इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल फॉर ट्रेडिंग पर्पस. व्हाट आई मीन टू से, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई लेकिन इंफॉर्मेशन के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो तो स्क्रीन रीडिंग से ही पता चलेगा ना. तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट स्क्रीन रीडिंग. इंफॉर्मेशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन स्टॉक जो साइड में रिएक्ट करना है वही साइड में आप रिएक्ट करो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज इजी टू स्विम विद टाइड देन अगेंस्ट इट. And one thing I would like to also add, Harpreet ji, forget people who give you tips. They will not remain for always. I tell you, do your own research. Create a foolproof trading method like Jitu Bhai. Then you will be able to inspire people rather than taking inspiration from other people. This is my passing note. Yeah, thank you. Then Sivraman Sudarshananji from Saudi Arabia is having one query. How do we get practical experience to become a trader? Is there any formal course or we follow a specific person or anything else? Yes, sir. जी तो मैं आपका ट्रेडिंग सेशन जो करवा रहे हो बहुत आई थिंक आपको प्रीपोन कर देना चाहिए. पीपल विल नॉट वांट टू वेट फॉर सो लॉन्ग. Sir, I can answer that by way of a couplet. The couplet says, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए. Start trading, then you will become a good trader. Jitu Bhai has not become trader overnight. It is his entire life. He made losses, he went down, and then he devised methods and lives upon those methods. It is not something that can be transmitted immediately by view of some things. It takes years to become a fabulous trader. Lot of rules, discipline, strong resolve, resolutions which you don't change. He said I remember very candidly, he said that if I surpass any of my golden rules, I am put to hit. For making a century, you need at least 60 to 70 good hits. And for getting out, you need only a bat. One bat. One ball only. One ball. तो ये बात जब आप समझेंगे ना कैसे कॉशियसली ट्रेड करना है, तब आपको समझ आएगा. जी प्रकाश भाई. बट नंदा जी, सो ऑन अ मोर प्रैक्टिकल, ये सवाल बहुत लोग को आता है कि भाई ये सब हमने ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करें. एंड मेरा मानना ये है कि आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल खुद ही इवॉल्व करना पड़ता है. आप किसी की कॉपी करके, किसी के नक्श कदम पे चल के नहीं कभी बन सकते कुछ भी. मतलब यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफेट, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय राकेश भाई, एंड यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय जीतू भाई, बट फाइनली वो स्टाइल जो ट्रेडिंग की आपको सूट करती है वो आपकी ही होगी. वो मतलब इतना सिंपल है दैट इफ देयर आर 1 lakh traders in the market today, all 1 lakh have a unique style which will work for them. The idea is to reach that level of your unique style as quickly as possible by trying things out, learning from the mistakes and not repeating the same mistake. Make new mistakes if you want, but don't repeat the same mistakes. So I think that unique style of investing, आपको ये समझना है कि पहले तो मेरा यूनिक स्टाइल होगा कुछ, वो क्या है आज नहीं मुझे पता, लेकिन आगे चल के वो यूनिक स्टाइल होगा. जैसे पहले आप बचपन में आप चल भी नहीं पाते थे, गिरते थे, माँ बाप आपके हाथ पकड़ने आ जाते थे. आज आप गाड़ी चला रहे हो, प्लेन चला रहे हो, सब कुछ चला रहे हो, तो वो टाइम लगा ना उसको वो इवॉल्व होते हुए. तो वैसा है कि ठोकरे तो खाओगे, गिरोगे, कहीं किसी को गिराओगे, सब कुछ होगा, बट वो उसको कॉन्शियसली करो. सो एवरी मिस्टेक इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट सेंस कि भाई गलती हो गई, चलो मुझे 10 गलती करके सीखना था, मैंने 9 कर दी, अब एक ही बाकी. सो
don't be afraid of mistakes. You are 100% correct. Rather, you have to create your value by mistakes. Yeah. Market, every mistake is a stepping stone to success. Absolutely. परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों. परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों. तिनके कहां से लाते अगर सदा बाहर रहती. You have to use the times of crisis to create worth also. Rakesh Jhunjhunwala made 30 crore rupees in 1992 during Harshad Mehta scam. Please understand, use crisis to create opportunities. Take calculated risk for rewards. एक चीज में और एक करना चाहूंगा, प्रकाश जी ने जो बताया कि भाई ट्रेडिंग में हर एक आदमी की हर एक डिफरेंट स्टाइल्स जो होती है ना, तो जब तक आप ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हो, अल्टीमेट रिजल्ट इज द मनी. इफ यू आर अर्निंग द मनी थ्रू ट्रेडिंग, देन यू आर राइट, वॉट एवर बी योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. एंड इफ यू आर लूजिंग, देन वॉट एवर गुड योर स्टाइल, थ्रो इट. तो एक ही चीज ध्यान में रखना है, अगर पैसा बन रहा है कोई भी ट्रिक से, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सही है. मेरे आसपास इतने लोग हैं, कोई ऑप्शंस में पैसा बना रहा है, कोई ट्रेडिंग में बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट विल बी द वेदर यू आर अर्निंग और नॉट. और वो एक्चुअल आप ट्रेड करो. कई बार पेपर ट्रेडिंग की बात होती है ना, पेपर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखना बहुत इजी है. इट इज वेरी इजी इन पेपर ट्रेडिंग. लेकिन एक्चुअल में जब अपना पैसा लगता है ना, तब होता है कि नहीं यार वो तो आ जाएगा, भाव आ जाएगा. वो जो बड़ा दर्द होता है जी. तो भाई स्टॉप लॉस करता बहुत दर्द होता है, उस दर्द को सहना ही. तो इसीलिए तो मैं कई बार बोलता हूं कि जिस दिन मेरे को कई बार बोलते हैं कि आप इतना बड़ा खेलते हो तो आपका बीपी अप एंड डाउन नहीं होता है, आपको नींद आती है रात को ओवरनाइट में. बोला जिस दिन मेरे को मेरी पोजीशन की वजह से बीपी अप एंड डाउन हुआ या रात को नींद नहीं आई ना, सेकंड डे आई विल बी द आउट ऑफ ट्रेडिंग. आज तक मेरे को ऐसा हो गया है ना, ट्रेडिंग के पोजीशन नहीं होता है तो नींद नहीं आता है. लेकिन हाँ, पैसा जाता है तो भी मस्ती से एंजॉय करो. वो आपको हर एक चीज हर एक लोग को सूट नहीं करती है. तो जो भी आपको सूट कर रही है वही चीज को ध्यान में रख के आप काम करो. लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे ना, तो ही आपको उसके पता चलेगा. पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला है. Yeah, thank you, Jitu bhai. Then we are having Vishal Thakur ji from New Delhi. Query is, for short-term plan, what factors will play important role for price to go high in FX dealing? Do we need to look offshore prices also? This depends from stock to stock, I would say. This depends from stock to stock. Yeah. So you have to take a call. Boliye, you were saying something, Prakash bhai. No, I didn't understand which asset class was he talking about in the short term. About equities only. He says short term, how do you determine how the stocks are going up or down? Yeah. Okay, so I'm not a specialist. I can't do that. My way of, as I told you, I don't even bother about the price. The only thing that I worry about is how the company's business is going. You know, if there is something wrong with the company's business or it can get impacted in the next few months, short term, then I get worried. But price will catch up. Sir, price is a slave of nothing but earnings. Finally, price घूम फिर के earnings को follow करेगा ही करेगा. कभी उससे ज्यादा रहेगा, कभी उससे कम रहेगा, लेकिन उसको ही ट्रैक करेगा. तो अगर आपको अर्निंग्स कंपनी की समझ आ रही है, कंपनी का बिजनेस समझ आ रहा है, वो फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो समझ आ रहा है, एटलीस्ट फॉर फंडामेंटल अप्रोच, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म अप्रोच है. शॉर्ट टर्म में these changes can upset you, so that's why you have to use all the golden rules that Jitu bhai said, because उससे कोई कंपनी का कोई लेना देना परफॉर्मेंस का, बिजनेस का नहीं है, वो प्राइस एक्शन से है, लोगों के बिहेवियर से. I'll tell you one thing, the market is nothing but a sigma or the sum of how thousands and lakhs and millions of people behave, right? Collectively. That's what the price indicates. आप भी उनमें से एक हो, so you have to figure out how you will behave and not worry about what others are going to do. So if you can, आप अपने पे काबू पाओगे, तो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट्स है वो आपको वो भी समझ आएगी. बट फंडामेंटली प्राइस मूवमेंट आगे कैसे जाएगी, क्या जाएगी, ये शॉर्ट टर्म में तो कुछ होता ही नहीं. वो उसमें तो आपको ट्रेडिंग या टेक्निकल यूज करने ही पड़ते हैं प्राइस लेवल्स के लिए. बट अगर फंडामेंटल अप्रोच है तो वो फिर लॉन्ग टर्म हो जाता है. शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा वो होता है. बट न्यूज फ्लो को आप इंटरप्रेट धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे,
The biggest toolkit that you need in trading, I mean in stock markets, is a pen and a notebook, sir. There is nothing else that you need. I'm again and again telling you, जितना आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, वापस रेफर करोगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे पास 8-9 साल पुराने भी नोट्स हैं. तो उस टाइम जब हुआ था तो कंपनी का क्या हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, क्या आंकड़े आए थे, वो सब भी है. So it's very simple if you devise a methodology of keeping track of all. आप उसको डिजिटली करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं डिजिटल इसलिए नहीं करता कि डिजिटल याद नहीं रहता. आपने पढ़ लिया तो भूल भी जाते हो, लेकिन अगर आपने लिखा है क्वार्टरली अर्निंग्स, आप 10 कंपनी रखिए, उनके क्वार्टरली अर्निंग्स आप 4 क्वार्टर ट्रैक करिए, 5वें क्वार्टर में आपको ऐसी समझ आने लगेगी कि ये कंपनी क्या कर रही है. सो टीवी पे जब रिजल्ट्स आते हैं, आपने कई बार देखा, हम लोग जाके रिजल्ट आता है और हम लोग को रिएक्शन लेने बुला लेते हैं कि आप बताइए क्या हो रहा है. अब वो पहले से थोड़ी पता था रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट तो आ गया, अब वो पूछते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा. वो रिएक्शन क्या है इसलिए समझ आता है कि आप पिछले 4, 6, 8 क्वार्टर से इसको ट्रैक कर रहे हैं, है ना. सो जितना पीछे जाएंगे उतना आगे की क्लैरिटी हो जाएगी. As simple as that. Yeah, thank you, Prakash sir. Then we are having next query of Sujit Sudhakaran Nayyar ji from Delhi. So the query is, how good is the MF portfolio in India? Should one go for regular SIP or one-time investment annually? So I think it's a wonderful mechanism. Mutual funds are doing a very good job of at least helping us save money in a disciplined way. SIP से और कुछ नहीं होता तो क्या है कि आपका हर महीने पैसा अकाउंट से जाके फंड में चले जाता है. अब वो फंड उसका क्या करता है, कैसे लेता है, वो कौन सी स्कीम है, वो अलग चीज है. बट अगर आप वो सोचें कि मैं पैसा अपने पास ही रखूंगा और टाइम करूंगा मार्केट को, और वो नहीं होता सर. पैसा जैसे ही जाएगा डिसिप्लिन वे में बिल्ड होते जाएगा और सालों साल करते रहेंगे आप, तो उसकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत गजब की होती है. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे. डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट. ऑल ऑफ अस, इवन इफ यू आर इन द मार्केट, हैव सम मनी इन म्यूचुअल फंड्स आल्सो, यू नो. सो म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है. आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. म्यूचुअल फंड इज लाइक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो या ट्रेन हो. उसमें कोई भी आ सकता है, अपने स्टॉप पे निकल के जा सकता है, बड़े सस्ते में ट्रैवल होता है. बस ड्राइवर कोई और है, वो चला रहा है, वो अपनी स्पीड से ही चलेगा. आप बोले कि जरा जल्दी चला दो, इनको मत उतारो, ऐसा नहीं होता. अगर आपको खुद करनी है टैक्सी और आप उसके बाद लेके टैक्सी ड्राइवर को बोले कि आप थोड़ा तेज चलाओ, मैं किराया दे रहा हूं तो मेरे जाता है, वो हो सकता है. तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अलग रहती है, लेकिन उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं. यहाँ तो कोई और आपकी सेवा कर रहा है और 1-1.5-2% में आपका काम हो जाता है. तो उसको इग्नोर मत कीजिए. बट हाँ, म्यूचुअल फंड्स बियॉन्ड certain universe cannot invest into some stocks because of the size and liquidity and all those issues. वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो आपको म्यूचुअल फंड के शेल्टर से निकल के बाहर जाना होता है. मतलब अगर छोटी गली में जाना है तो बस नहीं जाती, वो बस तो मेन रोड में उतार देती है आपको. फाइनली आपको खुद की सवारी लेके जाना पड़ता है या चल के जाना पड़ता है. तो अगर माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग करनी है, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करनी है, तो वो म्यूचुअल फंड से नहीं होगी ना, वो तो मेन रोड वाली बस है. तो सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं इसमें. Right. Yeah, thank you very much, Prakash sir. Then CA Ashok Kumar Jhabak ji from Raipur is appreciating the deliberation, and number of members are appreciating the wonderful deliberation. Then from Kanpur, we are having Raspi Gupta ji again to Jiten sir, which tool we can use to get the data of open interest? Which tool we can use to get the data of open interest? Jiten ji. Yeah, you can get it directly when market is open in ODN. Suppose I am using ODN. So ODN, you can get directly from open, even in money control, you can go to open interest position. But open interest position, what I am talking is with respect to when you are taking trading position, then you have to see whether open interest rise or fall with respect to yesterday's open interest. Not. So if open interest is rise along with price, then, but you can get it directly from any money control, even you can get it, or even in the software, you put the certain parameters, you can get it. Yeah, thank और you. प्रकाश जी, इसमें आपको कुछ अलग आइडिया हो तो? नहीं,
एब्सोल्युटली एनएससी की साइट पे भी डेटा मिलता है, लाइव और डेटा लाइव बेसिस पे, या सो वो आपको ऑप्शन चेन है, उसमें आपको ऑप्शंस का मिल जाएगा। फ्यूचर का तो ऐसे ही बहुत इजी है, सिंपल है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट डेटा तो सब जगह है, बट उसको कैसे प्रोसेस करना वो थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। वो लाइव ट्रेडिंग में मैं बता सकता हूँ कि भी जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मेरे पास पूरा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि एक तरफ प्राइस है, एक तरफ प्राइस विथ ओपन इंटरेस्ट, तो उसमें से ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमको डिसीजन लेना है। Yeah, thank you. Then CA Jolly ji from Mathura is having one query. And we know some multi-baggers shares on which we can invest. इसमें ऐसा है कि चेयरमैन साहब मथुरा ब्रांच संजीव जी ने जो बोला कि आइडिया वाज टू टीच यू हाउ टू फिश, नॉट टू गिव यू फिश, राइट? तो आप इतनी मेहनत की है 3 घंटे आपको फिश ढूंढने में, तो अब फिश दे देंगे तो फिर आदत बिगड़ जाएगी सर। But you know, I mean, you just need to look at some of the long-term trends that are emerging. So, for example, solar power, solar energy है, biotechnology है, for you know even artificial intelligence है। So, इसमें हर एक चीज में आपको कोई ना कोई लीडरशिप वाली कंपनीज मिलेंगी। कंपनीज ऑलरेडी बड़ी हो गई होंगी तो उनका भाव बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं और आगे चल के ये काम बढ़ा सकती है, ये आपको अगर समझ आई तो मैं जब भी कोई कंपनी देखता हूँ तो सिर्फ 2 ही चीज पूछता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ सर। मैं आपको वो एक बहुत बड़ा इसमें एक क्लू दे देता हूँ। पहली चीज तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, इसकी आगे 5 साल 10 साल की ग्रोथ कितनी हो सकती है, मतलब इस कंपनी की नहीं बट इस सेक्टर की। अगर मतलब मान लीजिए खाने का कोई कुछ प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, खाना आउट ऑफ फैशन जाएगा आपको लगता है, या पैकेज फूड आउट ऑफ फैशन जाएगा? नहीं जाएगा। आप और मैं जैसे जैसे पैसे खर्चना शुरू करेंगे और लोग भी इसमें जुड़ेंगे, खाना तो पैकेज फूड तो चलेगा। अब आपको पता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ है या फला परसेंटेज से ग्रो हो सकती है चीज। अब ये देखना है कि ये इस सेक्टर में ये कंपनी सेक्टर की ग्रोथ मान लीजिए 25% CAGR है, ये कंपनी 25 की जगह 30 पे ग्रो हो सकती है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है। अगर सेक्टर 18% में ग्रो हो रहा है, ये कंपनी 20% में ग्रो हो सकती है कि नहीं? Which means that as the market expands, this company also expands its business. अगर ये दोनों चीज मैच होती है, या इसका जवाब है यस, तो आप इसके ऊपर और छानबीन कीजिए, मेहनत कीजिए, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर 20% ग्रो होगा लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं 15 से ज्यादा नहीं ग्रो हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुकी है, तो उसका भाव आपको नहीं मिलेगा। अब एशियन पेंट्स देखिए, क्यों एशियन पेंट्स का भाव आज यहाँ पे है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डबल पेंट यूज करने लगे या जो बैठा है घर पे पेंटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट जैसे जैसे रियल एस्टेट वापस पिकअप हो रहा है, लोग अपने घरों को पेंट कर रहे हैं और प्रीमियम चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री का साइज ग्रो हो रहा है सर। अब वो इंडस्ट्री का साइज ग्रो हो रहा है, इसलिए उसमें एशियन पेंट्स उस सेक्टर की ग्रोथ से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है, मार्केट लीडर है, तो इसलिए उसको भाव मिलता है। So you have to just identify that in any of these sectors, whether it's EVs, I mean electric vehicles, digital learning, anything. So just make sure that these 2 conditions are met, that the sector has growth potentially for the next 5-10 years, not 1 year. Don't bother about 1 year, 2 years. The 5-10 years growth, and whether this company that you are evaluating can grow at a rate faster than that growth rate, then it will automatically increase market share. As simple as that. If you can do that, all your answers will, because your list will become very narrow, and then you have to work hard only on a few companies, not all of those. Thank you, Prakash sir. Thank you very much. संजीव अग्रवाल जी अब नए लुक में आ चुके हैं, है ना? मुझे लगता है ऑफिस से घर पे आ चुके हैं, वो अपने इवनिंग ड्रेस में आ चुके हैं। सो मैं रिक्वेस्ट संजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन मथुरा ब्रांच, वो आज तक क्वेरी प्लीज। सर, जो अभी लास्ट क्वेरी आई थी मथुरा शहर से, उसमें सर ने कहा कि मैंने फिशिंग सिखा दी है, तो सर हमें सर से हॉर्सेस नहीं चाहिए, सर हमें कुछ जॉकी बता दीजिए। जैसे एक अनिल सिंह जी थे जो दिग्विजय सीमेंट में गए, तो उनके जाने से वो दिग्विजय सीमेंट 26 रुपए से 80 रुपए हो जाता है, और एक देवेश्वर जी थे जो ITC से मतलब अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए, तो ITC को पूरा हिंदुस्तान ढूंढा कि भैया कब बढ़ेगा। तो सर हमें 2-4 बढ़िया जॉकी बता दीजिए सर, घोड़े हम देख लें।
नहीं, देखिए कई चीजों में जॉकी, मतलब मैं समझ रहा हूँ। आप ये बताएं कि चेतक तो बहुत है, राणा प्रताप भी तो चाहिए चेतक को चलाने के लिए। तो वो सवाल हमेशा रहता है। बट मेरा मानना यह है कि अब जो बिजनेस का हुलिया बदल रहा है संजीव जी, उसमें टीम वर्क और मैनेजमेंट एज अ होल एंड नॉट जस्ट वन और टू पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग अ बिग डिफरेंस। एंड आई गिव यू सम वेरी लाइव एग्जांपल्स। अब हैप्पीएस्ट माइंड करके कंपनी है, आपने देखा है उसका परफॉर्मेंस। जब आईपीओ आया उसके बाद लिस्ट हुआ, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि ग्रे मार्केट में कुछ है नहीं, हो गया जो होना था हो गया, अभी सेटल हो गया। अब वो 360 से वो आज 1360 है। और उसका रीजन क्या है? वो जो टीम बनी हुई है वहां पे, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। और जो बिजनेस में वो लोग हैं, वो डिजिटाइजेशन में 95% रेवेन्यू उसका डिजिटाइजेशन में आता है, जबकि टीसीएस का तो सिर्फ 52% है। तो आप सोचो, डिजिटाइजेशन में इतना ग्रोथ है और ये कंपनी बाकी सबसे फास्ट ग्रो कर रही है, तो भाव आना ही आना था। तो ये जो इस टाइप की चीजें जब आपको दिखती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले तो आप ये 2 क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो उस कंपनी का नाम एक चिट्ठी में रख के जेब में रखिए। जिस दिन मार्केट गिरेगी, खराब होगी, कोई खराब न्यूज की वजह से ट्रिगर आया, जो भी आया, तब आपको ये सब कंपनी फिर तब याद नहीं आती है। तब आप घबराए हुए होते हैं कि सब चीज गिर रही है, हम कल लेंगे, आज तो शुरू हुई है, अभी 1-2 दिन और गिरेगी। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको जो कंपनी लेनी है वो तो मुंह पे, जबान पे होनी चाहिए कि ये कंपनी लेनी है, लेकिन सही भाव पे लेनी है। अगर भाव महंगा लग रहा है तो, कई बार ऐसा भी होता है कि भाव महंगा भी नहीं लगता तो महंगे भाव में भी लेनी पड़ती है। सो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द जॉकीज दैट यू आर रेफरिंग टू। सर्टेन पीपल हैव impeccable track records and they have qualities that will this thing. I look for people who are turnaround specialists. I look for people who have repaired a lot of businesses. वो जब जाते हैं तो काफी चीजें चेंज हो जाती है। पर ऐसा जरूरी नहीं हर बार होता है। अशोक लेलैंड में एक दासरी साहब थे, उन्होंने टर्न अराउंड किया, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो आइशर गए तो वहां ऐसा नहीं हो पाया अभी तक। शायद हो सकता है समय लगे, टाइमिंग गलत था, व्हाटएवर इट इज। सो इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मेरा पहला वो पी जो था 6 में से, वो पीपल था, हु इज रनिंग द बिजनेस। वो आपको समझ आ जाएगा, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जैसे प्रकाश जी ने बताया कि मल्टी बैगर के लिए कि भाई उसका ग्रोथ नेक्स्ट 5 to 2 years ग्रोथ क्या है, वो सेक्टर का ग्रोथ क्या है। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि अगर आपको वही सेक्टर मिलेगा जिसमें आपको ग्रोथ लग रहा है 5 से 10 साल, उसमें कंपनी अच्छी मिली और वो कंपनी में अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। कई बार क्या होता है, मैं आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ रिलायंस का शेयर्स, इफ आई रिमेम्बर 2012-16 के बाद 2014 के बाद 6 से 8 साल तक प्रीवियस टॉप क्रॉस नहीं किया था। 8 साल तक वो 800 से 1000 के रेंज में घूम रहा था। एट प्रेजेंट 2100 आफ्टर 1:1 बोनस मींस 4200 रेट है। तो उस टाइम जब मल्टी ईयर उसमें लग रहा था कि रिटेल में, टेलीकॉम में ये चेंज हो रहे, और जिस दिन उसने 1000 क्रॉस किया ना, आज भी मेरे को मैंने हाईएस्ट एवर क्वांटिटी बाय किया था, हाईएस्ट एवर क्वांटिटी, कि भाई 1100 के ऊपर वो जिस दिन गया उस दिन, और उसके बाद आज तक वो 1100 का भाव नहीं आया। तो जैसे ये बताया तो मैं इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूं कि टाटा पावर ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर आपको पावर सेक्टर अच्छा लग रहा है, जैसे पीपल का बताया, तो टाटा पावर में पीपल वाला तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो और वो अपने को लग रहा है कि 60 की 120 हो गई, लेकिन अगर उसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और वो सेक्टर अच्छा जाएगा, तो जो आप मल्टी बैगर ढूंढना चाहते हैं 1x से 2x 3x 4x दैट विल बी। और यही कहना है कि अगर गाड़ी मर्सिडीज हो लेकिन ड्राइवर एम्बेसडर का हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी एम्बेसडर हो, ड्राइवर मर्सिडीज का हो गया तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन गाड़ी भी मर्सिडीज की है और ड्राइवर भी मर्सिडीज का है, तो जिस दिन वो चलेगी ना, उस दिन आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। थैंक यू जितेंद्र सर। Then we are having one query of CA Rasmi Gupta ji from Kanpur. How to track increasing open interest? हेलो, यस ऑलरेडी ट्रेड किया। अगर आप NSE में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ओडियन में भी मिल जाएगा। और ट्रेक करने के लिए कि भाई ओनली ट्रेक विथ रिस्पेक्ट टू अर्ली पास्ट लास्ट डेज ओपन इंटरेस्ट। मैं ऐसा नहीं करूँ कि हर दिन क्या बढ़ रहा है। इफ द वॉल्यूम इज लार्ज, only track
ओपन इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग डेज ओपन इंटरेस्ट। अगर 5% से ज्यादा, मेरा जो फॉर्मूला है कि अगर प्राइसेस 4 या 5% अप है और उसके साथ 5% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अप है, काउंटर लिक्विड है। लिक्विड मतलब रेगुलर काउंटर है, मैं कोई ओड काउंटर की बात नहीं कर रहा हूं कि जैसे नेस्ले है तो नेस्ले में ईयर एंड देयर कुछ भी ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा थोड़े, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस है, ऐसे जो लिक्विड काउंटर में 5% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अप है, यू कैन ट्रेक एनी सॉफ्टवेयर और भाव भी 5% से ज्यादा अप है और मार्केट उस दिन अप है, तो दैट विल बी द राइट कैंडिडेट टू बाय। और इनवर्स कि अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और 5% से ज्यादा स्टॉक डाउन है और मार्केट भी अपने को उस दिन डाउन ट्रेंड में लग रहा है, देन यू कैन सेल इट। सो ओपन इंटरेस्ट ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन। मार्केट चालू है, ओपन इंटरेस्ट तो वेरीफाई करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया इज मोर देन 5%. Thank you, Jitu ji. I think we have already exceeded the time limit by more than 1 hour. We are at the end number of queries, but we have to stop somewhere. So, a lot number of members are appreciating. The delegation C.S. Sunil Kumar ji, my very good friend from Khagadia, is also appreciating, and all other members are also appreciating. So, thank you very much, Prakash sir. Thank you very much, Jitendra sir. Thank you very much, Nanda sir. And of course, our honorable chairman of Mathura branch, Sanjeev Agrawal sir. For he's a wonderful host, और आप देख रहे हैं कितने रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं, तो उससे भी बड़ा आनंद आ रहा है। और इसी वजह से मैंने भी थोड़ी सी अपना लुक चेंज किया था। थैंक यू वेरी मच। नहीं भाई साहब, हमें मैं समझ अब तो जा नहीं सकते, मैं जीतू भाई और प्रकाश जी तो ऑफिस बैठे, आप तो घर पे हो सर, 5 मिनट बाद। ऑफिस से घर इतनी जल्दी पहुंचने का मथुरा में एडवांटेज आपको मिल जाता है, लोगों को नहीं। सर आपने जो ड्रेस चेंज किया है ना, ये जस्ट लाइक जो हम दीपावली के बाद जो मुहूर्त का ट्रेडिंग होता है ना, और उसमें वहां पे राकेश झुंझुनवाला सर, रामदेव अग्रवाल जी आके कुछ, तो हमको भी लगा कि आप भी कुछ आके टिप देने वाले हो नए साल पे मुझे। नहीं, हमने आपसे टिप ले लिया है, अब इसलिए ड्रेस चेंज नहीं, ये कह रहे जीतू भाई आए तो मुहूर्त हो गया कहते हैं, अब मैं मुहूर्त ट्रेडिंग में शुरू। So thank you very much, Vinay Krishna ji, our honorable guest of honor and past chairman of Bareilly branch. May I request our honorable secretary of Mathura branch, Sunanda Khandelwal ma'am, for her final words and the vote of thanks, please. Over to Sunanda Khandelwal ji. Thank you, Anuj ji. आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा. I thank the learned speakers of today's webinar for sparing their valuable time and to share their valuable knowledge with our participants. I thank CACS Nanda ji, CA Jitendra Khandol ji, and Prakash Diwan sir for their very useful and knowledgeable deliberation. और सबसे बड़ा ये था कि बचपन से हम सुनते आए थे कि शेयर बाजार किसी का सगा नहीं है, लेकिन आज तीनों को सुन के ये लगा कि अगर हम डिसिप्लिन्ड है और एक जिसे कहते हैं सेट ऑफ रूल्स के अंडर अगर हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हराने वाला कोई नहीं हो सकता, और सर्टनली हम दलाल स्ट्रीट से कुछ न कुछ बाजार से लेकर ही घर जाएंगे। ये एक जो कॉन्फिडेंस दिया, ये बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिया हमारे स्पीकर्स ने। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सी अनुज गोयल जी, चेयरमैन CCMIP को और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने बहुत अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, कि जिसमें भारत ही नहीं बाहर से भी लोग अक्रॉस द ग्लोब लोग आए और उन्होंने अपना ज्ञानवर्धन किया और सीखा कि हमें कैसे इस बाजार से पैसा कमाना है। और मैं एट द एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग दिस वेबिनार. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Sunna ma'am. Thank you very much. Thank you, Prakash sir. Thanks a lot for your wonderful deliberation. Thank you, Jiten sir. Thank you, Nanda sir. You are always great. And thank you, Sanjeev Agrawal sir, and your entire team, Sunna ma'am, and all other office bearers of Mathura branch, Vinay Krishna sir. And I think more than 4,000 chartered accountants are live with us. So thank you very much for making this session very, very interactive. And I will request all of you to please dive in this capital market. The capital market is waiting for the chartered accountant, very, very active contribution of the members of the Institute of Chartered Accountants of India. So I will request all of you, as we can understand the nitty-gritties of the capital market in the best possible manner. So the chartered accountants are the best suited professionals to really do something concrete in this very, very important capital market, which is very, very important for the sound economy. And I think we can very well reach to the 5 trillion economic target of the Prime Minister Modi
if the chartered accountants will play very, very active role in this very, very important field, capital market. So thank you very much once again, Prakash sir, Jitu sir, Nanda sir, Sanjeev sir, Sunanda ma'am, Vinay sir, and all our honorable viewers. Thank you very much. Very good evening. Thank you.